Today Roundtable coming to you from the beautiful state of Goa. In fact, from just outside the Siddhartha Goa Hotel, we are here by the river, by the sea, the Arabian Sea, where the river Mandavi not too far away in the capital city of Goa. And we are here for the India Today Roundtable Goa, where on the eve of elections, we are going to get all the big newsmakers here in Goa to speak to our viewers. This is an election that has excited a number of people because of the number of parties that are contesting it. And a key element of these parties are the regional parties. And we're going to kick off this India Today Roundtable with some of the regional parties of Goa and what they represent in this election. Joining us now at this inaugural session of the India Today Goa Roundtable, Dr. Kiran Bhatikar is of the Maharashtra-Vadi Gomantak Party, the original party of power of Goa that won the first elections of 1963. Vijay Sardesai, former Deputy Chief Minister and Minister in the previous government of the Goa Forward Party, now in alliance with the Congress in this election. And Manoj Parab of a new party, the Revolutionary Goans Party, which some are calling Goa's answer to the Maharashtra Navnirman Sena of Raj Thackeray. Okay, let's kick it off with Vijay Sardesai. I can, as a disclosure, say Vijay and I are distantly related. You throw a stone in Goa, you'll find a Sardesai. But Vijay, I want to ask you this because you won 3 seats in 2017. You won those 3 seats on an anti-BJP vote. After the elections, you joined hands with the BJP and made Manohar Parrikar the Chief Minister, which is why some of your critics accused you of being a betrayer. Today, 5 years later, as we enter another election, what does Vijay Sardesai represent this time? What does your Goa Forward, which has now tied up with Congress, represent? I represent the same thing what I represented in 5 years ago. And the real story behind our action in 2017 can be summarized in a tweet by Digvijay Singh, who was the then chief of the, who was the General Secretary of the Congress in charge of Goa, who has said that it was Luisin Falero who sabotaged a pre-poll alliance with us and then sabotaged a post-poll arrangement with us. So my thing is, whenever there is a pre-poll alliance, you can have a post-poll expectation. You don't have a pre-poll alliance, then you don't want us to be in the post-poll arrangement also. Then we had to do something because we had won 3 seats out of 4, a strike rate of 75%. And we had defeated stalwarts of the BJP. Against the BJP, against the Congress and against the Aam Aadmi Party. So we would not be just sitting there. So we decided to get Manohar Parrikar down, demote him from the defense minister to the chief minister of the state, and form a government whose bedrock, whose backbone was Goikarpon. Manohar Parrikar, in the presence of Amit Shah, said it at the swearing in, that this is not a government of the BJP, this is a government of Goikarpon. We are the ones who brought Goikarpon to the political narrative. Goikarpon meaning a sense of being Goanness. But the question still arises. I represent the same thing. I represented Goikar and Goikarpon. That was the motto of my party. No, but you can't, no. You are now, the question is that you claim that you represent Goikarpon, you represent Goanness, but you go into an election seemingly in 2017 on an anti-BJP plank and you join hands with Manohar Parrikar. You are accused of being an opportunist. 5 years later, you have a pre-poll alliance with Congress. What is to stop you? You have 3 candidates contesting. If 2 of them win, which means again a 70, you'll have a 66% strike rate. You'll again come and say, Goikarpon, I will tie up with the BJP. What stops Sharad Pawar from going to the BJP? The same thing stops me from going to the BJP now. Because we are in a pre-poll alliance with the Congress. We are tied to the Congress before the election. And after the election? 100% we are tied together. We irrespective of what the verdict is. Irrespective of anything, to even sit in the opposition. No, suppose BJP needs 2 MLAs to form a government. Will Vijay Sardesai join hands with them? We are not going to be with the BJP forever. That is very clear. Okay. Yes. Dr. Bhatikar, the Maharashtra-Vadi Gomantak Party, the same question has to be asked to you. After the last election, you went and tied up with the BJP. You were part of the BJP government. The same BJP broke your party
in 2019 and took away 2 of your 3 MLAs. In 2022, if the verdict is a hung assembly as many people believe, where will the MGP stand? You have tied up with the Trinamool Congress as a pre-poll alliance. Post-poll, will you go with the BJP as most people are suspecting? See, first of all, we didn't go to BJP. BJP did come to us. And secondly, it is not about breaking something. We are quite sure, I think you are wrong, Rajdeep, that they are falling short of 2 MLAs and all. I'm quite sure BJP will not even cross 10 this time. And lastly, I'm quite sure that MGP, TMC will form the government this time, and there would be candidates who will be supporting us. So there is no question of BJP coming in power for next 5 years. MGP, TMC government? Yes. No, but let's be clear. Yeah. MGP was seen to be, in a way, the original party of Goa, original also Hindutvavadi party. So so your ideology, many will say, is closer to the BJP than the TMC. What has taken you to the TMC? See, what do you mean by Hindutva? Getting a rapist, getting into the party, giving him a party ticket, denying Manor Parikar's son is Hindutva. Getting Milind Naik, whose all videos are circulated here and there, giving him ticket is Hindutva. Who's accused in a sex scam. Yes, exactly, who's accused in a sex. So is this Hindutva? Calling yourself Hindu is being understanding that what is Hindutva first. Hindutva is supporting every caste, every religion and not dividing country on the basis of it. So BJP cannot teach us, or anyone cannot teach us what is Hindutva. I just want to know, the buzz in Goa is that you have tied up with the TMC because the TMC agreed to sponsor your entire election campaign. Yes or no? See, there are a lot of buzzes that even Vijay Sardesai is connected to many people. It is not like that. We don't need to follow such buzzes. We need to follow what we need to do for better Goa, rising Goa and developed and healthy Goa. And we are working on the same. So you are giving us at the India Today Roundtable an assurance that you will stick with the TMC even after the election. We are not joining BJP. You are not joining BJP. That doesn't mean that you are sticking with TMC. No. But you said, see, I asked you. See, it's very simple. When we are with TMC, that means we are forming government. And that's what I have said you very clearly. So there is no question of joining BJP. BJP is not going to cross even 10. So Okay. there does not arise any question of joining BJP. Okay. Manoj Parab, you are the new kid on the block. Revolutionary Goans. When I was here last week, someone told me Manoj Parab wants to be the Raj Thackeray of Goa. You also, just as Raj Thackeray claims he stands for a certain Maharashtrian identity, you stand for a Goan identity. Is the revolutionary Goan simply trying to attract younger Goans by targeting so-called outsiders? You are claiming that outsiders have destroyed Goa. Who are these outsiders? First of all, sir, we are not targeting anyone. And secondly, we are into this political arena just because Revolutionary Goans is the only real regional party in Goa right now, because both the regional parties which were in Goa right now, they are allied with, or they have tied up with the national party. So there's no other option for the Goan people. People of Goa, they are actually waiting for the regional force to come up, to govern the state, to make the policies. And Revolutionary Goans, as a Revolutionary Goans, we have our independent ideology, we have our independent thought process. So we are not copying anyone, or we are not Raj Thackeray or MNS of Maharashtra. No, the reason why you all were accused of being MNS or Raj Thackeray, there were a few instances where allegedly so-called outsiders who are working in Goa were beaten up by your party men. A very wrong information. So we have not done any violence till date. Last 5 years we have been working on ground. What we believe is, we believe in RTIs, we believe in Gram Sabhas, we believe in complaint, we believe in taking laws with us, along with us, and train our younger generation to speak up against the illegalities, to speak up for Goa and speak up for their rights. No, you believe that the land of Goa belongs to Goans. Yes, you believe that jobs must be given to Goans. Yeah, there has to be a land protection bill, because Goa is a very tiny state, and if we keep on selling the land to the outsiders, or we keep on selling the land, okay, tomorrow the younger generation which will be coming, or next generation which will be coming, they will be landless and homeless in Goa. So we need to protect our Goa, and we need to protect our Goans. I must ask you one question though, Manoj. Just like I said, the buzz is that the TMC is sponsoring the MGP's campaign.
buzz is BJP has put up revolutionary Goans because they want to divide the anti-BJP vote. No, sir, it is not like that because Revolutionary Guns is the only political party or outfit, before it was an organization who was targeting BJP, who was questioning BJP, who was questioning the government, and when all the opposition was they were all busy doing tie-ups or some settings which last 50 years they have been doing, and that is the reason Goa has lost its identity, Goa has lost its culture. There's just a name, Goa Goinkar, but no political party or no political leader is defining who is Goinkar, and that is the biggest thing. That's a good question to ask you, Vijay Sardesai, because you had a symbol of a coconut. They have a symbol of a football. And in Goa, football, coconut all seem to represent Goinkar ethos. Goinkar Pon ethos is represented by these symbols. But what, as Manoj is saying, is actually Goinkar Pon. If you are going to say you stand for Goinkar Pon, and you are going to allow land of Goans to be taken away by so-called outsiders, which Manoj is accusing the previous governments of, what is Goinkar Pon? What have you done for Goans is the question that is being asked by a lot of young Goans today. All of you, according to them, have sold out to the so-called national parties. See, first thing is, you talked about the coconut. When the BJP government decided to convert the coconut tree into grass, technically make it into grass, so no permission was required to cut it, because they wanted to annihilate lots of coconut trees to bring in a distillery in a place called Amda in Sange. That time, with that agitation, we were born. So we were born with this motto of Goinkar Pon. Brand Goa sells. That is why you as India today has come here. Brand Goa sells, but brand Goa is not going. Going to us. I'm defining. You said you stand for going. I want a definition. Rajdeep, say it begins with going. Going is not Goa as the others living outside Goa see it. The others living outside, like the tourism minister of the country, says Goa is going to be the casino capital of India. So for him, it is casino. For Goans, it is about our cultural, our natural, and our architectural heritage. Now, Goanness is about living with everybody, constitutionally right. It is the regionalism that works and delivers. What is Goinkar Pon? We are known for syncretic culture. We are known to be hospitable people. We are known for a different history. Our identity means that we have a different history. We were liberated much later than the country got independent. We are patriotic yet regionalistic. So ours is a party that espouses regionalistic sentiments. Regionalism and regional parties are different. Regional is only about geography. Regionalistic party is about an ideology. Now you are telling me to define Goinkar Pon, yes. Goanness or Goinkar Pon, as we say it in Konkani, is about taking the people of Goa forward. At the same time, doing things which are constitutionally right, which are not ultra-virus to the constitution. We cannot be the Republic of Goa. Understand that if we are going to bring in laws, I have been a legislator for 10 years. Yes. You cannot bring in a private member bill or a government bill which is ultra-virus to the constitution. You may have it, you may use it as a rhetoric. People, when the anti-Hindi agitation started in Tamil Nadu, the first thing that they talked at that time was to secede from India. But then they didn't take it forward. They still protect their regional identity, yet they are in India. You are regional and yet strongly Indian. So there are different laws that can be made. So, give me I'll give you scores of examples. 1 minute. Yeah. You said that outsiders are defining, or the tourism minister of the country defined Goa as the casino capital. Yes. He says he wants You were in power in 2017. You were deputy chief minister. Yes. It is your government which encouraged the casino culture. Today, in 2022, you are telling me Goa should not be the casino capital. No. I'm just telling you one thing. First thing is, casinos are there in Goa. But if you say that your plans for Goa is to make it a casino capital, it means that you're going to get in more casinos. You are not against casinos. I'm not against casinos. I'm not against disturbing
the economy of the state. The present economy of the state has taken a beating. Mm. It is about these two Indias which Rahul Gandhi has talked about yesterday. The rich India and the poor India. The rich India is not represented only by Adanis and Ambanis here. It is represented by the property Sawant, who is our chief minister, who was a government servant who has gone on to become a mine owner. So that is that rich India. And the poor India are those who are affected by mining closure, are those who are affected by the sale of our river Madai to Karnataka, who are those affected by the entire tourism activity being controlled by people who are not sons of the soil. So if you ask me what I did to protect Goanness or Goikarpon, I'll tell you several things that we did. As a minister as well as a part of state policy. Give me one and then we'll move. Give me one thing that you believe you have done to strengthen Goan identity. As a town and country planning minister, there is a section called 49(6), which means development of agriculture plots and sale of them as settlement, which was opposed by all the activists of Goa. So we made that applicable to the whole state. It means that you cannot just convert agricultural land, develop them into plots and sell it to migrants and make a whole ghettoization of Goa was prevented. Second, we made it compulsory for projects to follow a distinct architecture, which is Indo-Portuguese architecture, which is also very intrinsic to Goa. I'll come to some of this because there's been criticism that when you were town and country planning minister, you allowed the sale of land to those from outside. You encourage encourage the so-called Delhi land lobby to enter Goa. How did I encourage? On the contrary. In this conversion of agriculture to industrial land. On the contrary, this sale of plots, illegal plots, agricultural subdivided plots, and their illegal sale, the person involved is the present chief minister. And you can ask activists, you can ask Mr. Cloud Alvarez, who has been opposing this from the word go. Who stopped this? Okay, the chief minister is also to join us later on the round table. Please ask him. Okay, we will ask him. Please ask him about Jai Ganesh developers. Dr. Bhatikar, the fact is that while we have started today's round table with regional parties, national parties have dominated Goa politics now for the last 20 years. The BJP got a majority in 2012. Before that, the Congress had a 5-year government. And from 2002, we have seen in particular, MGP has declined. Your vote, you may win maximum 3, maybe 4 seats. You are competitive only in 6 seats. Goa Forward also has been reduced in this election to contesting 3 seats. Manoj Parab's party is untested. Do you concede now many Goenkars? While you talk of Goenkarpon, Goans are saying, no, we want to be part of the national parties, either Congress or BJP. Yes or no? MGP was, when I came to Goa in the 1990s, you were the main party, BJP was your small ally. Today, BJP is the main party, you are not even their ally left. See, there was a time where MGP ruled. Yes. And now it's not the same. Why? There were very reasons for that. No, today why are most Goans preferring national parties to regional parties? See, there is a mentality where that someone is at center, work at state happens very nicely. So that is a thing which we need to change now. And I need to tell one thing to Manoj Parab, that everyone does not do setting. Because he has a habit of saying about setting. Manoj also needs to know that he has come from Aam Aadmi Party to Revolutionary Goans. So I don't know what setting he has done and come to Revolutionary Goans. This is point one. And Goikarpon and outsiders, I don't believe in that. Because every Indian has all the right, yes, we need to prioritize Goans. We are doing that. We don't need to be taught what is Goikarpan by anyone. Secondly, when you need blood, you don't check whether he's a Goikar or whether he's an outsider. Whether when you need doctors, you don't check, because when Sripad Naik was not well, it was a Delhi doctor who came all the way to check him. And if you talk about the properties where are there here and there, if you can afford, you buy it. If you cannot afford, and Delhi person comes and buy it. If he likes it, he buys it. It's a right where I have been educated in Karnataka. I have done my education there. It's a right where every individual has all the right to come, to stay somewhere, to be educated, to work for a healthy life, and nobody has all the right to stop. No such bills can be passed as per the Constitution. So you're saying you cannot pass a bill saying employment will only be provided to Goenkars. You cannot pass land laws which say that land will belong it's like Cinderella in Wonderland. People are only trying to fool people, and nobody wants to show someone like, Baba, how much good you are and how much bad I am. We all know which party all have come from and how much clean all are. Do not use Surf Excel to surf yourself. Okay.
Manoj, you need to respond to what you've just heard. That all this Goenkar porn is actually you are playing with the emotions of people. The reality is that you can't stop people from coming from Karnataka or any other state into Goa, just as Goans cannot be stopped from going to other states. Yeah, correct. What Bhatikar has said, that and we cannot stop anyone from buying the land. I think this is a political immaturity or illiteracy I would like to call, because there are certain laws which state assembly can do or bring and pass in the assembly where to protect their land. So every state like Maharashtra has a land protection bill, Karnataka has a land protection and conservation bill, Haryana has a land protection bill. Why not Goa? First is that, and second is there has to be a capping in buying a land, because Goa is a very tiny state and we cannot just allow anyone to come to Goa and buy as much land that they can. And about setting with the Aam Aadmi Party, I was just a volunteer in Aam Aadmi Party. I left Aam Aadmi Party because there was something that motivated me to join Aam Aadmi Party. That was a Swaraj book from by Arvind Kejriwal, but which was compromised totally. There was no Swaraj, there was no decentralization of powers. There's all centralization of the powers from the Delhi, and that is what is happening in Goa. No one is speaking for Goans, no one is speaking for Goa, and no one is speaking in action, okay, to save our Goa. Like Vijay Sardesai said, he has brought some laws. I would like to remind him that regional plan, the operationalization was done by Goa Forward Party. Then 16B was brought by Goa Forward Party. Then again PDAs were brought by Goa Forward Party. And all these things, Vijay was a TCP minister. He would have easily brought in land protection bill and conservation bill, which was actually supposed to be brought by the political parties 30 or 40 years before. There was no action on the illegal slum. There was no action on the illegal encroachment of the land. There was no action on the illegalities, illegal buildings and illegal big construction. And this was allowed by all the successful. You are claiming that the mainstream parties, whether regional or national, that have existed so far, have been hand in glove with the so-called land mafias? 100%. Goan politics is now in the hands of land mafias. There are land dealers, there are land real estate agents who are right now in the assembly, who are contesting and who have been in the ministry and who have done all the laws to sell Goa to the migrants or the outsiders. Vijay, this is the most serious charge that is coming, that out of the 40 MLAs, most of them have some connection today to the land mafia. Most of them either are property dealers themselves, 12 of them are hotel owners, resort owners. We saw even in COVID time, that's why there was a reluctance of some of them to impose a lockdown in Goa. Is Goa for sale? The feeling is that regional parties should be standing up to those who are today saying Goa is for sale. Please come and take over my land is the charge which is being made. And when you were minister, you didn't do enough to stop it. First thing is the technicalities of the law, like saying that PDAs were brought by me. PDAs were never brought by me. PDAs have been in Goa from the time of Ravi Naik. So the planning areas, there is something called a planning area and non-plan areas. Planning areas are the cities. So cities are planned differently because the FAR, which you in Bombay call FSI, floor surface index. Floor space index. Here we call it as floor area ratio. Yes. So here, wherever the FAR is more than 1, you will have a planning area. Planning area comes under a PDA. Now you have got a village like Mopa, where an airport is coming up. That Mopa is going to be a planning area. Nobody can stop it. Just because you speak in a round table here doesn't change the law. The law is that land in Goa, whether it's in the villages or in the cities, it will be categorized. In the villages, it will be non-planning areas. In the cities, it will be planned areas. Planned areas are those where PDAs come. Now, PDAs, what do the PDAs do? PDAs give you extra FSI. So you have, high-rise construction in the cities, which is normal. In which cities do you not have a high-rise construction? Number one. Number two, you are bringing the land mafia. And you are saying that there is a representation of the land dealers in the assembly. Yes. Now you tell me, you come to Goa and you want MLAs to be who? Teachers. What do you want them to be? Football players. What do you want them to be? I have no problem. Do you want people? I want people who follow the rule of law. Boss, whoever comes to power should follow the rule of law. No. You cannot have people who says MLAs who are elected to the house are not following the rule of law? Look at the number. Who says it? I've been MLA for 10 years. You show me one law I have broken. You show me that. Here you can show me
one law that I have broken. Now it is not a hypothetical law that you are wanting to create, that you are trying to, in your dreamland try to create. See, you cannot bring in laws which are ultra virus to the constitution. You cannot say that land cannot be bought by somebody. You can now restrict the buying of that land by increasing certain taxes, by prioritization of the interests by ensuring that when land is brought, environment rules are observed. Yeah. You now can ensure. Point you can is, at least ensure. you'll never able to make Article 356 here. Once it is gone, it will never come for Goa. So that special status that we keep talking about in the assembly during the elections is dead once and for all. Okay. Let us understand this. Mr. Chidambaram has said it once as a minister for finance at that time. Before that, Pranab Mukherjee had said it. The BJP successive ministers, Arun Jaitley has said it, that special status for Goa is not possible. Now you bring your local laws. You make local laws to prioritize the interests of the sons of the soil. These are now issues which cannot be settled at a round table, which need discussion. Fair enough. Yeah. I have 5 minutes and you use the word sons of the soil. Yes. That is essentially the plank that even the revolutionary Goans is talking about. Unemployment in this state a year ago was almost 25%, one of the highest in the country. 1 in every 4 Goans therefore did not have a job. And this has become a very emotive issue. I want to understand this. Do you believe somewhere that there is a need for political parties, especially the regional parties that claim to be connected to the ground, to see what can be done? Yes. To ensure that the sons of the soil get priority in some form or the other in jobs? Do you believe they should get priority or not? Yes, they should get priority, and this priority can only come if people like Deepak Pavaskar and BJP Pramod Sawant are thrown away, who prioritize job only by taking 30 to 40 lakhs per job. And I think if we select and elect a proper candidate, only then we can think about all such stuff. So is there a consensus that sons of the soil should be there? Priority should be for Goans? Is this a consensus across parties? No. Because some parties have made it part of their manifesto, like the Aam Aadmi Party. No. I moved a bill in the House as a private member bill 1 year ago, just 1.5 years ago. This was to bring a reservation of 75%, 80% of jobs in the private sector to Goans. Who are Goans now? He'll ask me what is the definition. Now, how can you reserve jobs? How can you tell a private sector person 80% jobs have to be reserved for Goans? You can do it in government, but you can't do it in the private sector. No, you can do it. You check what Chautala did in Haryana. The same thing. What Chautala did in Haryana under a BJP alliance government, I was asking them to do it here. But today, just today, the High Court in Haryana has taken cognizance and stayed it. That's right. Today, but that is 3 years after he has done it. But you believe that there should be a law. I believe that in private sector yes, also should ensure 100%. that 80% jobs should be for locals. Yeah, 25 years of domicile, residency and knowledge of Konkani. After this Chief Minister Pramod Sawant has become the CM, he has diluted the knowledge of Konkani in every sector. Okay. Which means he wants to get people who don't know Konkani and give them jobs. Our mother tongue is the only thing that makes us Goans. One, and our birth in Goa. So that is the 25 years of discontinuous, okay. Manoj, both the parties are agreeing sons of the soil. Yeah, which is your plank also. Yeah, they have been always been agreeing about sons of soil, but they are not ready to define who is a son of soil. That's the biggest question. And secondly, about the he's saying 20 years of domicile. Yeah, that's what that is not knowledge of Konkani. Yeah, that is not acceptable. That is not acceptable to many of the Goans. So who is the son of the soil? We have defined a person of Goan origin, where we have put a cutoff date, 20th December 1961. Any person who's either of the parents or grandparents born in Goa before liberation and whose families are staying in Goa right now, or will be coming next. We define them as a person of Goan origin. Okay. And secondly, about the employment. The employment to the migrants is a policy failure from the successive government. MGP leader Sudhin Daulikar has been in government, so many government. He's been a joker of politics of Goa, and he's been in different political parties, but they have failed totally to make a law or to make a policy wherein our Goan youth can be employed in the industries. There's a huge gap between the talent and the industries requirement, and that gap, no government is trying to fill that gap, or no government is trying to bring that training or training institute in the Goa so that industries can be catered. So we need to work on that policy so that there's automatic employment. Manoj is saying that at a round table before Goa elections, you say a lot of things that we want sons of the soil, we will ensure employment.
When you come to power, then you become deal makers. That is what I think is being suggested. Exactly. Sudhin Rajdeep, one Tawli, second. the- Rajdeep. you see, the belief is today MGP, which was the original regional party of Goa, has become a party of the Dhavlikar brothers, and they will go where where power is. If power is with BJP, Mr. Sudhin Tawlikar will go with Nitin Gadkari. If power is with Congress, he will find some deal with Digambar Kamath. That is the reputation of the original regional party of Goa. So you know which way, who has to be connected where. Sorry? Who has to be connected where, you know. No, all I am saying is that I had heard. They say Gadkari only made this new alliance. No, but I was told that Mr. TMC Gadkari. No, one TMC minute. Vijay Sardesai. I was told that Nitin Gadkari flew to this very hotel on the day after the last elections, met you at 2 a.m. in the morning, and that is how the deal was shown next morning, that you went with Manohar Parrikar. No. Where in this hotel did you and Gadkari meet, and what was the deal? No. See, Nitin Gadkari. No, you mentioned it, that's why I didn't. Nitin Gadkari doesn't happen to be a relative of mine, first. Yes. He happens to be a distant relative of Sudhin Tawlikar. This Yes. is what I've heard. Yes. I'm not verified. To get Parrikar to Goa, I don't require Gadkari. It is a thing between two Goans. I don't require an outsider. Did you to meet make a Did deal. you meet Nitin Gadkari You late had- in the you had night to or meet- not? No, you had to meet him because he was part of this, because we had to talk about our portfolios. But I didn't meet him to form the government. Okay. I didn't require Gadkari to bring Parrikar to Goa. Yes, okay. You wanted to respond. I'll just tell you one thing. What he said, Mr. Manoj Parab, from 1961. I can assure you one thing. Manoj Parab has taken all the history of his family members when they entered Goa and made this Pogo Fogo bill. This is point one, so that his family is safe, and then he can call himself Goan karke. This is one point. Secondly, he wants to be CM. I think he needs to understand what is literacy. I don't need any percentage from him. A person after 10 o'clock, I don't know what gets in his body, calling people in Konkani when they call someone kutro, dogs. These are the unparliamentary, unused words on Facebook, social media. Goa does not need such person to be even called as a leader. This is second point. And third point I will ask you. Calling someone a joker. After Kapil Sharma, there is another show which is going on every day on Facebook. People know which is that show. I don't want to talk on that. And lastly, Rajdeep, I don't understand how you understand about every deal. We need to know this also today. No, Because every deal with Sudhin, Digambar, Vijay, are you a part of it or you know it? If you know, why don't you expose it? No, good point. Ah. I wish we could expose all the wheeling and dealing that goes on in Goa, but it is a sad commentary that in the last 20 years, Goa has had more chief ministers than any other state of India. That is the reality. And when that happens, when this instability happens, presumably there is some dealing that's going on. It doesn't help Goa to have that kind of instability. Therefore, in conclusion, let me ask each of Just you. one Are you confident, Vijay Sardesai, that 2022 will see an end to this politics of wheeling and dealing? The first thing is, the cancer that has affected the Goan polity is the cancer of defections. Now this defection the BJP has excelled in. They do something which is post-poll defection, which everybody knows, which comes under the 10th schedule of the constitution. Yes. As yet it is rotting in the High Court. The High Court has not decided. The term is almost over. So now after excelling in post-poll defection, they have started pre-poll defection, wherein they took members from every political party. Everybody who is capable of winning, they have, by force or something, they have picked him up. Now, to the luck of the Congress party, they have somehow flushed out all the filth of the Congress. The corrupt, the defectors, everybody has been flushed out by the BJP and taken in as part of their lineup. So the BJP has a very strong lineup. But all heavyweights, many times the ship with heavyweights sinks with his own weight. So I expect that the socio-politically conscious electorate of Goa sinks this BJP ship, gives a clear mandate to the Goa Forward Congress Alliance, and we get rid of defections once and for all, and there will be no wheeling dealing. Okay. Once there is no defection, there is no wheeling dealing. Nobody comes in the night. We do it in the morning. Yeah. Okay. Right in the sun. Okay, good. Yeah. We should have, if at all a government should be formed, it should be formed in the sunlight. It shouldn't be formed after midnight, because it is after midnight that most of the wheeling and dealing, it seems, takes place in Goa. Either way,
Regional parties continue to have an important role because they are connected in many ways to the ground in a small state. Goa's regional identity is an important element of Goa's statehood, and Goa, remember, in 1967 chose not to merge with Maharashtra because the Goans wanted to retain their sense of unique identity. So whichever national party comes to power also and ties up with a regional party, the regional parties will continue, it seems, to have some role to play to tap into that sense of Goa's strong regional aspiration. For joining me here on the India Today Roundtable, Manoj Parab, Vijay Sardesai and Dr. Bhatnikar, thank you very much for joining me on the show. Next up is the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. You are watching the India Today Roundtable here in Panjim. Thank you.
बीजेपी इतना बड़ा इशू बना रही है कि फलाना क्रिमिनल है, उसको सपा ने टिकट दी, मैं नाम लूंगा तो फिर आप बोलोगे कि मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन वैसे ही तो बीजेपी वाले हैं। तो क्या जो आप इशू बना रहे हो उत्तर प्रदेश में कि सपा ने क्रिमिनल्स को टिकट दी, कैसे दे सकती है, हमारी सरकार है, गोवा में तो आप ही क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दे रहे हो। मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि किसी के क्रिमिनल ग्राउंड या किसी को छुपा हुआ नहीं है। इस बार तो हर किसी का वट एवर द ग्राउंड तो डिक्लेयर किया हुआ है, किसके ऊपर कितने एफआईआर हैं, जो कुछ है वो तो लोगों के सामने है। फिर भी यही जो सभी लोगों के लिए काम करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आर आल्सो देयर ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स। कुछ बड़े बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने हाल में छोड़ा भी है बीजेपी। कोई आप जा रहा है, कोई कांग्रेस जा रहा है, तो ऐसा एक सेंस बन रहा है कि बीजेपी उस मोमेंटम के साथ इस चुनाव में नहीं जा रही। जैसे 2012 में गोवा की जनता ने एक तरीके से मन बनाया कि कांग्रेस को हराना है और बीजेपी को लाना है। इस बार क्या आपको लगता है, आप मानते हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने के बहुत चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। 2012 में पहले हम सत्ता में नहीं थे। 2012 में सत्ता में आने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के ही पास आ रहे थे, और इस बार हम पूरे 10 साल सत्ता में हैं, तो कुछ लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं। जैसे कि माइकल लोबो खुद के बीबी के लिए टिकट के लिए जा रहा है। उसका पर उनका 5-6 सीटों पे तो दबाव है बारदेश के इलाके। मैं ये बात बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो नेशन फर्स्ट वाली पार्टी है, नेशन फर्स्ट है, लोग फर्स्ट है, बाद में हम हैं। तो माइकल लोबो तो पत्नी फर्स्ट वाले नेता हैं, उसको उनकी बीबी को ही टिकट चाहिए, बस उतना ही उनका ध्येय है। राज्य लोग कुछ नहीं है। हाँ, तो रही बात वहाँ के सीट्स और ये, तो डेफिनेटली हमारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, और उस तालुका से भी लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिता के देंगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। एक जो बड़ा फैक्टर था 2012 में बीजेपी की जीत के पीछे, वो ये था कि कैथलिक्स ने बहुत वोट दिया आपकी पार्टी को। अब हम देख रहे हैं कि ओपन अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि इस दफ़ा कांग्रेस को सपोर्ट करना है, बीजेपी को बैक नहीं करना है। तो ये जो एक फैक्टर था 17 के चुनाव में, 12 के चुनाव में बीजेपी को जिताने में, लग रहा है कि वो गुडविल क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में आप खो चुके। मुझे कहीं नहीं दिखा किसी ने ओपन स्टेटमेंट करते वक्त। आपको गोवा में बात करो, आप लोगों से बातचीत करो, आप लोगों से बातचीत करो। माइनॉरिटी बड़ी मात्रा से गोवा में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली कल मैं तो मैं सालीगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में था, खुद सालीगांव का फादर वहाँ पे प्रे करने के लिए ऑफिस इनॉग्रेशन में, हमारे जय सालगांवकर के ऑफिस इनॉग्रेशन में आया था। उन्होंने प्रे किया, उसको ब्लेसिंग्स दिया। मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो हर एक जगह पे वहाँ का फादर, बाकी माइनॉरिटी लीडर्स वहाँ पे आते हैं। तो डेफिनेटली इस बार हमने भी 12 टिकट्स माइनॉरिटी को दिया है, और उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहाँ के माइनॉरिटी और बोथ द मेजोरिटीज दे आर सपोर्टिंग। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी के तत्व पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी के साथ फिर से एक बार गोवा में चुन के आएगी। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कैथलिक कम्युनिटी के लोगों से बात करें तो बड़ा क्लियर है कि इस बार वो बीजेपी को नहीं जिताना चाहते। तो आप उस डेफिसिट के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। हो सकता है कोई इंडिविजुअल पादरी हो, प्रीस्ट हो, जो कि पार्टी को बैक करें, लेकिन मोरलेस तो कम्युनिटी ने एक तरीके से मन बनाया है कि जैसे पर्रिकर जी ने जोड़ा सब रिलीजन्स को, अब वो आपके लिए काफी चैलेंज होने वाला है। मैं पूरे गोवा में टूर कर रहा हूं, तो सभी जगह जहां पे जाता हूं तो वहां का माइनॉरिटी लीडर्स या वहां के फादर्स, वहां के हमारे हर एक कैंडिडेट के साथ में खड़े रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। आपको कौन मिला और किसने बताया मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरी माइनॉरिटी हमारे साथ में है। मैं मेजोरिटी तो है ही है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स, लेकिन गोवा में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है किसी के साथ। तो फिर गोवा इज अ डेवलप्ड स्टेट, एडुकेटेड स्टेट्स, तो फिर कोई किसी को इस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि कोई वोटिंग के वक्त भी इस तरह से ट्रीट करता होगा। पैंजिम की बात करते हैं। सवाल ये उठा कि उत्पल पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर के बेटे लड़ना चाहते थे, आपने एक ऐसे शख्स को टिकट दी जो कि बाहुबली हैं। पहले तो मैंने नहीं दिए टिकट, तो सेंट्रल पार्टी देती है। आप ही पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। इट इज ट्रू, लेकिन हमारे टिकट्स डिसाइड तो सेंट्रल पार्टी करती है। दूसरी बात, डेफिनेटली हमने दी है, हमारी पार्टी ने दी है, लेकिन उत्पल पर्रिकर भी हमने 3-4 जगह से ऑफर की थी, और उन जैसे कार्यकर्ता ने, मुझे लगता है वो जो 3-4 जगह पे ऑफर दी थी, उनमें से एक कौन सा तो सीट सिलेक्ट करना चाहिए था। डेफिनेटली वो बड़ा नेता बन जाते थे उनके लिए,
यानी अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, यानी अच्छे सीट से भी उनको ऑफर किया था, तो उन्होंने वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। तो क्या हुआ, आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट रहा, ईगो रहा, क्या रहा कि आप मैनेज नहीं कर पाए? क्योंकि आप ही के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटा जो कि बीजेपी में ही पला बड़ा है, अब वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ता है, तो काफी बेइज्जती की बात है बीजेपी के लिए कि अच्छे आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए। हमारे सभी पार्टी के नेता उनसे बात करते थे, अभी मुझे पता नहीं है उनका पर्सनल क्या है, लेकिन इस तरह से किसी कार्यकर्ता के साथ किसी हमारे टॉप लेवल लीडर ने बात करने के बाद कोई अपने को नेता बनना है या पार्टी में ग्रो होना है, डेफिनेटली एमएलए होना है, तो मुझे लगता है जो 3-4 सीट्स ऑफर किए थे उसमें से एक आधे दूसरे सीट्स पे इलेक्शन डेफिनेटली लड़ता था। जिस शख्स को आपने टिकट दिया है बाबूश, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे साथ है, उनके ऊपर चार्जेस हैं सेक्शन 376 रेप, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, फिर सेक्शन 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर पॉस्को एक्ट में। इसके अलावा उनके ऊपर सेक्शन 143, 147, 148, 149, 153, 323, 324, 335, 333, 427, 335, ये सारे चार्जेस है। और यही नहीं, तीसरा केस है अंडर सेक्शन 326, 554, 504, 506 एंड 509 असॉल्टिंग अ वुमन, और ये आपके कैंडिडेट है। मनोहर पर्रिकर के सरकार में भी ये मिनिस्टर रह चुके थे। मनोहर पर्रिकर के सरकार में रिसेंटली यानी बाबूश मोन्सेरात पीडीए के चेयरमैन भी रह चुके थे। इट इज नॉट ओनली नाउ द पार्टी हैड गिवन हिम टिकट। तो मतलब कि पहले भी हमने गड़बड़ किया, उस गड़बड़ को कंटिन्यू ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि मैं लीडर होने के बाद ही ये वो है, ऐसा इसीलिए मैंने मैं तो बताया। अभी इस चुनाव में क्या हो रहा है वो बोल रहा हूँ ना। नहीं, इसलिए बोला कि ही इज एट 2002 के सरकार में भी वो हमारे साथ में मंत्री रह चुके। 2017 में तो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ में थे, तभी वो पीडीए के चेयरमैन भी थे, तभी भी उतने ही सारे केसेस थे। इतने सारे केसेस होने के बाद भी लोग उनको चुन के देते हैं। अच्छा, मुझे एक सीरियसली चीज बताओ कि अगर गोवा की पॉलिटिक्स को क्लीन करना हो, ताकि इस तरह के बाहुबली दबंग कैंडिडेट जिनके ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं वो ना हो, क्योंकि असेंबली कंस्टिट्यूंसीज छोटी हैं, वोटर्स कुछ हजार, जैसे दिल्ली का एक वार्ड होता है उससे बड़ा होता है यहाँ, मतलब यहाँ की पूरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी। क्या आपको लगता है कि क्लीन पॉलिटिक्स पॉसिबल है गोवा में, या ये ऐसे ही चलेगा, होटल बिल्डर्स माफिया यही कंट्रोल करेंगे कि क्या होगा? मेरे जैसा जब युवक पॉलिटिक्स में आता है, विच इज फ्रॉम द फार्मर्स फैमिली, स्मॉल फैमिली, ओके, मुझे लगता है कि गोवा का पॉलिटिक्स क्लीन होना चाहिए। मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में आया, छोटा सा बूथ कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा का अध्यक्ष, बाकी पार्टी के कैडर से बड़ा, और डेफिनेटली मुझे लगेगा कि क्लीन पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये तो लोगों के ऊपर है, यानी किस तरह से कैंडिडेट चुन के देना। ना, मैं इससे सहमत नहीं। लोगों के ऊपर कैसे? अरे आप बड़ी पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देगी, वोट कौन देते हैं? वोट तो लोग ही देते हैं। टिकट कौन देता है सर? टिकट पार्टी देती है। तो क्यों देते हो ऐसे गुंडों को? आप मत दो गुंडों को टिकट। आप गुंडों को टिकट दे रहे हो, फिर बोलो अरे जनता अगर देगी तो किसको देगी? आप जिस कैंडिडेट को दोगे उसी को तो देगी। विनेबिलिटी इज ऑल्सो द क्राइटेरिया। तो ये तो चिकन एंड एग है ना, कि चिकन पहले आएगा कि एग पहले आएगा। ये तो सही बात है। आप क्लीन कैंडिडेट को दोगे, जनता को मौका तो इसीलिए तो आम आदमी पार्टी कह रही कि ना इनकी हम आ गए। हमने तो बाईपोल में तो दी थी, तभी लोगों ने नहीं दिया चुन के। हमने कहा ना कहा था। 2019 में हमने तो हमारे एक्स एमएलए सिद्धार्थ कुकरेकर को ही टिकट दी थी, तो फिर हमारी कहाँ गलती है? तो फिर पंजिम से क्यों चुनने नहीं आए? तो मतलब गुंडे को ही टिकट देनी पड़ेगी? मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप जो कह रहे हैं कि वो गुंडे नहीं है, अब वो गलत बात कर रहे हैं। मैं तो ये बता दूंगा, क्योंकि मेरे कैंडिडेट को किसी को आप गुंडे इस तरह से बात नहीं कर सकते। उन्हीं के ट्रैक रिकॉर्ड देख के बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे लगता है ढेर सारे लोगों के हो सकते हैं इस तरह से, बाकी कितने ही लोगों के। यानी ट्रैक रिकॉर्ड होने से अभी वो सुधर गए होंगे। सुधर गए होंगे? ये ऑडियंस में लोग बैठे हंस रहे, कह रहे कि आप ऐसे बोल रहे सुधर गए होंगे। तो डेफिनेटली आप उनके ही इज माय नाउ क्लोज फ्रेंड, ही इज विद इन माय, हमेशा मुझे मिलता है। आप पेंजिम से किसी लोगों को पूछो, मुझे नहीं तो आप लोगों को पूछ के देखो। लोगों के बीच में रहता है, लोगों के हमेशा लोगों के साथ में रहता है, हर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट काम करता है, लोगों का काम करता है। और डेफिनेटली इस बार भी मैं कह रहा हूं कि डेफिनेटली बड़े मार्जिन से वो जीत के आएंगे। आप देखो, आपको पता चलेगा रिजल्ट होने के बाद। तो बेसिकली आपके हिसाब से इसलिए मैं वही तो बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये नहीं जो बात, हाँ, एक के ऊपर कौन से भी केसेस लगना, इसका मतलब ये नहीं कि ही हैज डायरेक्ट, इट इज नॉट प्रूव्ड, इट इज मैटर इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट। नहीं, इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि गोवा को आपकी जरूरत है, क्योंकि ये क्लीन पॉलिटिक्स
ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है ना, उसके ऊपर कितने केसेस है देखो। उनके जो सीएम फेस कैंडिडेट यहाँ के हैं, उनका सेक्शन आपने लाया नहीं है। मुझे लगता है इससे आधे सेक्शन जरूर उनके ऊपर होंगे। आप देखो पहले निकाल के, आप आते वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस है वही लेके आए हैं। उन्होंने क्लीन कैंडिडेट्स को भी टिकट कहाँ पता है, लेकिन ये जो सीएम फेस यहाँ पे दिया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, गोवा वासियों को पूरा पता है कितने केसेस उनके ऊपर है, किस तरह से बिजनेस में वो इन्वॉल्व है। आप और टीएमसी की एंट्री से आपको सिर्फ, मैंने अभी रूलिंग में भारतीय जनता पार्टी हूँ, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, इसलिए हमारे ही कैंडिडेट दिख रहे हैं। जब आपका लीडर आएगा, केजरीवाल जी यहाँ आने वाले हैं शाम में, आपके सीएम कैंडिडेट भी आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे ना जो आप सर। ये बोल रहा हूँ मैं, ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के रखो, हम रखेंगे, वो अच्छा पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके विचार में इस चुनाव में एक फर्क यह है कि आप भी है और टीएमसी भी है, तो ये पार्टी नंबर 3 और 4 के आने से आपके हिसाब से चुनाव के नतीजे पे क्या इम्पैक्ट होगा? मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि सबका ध्येय से सबका लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। हमारा ध्येय वो नहीं है, हमारा ध्येय है भारतीय जनता पार्टी जीते। बस स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताओ, यही हम कर रहे हैं। किसको हराना ये लोगों ने डिसाइड करना है। एक जगह पे हम टीएमसी के साथ लड़ रहे हैं, एक जगह पे गोवा फॉरवर्ड, एक जगह पे आम आदमी पार्टी, दूसरी जगह पे कांग्रेस। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टी जो अलग अलग पार्टियां हैं हमारे जो अपोनेंट में है वो। तो आपके हिसाब से टीएमसी ज्यादा बड़ा खतरा है या आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से फोर्स नंबर 3, और इनके रहने से इस चुनाव के डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? इसलिए मैं बताता हूँ कि वो सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी और हर तालुका में ये पिक्चर बदलता है। जैसे कि आप फोंडा में देखो तो सेकंड प्लेस पे मुझे लगता है कई जगह पे तो एमजीपी रहेगी, लेकिन एक आधे दूसरे सीट पे वहां पे आम आदमी पार्टी है, वहां तो कांग्रेस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फोंडा तालुका निकाल के देखो। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ तालुका में, मैंने 70 तालुका देखो, वहां तो कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं, खत्म हुआ। कांग्रेस पार्टी पूरी खत्म हो रही है गोवा से। आप सही में देखो, फोंडा तालुका में देखो, 70 तालुका में देखो, चाहे तो अभी सिर्फ बिचौली तालुका में मेरे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बची है, बाकी तो बची है तो बची सिर्फ सालसेत में बची है और कहीं पे भी नहीं है। कानकोना में देखो, कांग्रेस का सामने कोई दिखता ही नहीं है। सावरडे में देखो, कुड़जड़े में कोई दिखता नहीं है, कांग्रेस वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं। वहां तो आम आदमी पार्टी कहाँ, एमजीपी, टीएमसी, इन्होंने बड़े इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे सामने। पर क्या आपको चिंता है कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, हंग हाउस आता है, तो ये जो इस दफा छोटी पार्टियां हैं, वो विजय सरदेसाई की पार्टी हो, आप हो, टीएमसी हो, कांग्रेस, ये आपके साथ तो मिल नहीं सकते, लेकिन ये सारे एक साथ मिल सकते हैं आपके खिलाफ? आपकी बात सही है कि ये लोग हमारे साथ में कभी आने वाले नहीं है। उनका एजेंडा एक ही है, बीजेपी को हराओ, मोदी जी को हराओ, डॉक्टर प्रमोद सावंत को हराओ बस। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरा पूरा भरोसा गोवा के लोगों के ऊपर है। इस बार वो एमएलए चुनने के लिए नहीं, वो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसलिए सरप्राइजिंगली आपको 2-3 सीट ऐसे भी मिलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के हेड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर पार्सेकर छोड़ के जाते हैं। अब ये क्या सिचुएशन है कि बीजेपी जैसी पार्टी में, कांग्रेस में होता रहता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गया, जितिन प्रसाद छोड़ गए, आरपीएन सिंह छोड़ गए, बीजेपी में बहुत कम होता है कि किसी पार्टी ने किसी पे इतना भरोसा किया हो कि उसको सीएम बनाया हो, वो आदमी छोड़ जाए। क्या हुआ यहाँ पे? पार्सेकर, मुझे लगता है कि पार्सेकर से ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो पार्टी से खुद को बड़ा समझने लगे हैं, इसीलिए वो छोड़ के गए। नहीं तो उन जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़ना उचित नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो द फाउंडर लीडर थे हमारे पार्टी के। यहाँ से जब किसी को मैंने पार्टी के ऊपर खुद लगने लगा है तो इस तरह के डिसीजन कभी कभी लेते हैं। एक एनालिसिस में देख रहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस से आए 10 लोगों को टिकट दी है, तो करीब 25% आपकी टिकटें ऐसी हो गई जो कि आपने इंपोर्ट्स को दिए हैं। अब बीजेपी इतनी स्ट्रांग संघ के कार्यकर्ताओं की, अपने खुद के वोटर्स के बीच में प्रभाव रखने वाली पार्टी है, और यहां पे आप सारे इंपोर्ट करके दे रहे हैं। विजिबिलिटी इज द क्राइटेरिया। सिटिंग एमएलए थे, उनका लोगों के ऊपर प्रभाव है, उन्होंने काम अच्छा किया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको सब कुछ, उनका सर्वे रिपोर्ट ये देखने के बाद तो सेंट्रल लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया है।
बाकी टिकट्स जो दिया है वो हमारे साथ में जो कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी बाकी टिकट्स हमने दिया है। और आज इस बार फर्स्ट टाइम वी आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज। वहाँ पे भी हमने जो अच्छे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए डेडिकेटिवली काम करते हैं उनको भी तो टिकट दिया है। हमने टिकट्स की, डिफेक्टर्स की, बाहुबली कैंडिडेट्स की काफी चर्चा की। अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि आपका विजन क्या है। चलिए मान लीजिए कि जनता आपको मौका देती है, तो अगर आपको सीएम की गद्दी पे फिर से बैठने को मिलता है, आप एक्टिवली क्या करेंगे? क्या है ये गोल्डन गोवा? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राज्य करना ये मेरा विजन नहीं है, सेवा करना ये मेरा विजन है। इसीलिए बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उनको पूरा करना। द सेकेंड थिंग, जो माननीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उनको जो हमने कन्वर्ट किया है स्वयंपूर्ण गोवा में, वो स्वयंपूर्ण गोवा मिशन अभी स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए और 5 साल चाहिए, चाहे वो गोवा सेल्फ रिलायंट सभी चीज़ में हो जाए। जो अभी तक हम डिपेंडेंट थे 60 साल से बाकी और स्टेट के ऊपर, वो स्वयंपूर्ण गोवा पूरा करना। और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यानी चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी हो, टूरिज्म हो, माइनिंग सेक्टर हो, फिर से एक बार यानी यहाँ से अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जनरेट करना, चाहे कि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देना। यहाँ पे कई सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि जब से वैसे भी यूजुअली भी और खास तौर से आपके टाइम पे इन्वायरमेंटल लॉज जो है उनकी अनदेखी होती है। आप डेवलपमेंट एट ऑल कॉस्ट, कि गोवा जाना जाता है अपनी प्रकृति के लिए, आप उसको जिस तरह से एफर्ट करना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे। माइनिंग माफिया हो या कंस्ट्रक्शन माफिया हो या बिल्डिंग माफिया, उसको आप फटाफट प्रोजेक्ट्स में क्लियरेंस दें। मुझे लगता है कि एक तो बात आपने देखना चाहिए कि ढेर सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कितने सारे गोवा के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर भी केसेस फाइल किए हैं। हम जब सोचते हैं तब अभी 60 साल हम गोवा के मना रहे थे, अभी इसके साल हम कभी मैंने 75 ईयर्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑल्सो गोवा का करेंगे। तो फिर जब गोवा डेवलप्ड हो रहा है तो टूरिज्म सेक्टर में डेवलप होना चाहिए। पहले हमारी जब इंडिपेंडेंस गोवा का लिबरेशन हुआ तब 5 साल की लोक संख्या थी, अभी 5 लाख के लोग थे, अभी 15 लाख तक डे बाय डे बढ़ रहा है। वहाँ पे 2011 में सिर्फ 24 लैक्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, अभी 84 लैक्स ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी तो ज़रूरी है। ब्रिजेस चाहिए, रोड्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, बीचेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। समझो ये नहीं करेंगे तो यहाँ का टूरिज्म सस्टेन नहीं हो पाएगा, यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। सिर्फ यानी इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एट ऑल। आप ये बताएं, आपने टूरिज्म का जिक्र किया, और ये मैं एक बात जरूर कहूँगा कि विद द सस्टेनेबल ग्रोथ से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जब 7 नंबर पे थे, अभी हम 4 नंबर पे हैं। आपने टूरिज्म का जिक्र किया, अगर आप किसी बीच पे जाते हैं, 8-10 साल पहले आते थे और अब आते हैं, तो बहुत फ़र्क है। कई सारे एक्स्ट्रा शैक्स हैं, एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें से कई ने जो उनके इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस थे उससे ज़्यादा SEZ जो नॉर्म्स हैं, कोस्टल सिक्योरिटी के जो नॉर्म्स हैं, उनको वायलेट करते हुए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए। टूरिज्म एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप हो, उसके लिए चीफ मिनिस्टर आपका क्या प्लान? आपकी बात सही है कि सस्टेनेबल वे से ही टूरिज्म हो, लेकिन इफ़ यू कंपेयर विद द अदर स्टेट्स, मुझे लगता है कि यहाँ के CRZ हो, बाकी CZMP हो, सभी को पहले फॉलो करके ही हम सभी परमिशंस देते हैं। दूसरे स्टेट से ज़्यादा रूल हम फॉलो करते हैं डेफिनेटली। यानी उसी तरीके से ही यहाँ के शैक्स हो, होटल्स हो, बाकी जो डेवलपमेंट आ रही है कोस्टल साइड में, वो अच्छी तरह से और पूरे रूल फॉलो करके हो रही है। और इससे आगे भी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम प्रमोट करेंगे। इससे पहले आप स्पीकर थे असेंबली में, काफ़ी यंग एज है आपकी, और आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब सब लोग पर्रिकर यानी सचिन तेंदुलकर या गावस्कर उसकी जगह आप आ गए। तो ये कितना भारी पड़ता है आप पे, और इस नई जिम्मेदारी को आपके हिसाब से आप किस हद तक एडजस्ट करके, अडॉप्ट करके डिलीवर कर पाए? जब मुझे स्पीकर बनाया था तभी लोगों का यही कहना था कि आप बहुत यंग एज पे आप स्पीकर बन गए, लेकिन 2 साल में स्पीकर पोस्ट के लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से निभाया।
और उसी का फायदा मुझे चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी हुआ। 3 साल से मैं सीएम बोल के काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से मेरे 100% उस पोस्ट के लिए देने का मैं काम कर रहा हूँ। बाकी तो अप टू द पीपल ऑफ द गोवा। आपको मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप ही खुद लोगों से पूछ सकते हैं, या आपको ही ज़्यादा अच्छा मालूम हो सकता है, क्योंकि चाहे वो 3 साल में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, बाकी चीज़ों कैसी रही, डेवलपमेंट कैसा रहा, बट आई एम सेटिस्फाइड whatever I have did in my last 3 years. ये यहाँ पे पहले गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बयान दिया कि बहुत करप्शन है गोवा। मतलब ये गवर्नर थे, आप ही की पार्टी ने, आप ही की सरकार ने उनको एक तरीके से अपॉइंट किया था। वो कहते हैं कि गोवा गवर्नमेंट ने कोविड को मिस हैंडल किया, हर चीज में करप्शन था, मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई इसीलिए मुझे हटा दिया, मैं लोहिया आइट हूँ। और आपकी सरकार की जो डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन की स्कीम थी वो इम्प्रैक्टिकल थी। एक किसी कंपनी की जिद पे सरकार ने पैसा दिया उस कंपनी को, और बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप जो भी करते हैं उसमें करप्शन है। ये तो आप ही के गवर्नर कह रहे हैं पुराने। मुझे लगता है कि आपने उन्हीं वो गवर्नर का दूसरे दिन का स्टेटमेंट सुना नहीं होगा। हाँ। दूसरे दिन उन्होंने तुरंत ही उनका स्टेटमेंट बदल दिया, क्योंकि नहीं वहां पे कोई करप्शन नहीं था, मैंने वो ऐसा ही कहा था। तो उन्हीं का स्टेटमेंट है वो। तो इस तरह से गवर्नर ने एक दिन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया और रिपीट भी किया, मतलब बोला उन्होंने करेक्ट किया, उसके बाद फिर से इंटरव्यू दिया। तो ऐसा किसी ने उनसे फोन पे बात कर ली होगी ना, बोला क्या नुकसान पहुंचा रहे, उसने वापस ले लिया। लेकिन बाद में उन्होंने नहीं उन्होंने किसी ने उनसे बात की होगी फोन पे, उसके बाद उन्होंने रिपीट किया इंटरव्यू। अरे मुझे लगता है कि इंडिया टुडे ने उनको एक बार पूछना चाहिए कि बार बार इस तरह से स्टेटमेंट क्यों बदलते हैं। जो कुछ लोगों को, गोवा के लोगों को पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लोगों को पता है। और रही दूसरी बात, वो यहाँ थे तभी उन्होंने पीएम साहब को बताना चाहिए था। यानी किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके इस तरह का स्टेटमेंट करना उस जैसे पोस्ट के लिए ये शोभा नहीं देता है। और दूसरी तरह से फिर से एक बार स्टेटमेंट वो बदलना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और वैसा भी कुछ होता तो एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी ये रेशन वाला मामला कोई किसी ने उठाया नहीं। गोवा में तो किसी ये पता ही नहीं। यानी मुझे लगता है फिर से, और आप चाहे तो आप भी चेक करो, यानी जो ये ग्रोसरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें गोवा का नंबर 1 नंबर है। 98% डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड फॉर अस फॉर दैट पर्पस। और पूरे राज्य में किसी ने ये कभी, यानी नॉट अपोजिशन ने भी नहीं उठाया। तो फिर वो किस चीज की बात करते मुझे पता नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या इश्यूज उठा रही है, कांग्रेस इशू उठा रही है वो जो इलीगल माइनिंग पे पीएससी की रिपोर्ट है, कि उसको आप पब्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि 35,000 करोड़ रुपए का ऐसा एलिगेशन है कि एक्सचेकर को लॉस हुआ, और यही वो इशू है जो कि पर्रिकर जी ने उठाया था कांग्रेस को हटाने के लिए। वो कह रहे हैं कि आप उसको रिवील नहीं करते, पब्लिक क्यों नहीं करते? एक्चुअली ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में ये कंटिन्यूसली केस चल रही थी। तो फिर जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तब इस बारे में एक्चुअली मैंने पब्लिक करना, ये करना, वो तो मैंने मैटर अभी भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नहीं, पर ये तो बड़ा कन्वीनियंट हो गया ना, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, मुद्दे को उठा के आप चुनाव जीते, और फिर आप वही बोल रहे। कांग्रेस भी तो पहले वही बोल रही थी कि कोर्ट में मामला हम कैसे दे दें। मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि उसके बाद में भी माइनिंग के लिए जो कुछ करना चाहिए तो मेरी सरकार ने डेफिनेटली किया है। तो डेफिनेटली अभी एट प्रेजेंट द माइनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म किया, उसके बाद में हमने इंसिस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनिंग डम पॉलिसी आ गई। 2 नवंबर 2021 में डम पॉलिसी आ गई। ऑनलाइन विद दैट सेम थिंग वी आर द फर्स्ट स्टेट, हमारे स्टेट में भी माइनिंग डम पॉलिसी हमने क्लियर कर दी है। इसलिए जो माइनिंग के लिए हो सकता है उतने सारी चीज, क्योंकि मैं खुद माइनिंग बेल्ट से हूँ, मैं जानता हूँ, तो फिर माइनिंग लोगों के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो हमेशा के लिए मेरी सरकार ने किया है। एक ना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मैं एम्प्लॉयमेंट का गोवा का डेटा पढ़ रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से कम है। दिसंबर 2016 में गोवा में एम्प्लॉयमेंट रेट 49.31 था, दिसंबर 21 आते आते वो 31.99% हो गया, मतलब कि 17% एम्प्लॉयमेंट गोवा में गिर गई पिछले करीब 5-6 साल में। एक बात है यहाँ के बीइंग माइनिंग बंद होने की वजह से, द सेकेंड बीइंग द कोविड, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे स्लैग बंद हो गई थी। यानी इसी के रीजन मुझे लगता है कि ये जो रेशो है वो गिरावट जो थी वो उसी के वास्ते थी। तो अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
इसके लिए तो अभी हमने जो न्यू पॉलिसी हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आईपीबी है, इवन दो द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी है, इसमें जो जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्स हैं, यहाँ पे न्यू टूरिज्म पॉलिसी है, इवन दो मरीन क्लस्टर है, इस तरह के ढेर सारे प्रकल्प जो यहाँ के यूथों के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आईटी रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सभी चीज़ ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं। उसके रिजल्ट्स हमें आने वाले 5 साल में डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पिछली बार जब आपकी सरकार की मेजोरिटी नहीं, आपने दाएं बाएं सबको तोड़ के अपना कर दिया। अब जब कांग्रेस के कैंडिडेट जा रहे, लोगों को चिंता हो रही है, आ तो रहा है ये कांग्रेस के लिए, जीत गया तो पता नहीं बीजेपी में ना चले जाए। तो क्या आप कुछ ऐसी गारंटी दे सकते हैं कि इस दफा आप नहीं करेंगे, या आप क्योंकि विनेबिलिटी पे इतना फोकस कर रहे हैं कि जीत, मतलब वोट किसी को भी दो, आएगी तो बीजेपी ही? कांग्रेस ने इस बार उनको शपथ दिया है, आप देखो उनके पिक्चर्स भी वायरल हैं, और भगवान के सामने जाके, चर्च में जाके, दरगाह में जाके, वो सभी धर्म के लोगों को अभी पटाने के लिए या किस लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बीजेपी तो फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है और उन्हीं के लाइन पे जाते हैं। मुझे लगता है कि आपने तो आम आदमी पार्टी ने एफिडेविट दे दिया है, वो कह रहे हैं कि कोई यानी यहाँ उनके पार्टी से गए तो वो एफिडेविट लोगों को भेज देंगे, लोगों ने उनके ऊपर के, जिसको आप टिकट देते हैं उसके ऊपर भरोसा करो, कम से कम लोग कैसे भरोसा करेंगे उनके ऊपर? आपके पार्टी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने किसी को शपथ नहीं दिया है, चाहे तो वो अभी जिनको हम टिकट दे रहे हैं, जिनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, हमारी पार्टी का भरोसा है, वो हमेशा पार्टी के साथ में रहेंगे। कांग्रेस जिनको टिकट दे रही है, कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है। मुझे लगता है उनका कोई गुंडूराव और कोई है, वही पहले बोल रहे चलो भगवान के सामने शपथ दिला दो, नहीं तो कम से कम ये भाग जाएगा, कौन कितने को बिकेगा पता नहीं, लेकिन हम लेने की जरूरत नहीं, हमें लेने की जरूरत नहीं। कितने के खरीदते हैं वैसे? नहीं, हम किसी को खरीदते नहीं है। ये सब जो आए उसका क्या गोइंग रेट इस वक्त गोवा का? मैं पहले बता देता हूं, हमने किसी को खरीदा नहीं है। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट करने के लिए हम जिन लोगों ने हमें साथ दिया, जिन लोग हमारे साथ में आए, उनको हमने ले लिया। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कौन सा आपको अलायंस पार्टनर लगता है कि जिसको आप मना के एडजस्ट करके ला पाएंगे? मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मुझे भरोसा है लोगों के ऊपर। मैं पेंडेम से लेकर कानकोण तक ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर कर चुका हूं, और जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है विच इज इन द ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, मुझे पूरा भरोसा मैंने लोगों के ऊपर छोड़ा है। और लोग इस बार डबल इंजन की सरकार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में यहाँ से फिर से एक बार लाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि ये ऐसा एक चुनाव है गोवा का जो कि ओमाइक्रॉन की ये जो कोविड की वेव है उसके बीच में हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कैंपेनिंग कैसे हो सकती है, कैसे, इससे कितना मुश्किल हुआ आपके लिए इस चुनाव में जाके कैंपेन करना? डेफिनेटली दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो इस कैंपेन में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हम नहीं ला सकते हैं, और द सेकेंड थिंग्स बड़ी रैलियां नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमारे नेशनल लीडर्स आने के बाद भी, यानी अभी पहले तो 500 की सभा थी, अभी तो 1000 की सभा, और बाद में सब कुछ वर्चुअली हर जगह, कॉस्ट भी बढ़ गया इससे, यानी वर्चुअली हर जगह अरेंज करना, लोगों को वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मोबाइल वैन्स, ये वो सब कुछ, और लोगों को डायरेक्ट कम्युनिकेट होने के लिए सभा के माध्यम से अभी हाउस टू हाउस, डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर स्ट्रेस देना पड़ता है, इसलिए। और कोविड के प्रोटोकॉल नॉर्म्स संभालते हुए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कंटेस्टेंट टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। मैं ये देख रहा था कि जो आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये दावा कर रही हैं कि बराबरी से नहीं है, कि जैसे ईसी के जो नॉर्म्स हैं बीजेपी के ज़्यादा फेवरेबल है, इन द सेंस कि अगर आप कुछ करते हैं तो कोई कुछ कहता नहीं है। ऑपोजिशन वाले वो तो नेता एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम ईसी को लिखेंगे कि ये रूल्स इक्वली अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। आप, मुझे लगता है वो आप उनके दावे के ऊपर क्यों जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कितने कंप्लेंट्स आज तक फाइल किया है वो एक बार देखो। हमारे सभी लीडर के ऊपर आज तक कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं। मुझे लगता है अपोजिशन से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट्स हमारे बड़े नेता पे गोवा में लगे हुए हैं। उनके कहने के लिए कुछ भी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन उनका रोल अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब आप इलेक्शंस में कैंपेनिंग नहीं कर रहे होते, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, डॉक्टर साहब, तब क्या करते हो? आपके क्या
इंटरेस्ट और पास टाइम्स हैं, क्या अपनी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो साधारण तौर पे गोवा के लोग और जो देश की जनता है वो नहीं जानती? अभी तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। लेकिन इसके सिवाय आई एम स्पेंडिंग द टाइम विथ माय फैमिली, विथ माय डॉटर। द सेकंड थिंग, आई लव टू ट्रैवल। थर्ड थिंग इज रीडिंग। जब आप बाकी चीफ मिनिस्टर्स को देखते हो, कोई है जो आपको इंस्पायर करता है? कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं? आदित्यनाथ योगी जी। क्यों योगी आदित्यनाथ क्यों आपको इंस्पायर करते हैं? सो डेफिनेटली उनकी वर्किंग स्टाइल जो है, जो काम करने की उनकी पद्धति है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, यानी महाराज आदित्यनाथ योगी का काम बहुत ही प्रेरणादायी है। कैसे, क्या आप देखते हो जो जो आपको प्रेरणा देता है? उनके एक्चुअली जो स्पिरिट उनमें है काम करने की, उनकी जो स्टाइल है, सब बने सही में वो प्रेरणादायी है। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ। एकदम कैंपेनिंग के पीक में हम लोग एक तरीके से गोवा आए हैं, और किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, खासतौर से चीफ मिनिस्टर के लिए, ऐसे सेंसिटिव टाइम में वक्त निकाल के इस तरह के इंटरव्यू में आना मुश्किल रहता है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंडिया टुडे का इस मुझे लगता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने मुझे बुलाया, और गोवा के लोगों को या देश भर से लोगों को इस राउंड टेबल के माध्यम से मेरी पहचान लोगों से आपने करवाया, इसलिए इंडिया टुडे का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू।
politics is heating up. It's said that I was speaking to one of my journalist friend in Goa, and he said that Goa politics has become, especially during elections, it's a multi-starrer film where the Congress and the BJP are the leading men and the other parties are competing with each other to get them down. But there is one angle to the whole Goa politics, is the people who have changed their parties and have switched just before elections. That is going to be a major factor in this election as well as the Christian votes are also being talked about. So we have our special guests today to talk about why they changed their party and what is their agenda, how Goa politics is going to tackle the turncoats and the people who have changed their party just before the elections. I have with me Mr. Michael Lobo. He was Speaker of Goa Assembly. He was in BJP and shifted to Congress, and now he's a Congress candidate. I also have Mrs. Alina Saldana. She was with the BJP. She got elected in the by-poll, and just before election, she shifted to Aam Aadmi Party. Let me start with you, ma'am, first. What prompted you to leave BJP? It is said that the Christian MLAs are leaving BJP because the church is against the BJP, and that is the reason why the Christian MLAs are quitting BJP and joining some other parties. Is that the reason why you shifted to Aam Aadmi Party just few days before the elections? First and foremost, a very good evening to all. Now, I would like to make it very clear that no member of the church ever spoke to me with reference to the BJP. Now, I was with the BJP for 2 terms. Yes. And the first term, I can say, was good because I was able to do a lot of development. There were a lot of pro-people schemes, and people were happy. But somehow, towards the end of the first term and beginning of the second term, the projects that the government was bringing into the state, according to me, are totally anti-people and anti-Goa. Definitely destroying Goa and all that Goa is loved for. I'm talking about the 3 linear projects, okay? Especially, I thought that it was heartless on the part of the government to bring a project like the doubling of the South-Western Railway track. Now, we all know that the existing track is just about 14-15 meters away from the houses all along the route. And now, the second track, as told to me by the South-Western Railway management, would be 14 meters towards the houses. And I was totally flabbergasted to think that the government could ever think of such a project. And I requested the Honorable Chief Minister to come onto the tracks because I wanted him to see for himself what this project would do to the houses and to the lives of the people. What would happen to the development? Every state needs a development. You Yes. need the railways. Definitely. And you waited till 11th hour. If you had an issue, a lot of people say that you could have shifted before. This government is in place since it's last not lot of about time. shifting. I'm talking about the issue. Right. Now, the issue was such that, as I said, the second track is going to lend into the compounds of the houses. Not just one house, but hundreds of houses. Many of the houses being heritage houses. Now, for me, this is destruction. Not only destruction of the houses, but destruction of the lives of the people. And in no way can I term this as development. Right. This is destruction, because I think those at the helm of affairs have to first understand and find out how much can a state of the size of Goa carry. Right. Okay, so this was the issue. And then there were other projects, like, for example, the highway through the wildlife sanctuary. I was a forest minister. I know the Forest Conservation Act 1980 that is so stringent and does not allow anything to happen within the forest wildlife sanctuary. And here was the government trying to
construct a highway through the wildlife sanctuary wherein they would be digging underground, making, flyovers. I want to come to that, but you, as you said, you were minister in the BJP government, and these projects started much earlier. Even during Mr. Parrikar's time, these projects were in the pipeline. I would like to come to that, but before that, Michael, she spoke about distraction. You had a distraction in politics because you shifted from BJP to Congress. They were banking on you. And now the BJP thinks that, the chief minister, just a while back, while speaking to us, had said that for BJP, it's nation first. For Michael, it's his wife first. And that's why he shifted from BJP to Congress. I would say no. For me also, it's the nation first. And my wife is not in politics. Just yesterday, like they gave one ticket in Sattari Taluka to one lady who's just come in politics yesterday. My wife is in the panchayat for 3 terms. That is 15 years. It's more than the chief minister. Chief minister is in politics from 2012. My wife is in politics from 2007. So she's 1 term more than him. So she was supposed to contest independent. Not now. Long back. This is in 2012, 2017. It was Manohar Parrikar who stopped her from contesting in 2017. And for his word, she withdrew from the contest. It was independent she was contesting from Saligaon constituency. So she had withdrawn then. Right. So what CM or whoever talks about that wife first is not like that. She is in politics. So you say that if your wife would have been given ticket, you wouldn't have left BJP? No, we had decided to leave BJP long back. I was a minister then. After the demise of Parrikarji, a lot of things changed in Goa politics. There's no ethics, no principles. Whatever is there is bulldozed. What kind of ethics and principles you're talking about? Everything, like Manohar Parrikar's words, what Madam was just talking about, that we do not require double tracking in the state of Goa because there are only 2 trains coming. You just check the data. Yeah. 2 trains coming into Goa. Why they want a single line is to transport the coal. Madam failed to tell you that. Yeah. Means I was on the verge she of wanted the mining to tell. basically. Yes. Yeah. No, the coal which unloads on the Murmugaon Port Trust. Yeah. They want a dedicated line to shift the coal from Goa port up to Karnataka. Right. Now Karnataka has a port. Has 5 ports. And those people are not allowing them to transport the coal to the destination they want. They want to, Goa being a soft target, Goans are very soft. Now during the COVID times, the highest number of deaths were recorded in Mormugaon and Vasco. Right. It's about the coal inhalation. The trucks which are moving from there, Coal dust. all Right. dust of the coal. And people have suffered, people are suffering. And Parrikarji had said that we will not increase from 9,000 metric tons of coal. Means we will put a capping. That was the assurance given in the house. It was a house assurance. Dr. Pramod Sawant increased that coal capping from 9,000 to 12,000 metric tons. Now it is increased more than that. Now what we want to say is what coal is required in Karnataka can be unloaded in Karnataka itself. Should not be unloaded in Goa. Whatever is getting unloaded is okay because of the port trusts have to work. There are workers, whatever. 9,000 is fine. But cannot be more than that. But So it's not about the railway line. It's about the coal. Right. Now why I'm sorry, why it's the not just the coal, it is also the railway line. Yeah. Where are the people Why going it to is go? being They built? will not be able to reside in their homes. Why it is being built? We are going to render people homeless. And you cannot term that development. Are your respective parties are promising you now that the demands which you are raising, for which you left the BJP and have now joined 2 different parties, they will be pushing forward your demands and will not allow this railway line to happen, or the other demands what you have? Yes. Mr. Kejriwal has
made a very categorical statement that he will scrap the 3 linear projects if his government comes to power in the state of Then Goa. what is the need? Like, I just read today that Aam Aadmi Party asked its candidates to take an oath, right? An affidavit they have been asked to sign that they will not change the party. The Congress is taking their candidates to churches and the mandirs and temples No, it's and not asking about them the to... party. It was our suggestion to gain the confidence, the faith of the people. Like last time what happened, 17 candidates plus independents supported by Congress, plus the MGP, plus the Goa Forward. The only reason was 5 sitting chief ministers were there who wanted that chair. Chief minister's chair was wanted by 5 sitting MLA, means who had won this thing. So they were all waiting for 36 hours so that they would be declared. So in that bargain, we formed the government. I was there in the BJP. We formed the government. Right. Today everybody is out. Congress party remained with only one leader, that is Digambar Kamath. After that I joined, and these are all new faces. People say that you are also eyeing for the chief minister's position. See, That is one of the reason for you to join Congress? no, it is, I'm new in the party. Yeah. I will work for the party. It is with the party to decide. Party is not new to you. You have been in Congress before. Yeah, I've been in Congress before, but it is for the party to decide who will be the chief minister. But we are not going to be in fighting terms. Like, if I am not made CM, I would run away or something like that. Can you promise that there will not be defections after the election results are out? There won't be Yeah, any Goa has always seen defections, ma'am. Can As you far promise- as Congress is why concerned. a party like Aam Aadmi Party is asking you to sign an affidavit, asking you to go to the church and It was the asking you to take decision the of oath? all the candidates to go in the church, to go in the Precisely temple. because this has been happening. Right. Okay, we know what happened as far as the Congress candidates are concerned during the last election. Okay, I think 15 of them after Shifted. winning Yeah, shifted. shifted. 15 of Yeah. them. Okay, so what stops them from doing the same thing now? It almost looks like it's a daily habit to just shift and switch parties, and that is the reason to gain the confidence of the people and also to ensure that we, check our conscience and make sure that we stay faithful to the party on which ticket we win as candidates. No, but will this happen finally? Because 60% of, one of the studies says that 60% of the people who are contesting elections from, say, BJP or the Congress or Aam Aadmi Party, they are not from originally that party. They have come from some other parties and are contesting. Yes, and Only 23 MLAs are there right now in the Goa Assembly because most of them have left their parties, so they had to resign from their position. Yes. What kind of politics so Goa is I showing? would like to tell you why I left BJP. Yeah. Okay, you did not give me a chance Yeah. to complete my answer. Yeah. I left BJP because I felt BJP was destroying Goa. And if I am here today in politics, I am in place of late Matani Saldana, who was my husband. Right. Okay. Now, and he was a person who loved Goa, and he led several struggles to protect the environment of Goa. And the projects that the government was bringing into the state were totally destructive as far as the environment is concerned. And precisely for this reason, I felt that I could not continue with the party, and I left. What will happen post-poll? The Aam Aadmi Party, will it go with the Congress? Will it go with the BJP? Because if there is a hung assembly, will this happen that the Aam Aadmi Party may be able to go with the Congress than the BJP? Well, we have not discussed this issue because we expect to get the majority, because as I go from house to house, the response that I'm getting is so very positive. Right. Because people have realized that they have checked and tasted different parties, and they have seen how these parties have betrayed them. And AAP is a new entrant into the field who has done wonderful work in Delhi, and people want the same to be replicated in the state You of use Goa. the word yes. I would like to correct Madam Alina Saldana. She won 2017 election. It was the split in the vote of Aam Aadmi Party and the Congress. And she won by 300 odd votes. And that was the split, direct split. You check the record.
and check the record of entire Goa. Entire Goa. Congress got 17 numbers. They would have got 24 numbers. You see the number of candidates of Congress lost. Murmugaon by 74 votes. Madam on BJP won. I was also in BJP by 300 odd votes. This was a direct split. Now I would like to tell the people of Goa that Aam Aadmi parties come from Delhi. First they said we are party of principle, this, that, everything, whatever is agreed. And they have proved themselves in Delhi. Yeah. Okay. Everything and the they election said. results in Delhi have proved that people are happy with the Now there are two parties in Goa. Governance. One is from Bengal, one is from Delhi. They are trying to split the secular votes. Last time they didn't open an account. This time they want to give the numbers back again to BJP, which people of Goa have realized now. You know what people say? People of Goa have realized that they will back again go with the Congress party. Michael, you know what people say? That if the Congress wins cannot elections, be trusted, and that history will repeat seats itself. were won by Congress in last election, 2017. 15 of Congress MLAs shifted to other parties. Right, why? How are you going to keep Tell me the reason why. There is no reason. You have to when answer. You're elected No, I was with the BJP. Party's ticket, So you have to remain only with the reason I party. have clarified that we had 5 chief ministers on that roundtable conference, which was going, not conference, So this time there are no chief minister aspirants. To elect the Congress legislature party chief. Right. To bring that name, it took them 36 hours. Right. So this which is a job we BJP asked Madam, she was present. We did it in 2 minutes. Okay. 2 minutes. Okay. Before we wind up, lastly, I want to ask one question, because, you know, whenever anybody thinks about Goa politics, people think about betrayal. People shift from one party to other party. You think that the voters are their understanding has increased now from 2017. They will teach lessons to those who will be turncoats, who will shift the parties. I will answer this and first. the oath and affidavit, which has been signed by both of you, will be abided by. I would like to make a statement on my behalf. Yes. The people of my constituency have faith in me, because they know that if I have shifted, I have shifted from BJP to Aam Aadmi Party because I was not happy with the governance that was given by the party. It was destructive, both as far as the state is concerned. There will be no shifting henceforth. Definitely not. Michael? I'm very confident that people will send all those guys who shifted. Not you. All those guys who shifted. We completed our term. Yes, okay. See, I would say directly, Madam has completed her term. I have completed my term. When the code of conduct was announced, we resigned. Right. To go to the next party. We have gone to the next party. We did not like the way they are going on with the BJP, the way they were handling the party and the issues relating to the people of Goa, common issues. Absolutely. Because of that, we have shifted. I am shifted. Okay. I have gone to the Congress. She's gone to the Aam Aadmi Party. But I want to tell that all those guys who have shifted will be sent home. Okay. Yes. The people of my constituency know exactly why I left the BJP. And the people of my constituency are very sure and confident that I have joined the right party, the party that will give governance just as it is happening in Delhi. And the electoral results in Delhi have proved that the people of Delhi are happy with Aam Aadmi Party governance. Well, on that note, people are really watching this politics, because in Goa, it's very difficult to predict, even after the election results. On 14th of Feb, Goa is going to vote for those people. As Michael was saying, will they teach lessons to those who have changed their parties and are now standing on some other party ticket? Will they teach lessons to those who midway left those parties on their ticket, they won the elections? Or, as I always say, that, to predict Goa elections, first let's for the results. Even after the results, it will be very difficult to predict anything. But this time also, we'll have to keep watch on that. Thank you, Michael. Thank you, Madam Saldana, for joining us today. India Today Roundtable will continue. We have our special guest lined up after that, Ranjit Surjewala, and after that, Mr. Sanjay Raut as well. Stay tuned on India Today.
Behind me, we've got the Panjim Donapola beach right behind us. It's placid, it's calm, but anything which is true is that the political shifting sands of Goa are anything but unpredictable. So what happened in 2017, it seemed, when Goa went to election last, it seemed it was an out and out, going to be a Congress government. They had 17 seats in a 40-member assembly. They had won 17. BJP had won 13. But Sarkar bani BJP ki. Has Congress learned any lessons? Is baar kya karegi Congress? To take it from here, I want to call upon stage Mr. Randeep Singh Surjewala, General Secretary, the Indian National Congress, to come and answer all these questions that have come at the back of Congress's performance in 2017 and the run-up to these elections. Welcome, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप गोवा आए. Thank you, Mr. Surjewala. Sir, Mr. Surjewala, I want to begin, if you allow me, with a few questions which are now on the national stage. And we'll come to Goa as well. Yesterday, Rahul Gandhi spoke in Parliament, fiery speech on the floor of the House. The BJP, be it online, there's a privilege motion against Mr. Gandhi right now in Parliament, to grave offence on Rahul Gandhi using the term Union of Territories. They have called it against the ethos, the idea of India. Why is BJP scared of Mr. Rahul Gandhi? I would like to ask them. When you speak of 7 years of Modi government's rule, 3 words come to everybody's mind. Inequality, injustice, disparity. When Mr. Gandhi speaks about these, which, except for a few, very few leaders in the political arena are able to, when he speaks about a government that is, instead of 140 crore people, a government being run for 142 people who have made 30 lakh crore in last 2 years, when he speaks about grave injustice to the downtrodden and the poor, why is BJP scared? When he reminds the Prime Minister that we are a union of states, we are not an autocratic country to be ruled by a king sitting in Delhi at his whims. And because we are a union of states, so even a small state like Goa should have their say in centre's resources as also in their agenda of development. That's all that he said. And let him be sent to jail for it. We are all ready. You're ready that if he is sent to jail, because there is a privilege motion against him in Absolutely. Parliament. For that shows how scared Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi are of Mr. Rahul Gandhi. A sense of Gandhism, a sense of India is fearlessness. For speaking the truth, people have been hanged historically. For speaking the truth, Britishers sent Indian National Congress leaders to jail. For speaking the truth, Bhagat Singh was hanged. I don't think so. I think we are passing through another arena or another phase of India's post-liberation era where truth, justice, equality, constitution, India's ethos are under attack, and it's good to go to jail if they have to be restored. Randeep ji, you say he was speaking the truth. Another thing he's come under criticism, and I will ask you this question, is by linking the Prime Minister to a Shahenshah running an empire, an emperor running his kingdom. Now, a lot of people are criticizing that statement because it's come from a dynast himself. Was it a little rich by Congress to actually Rahul Gandhi saying what he did? Because खुद भी तो वो डिनेस्टी से ही आते हैं. अगर हम तानाशाह किंगडम की बात करें, एम्पायर की बात करें, बहुत कहते हैं तो गांधी एम्पायर भी है. अगर मोदी जी इस देश की एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें बतौर प्रधानमंत्री के तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लिए. अगर मोदी जी कहें कि अगर एक महिला अचार की शीशी लेकर खड़ी हो जाए तो मार्केटिंग बेटर होगी, वो भी ठीक है. अगर वो और उनके मंत्री देश समेत आदित्यनाथ जी के ये कहें कि अगर महिला को स्वतंत्रता चाहिए तो वो निर्वस्त्र होकर शी शुड वॉक अराउंड नेकेड, तो वो सही है क्योंकि ये उनकी मानसिकता है. पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री एक तानाशाह शहंशाह, मुझे लगता है उन्हें तानाशाह भी ऐड करना चाहिए था, एक तानाशाह शहंशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं. हम सब जानते हैं
कि मोहब्बत बिन तुगलक ने इस देश की करेंसी और राजधानी के साथ क्या किया था. टुडे इंडिया's प्राइम मिनिस्टर is behaving in the same fashion, and why should we not call a spade a spade? Chaliye Randeep ji, speaking the truth is well and good. Being fiery is well and good. The speech has also, many people say, is extremely fiery. But what many people say, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं कहती है, it has come from a lot of opposition leaders as well, is political consistency. Which they say Rahul Gandhi will come and make these grand speeches, उसके बाद गायब हो जाएंगे. ये सिर्फ बीजेपी नहीं कहती है, ये ममता बनर्जी कहती हैं, ये तो शरद पवार जी ने भी बोल रखा है. Please see the political journey over last 7 years of Mr. Rahul Gandhi. He has always said that there are two Indias being created by the Bharatiya Janata Party. This is a suit boot sarkar. And the entire Modi model of governance is based on crony capitalism. These are two consistent stands that he has taken. Whatever Mr. Gandhi said, believed in, has repeated it umpteen number of times, is now there for everybody to see. When 142 people in this country, their wealth goes up from 23 lakh 14,000 crore to 56 lakh 16,000 crore, a jump of 30 lakh crore, which is almost equivalent to the entire expenditure in a year of Government of India. Why should there be any inconsistency in that? What has been consistent of late is your former ally Mamta Banerjee trying to claim your space as, if I can use the word, the primary opposition in this country. She has made a huge statement yesterday. Some can call it foolhardy. Some can say it takes a lot of stomach to actually take that risk, where she says 2024 Mamta Banerjee will fight from Uttar Pradesh. Is the Congress intimidated? Why should anybody be intimidated? It is the political prerogative of Mamta ji or any other political party to fight any election anywhere. It's not as if we have lost allies. The maximum number of allies that anybody has lost is Prime Minister Modi. And these elections have also shown that the maximum number of leaders, there are always some desertions from all parties, that have happened is from Bharatiya Janata Party. We are not intimidated, but every political party needs to introspect and see. It's not a fight only for usurpation of power or gaining power. 2024 or 2022 is a fight to save what is the essence of this country. Are we going to be ruled by 2, 3, 4 business houses? Is this country going to be, every policy going to be decided by 2 dozen, 3 dozen, 4 dozen people? Is this country going to be finally a monopoly where no person can have dissent or an individual opinion? Or is this country going to able to retain the composite character that we have espoused for? We have inculcated it in the constitution and we have preserved it for 75 years. So it's India which is under attack from the BJP, and every political party finding political space must find it, but must realize that Congress is the center of that space, and if you try to demolish the center, you may cause a democratic earthquake. Well, the TNC believes otherwise, but that's a topic of another discussion. Let's leave 2024. Let's talk about elections now, but I will keep the same vein of the question I asked before. Jis tarike se dekho, whichever way one looks at it, it is a big statement to make, whether it is foolhardy, but it's a brave, politically a brave statement to say a regional leader to come and say, I will fight from Uttar Pradesh. Why can't that political stomach or that, that kind of political bravery be seen in your leaders? Till now, we don't know whether Priyanka Gandhi is fighting from Uttar Pradesh or not. Will she fight? Because the leadership is hers. We see her everywhere. It's her election in UP. लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? प्रियंका गांधी जी की ब्रेवरी इसी बात में है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति पिछले 3 साल से, जब से उन्हें महासचिव बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में लगाई. आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दूसरे दल महत्वपूर्ण हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि हमने 30 साल से उतना राजनीतिक धरातल हम नहीं पा पाए. पर यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर बात का विरोध और जमीनी आंदोलन अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया, प्रियंका गांधी ने किया. चाहे वो
महिलाओं के साथ अनाचार हो, चाहे वो किसानों को रौंदने वाली घटनाएं हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, दलितों, गरीबों, पिछड़ों के ऊपर हमले हों, चाहे वो किसानों के गन्ने के पैसे के लिए आंदोलन करने की बात हो, तो पश्चिम से लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश तक अगर एक पार्टी लगातार लड़ी अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, तो वो कांग्रेस लड़ी। और पार्टियां बहुत सारी जो अब हैं वो 6-8 महीने पहले ही बाहर आई हैं घर से, पर हम लगातार लड़े हैं और दिस इज ब्रेवरी। व्हाट इज ब्रेवरी देन? तो इस ब्रेवरी का ट्रू टेस्ट, बिकॉज आप जा रहे हैं मतदाता के पास, यू आर गोइंग टू द वोटर हियर, एक चुनाव लड़ना नहीं होगा। अगर आप देख लीजिए, एवरीवन इज बिटन द पॉलिटिकल बुलेट। यू हैव अखिलेश यादव, वो पहले कह रहे थे नहीं लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। यू हैव द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो अभी फिर लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी को नहीं लड़ना चाहिए, बस उस पर यही सवाल एक और करूंगी। प्रियंका गांधी जी विधायक का चुनाव लड़ेंगी या सांसद का चुनाव लड़ेंगी, ये पार्टी तय करेगी। मैं इस कार्यक्रम में नहीं बता सकता, पर यह जरूर है कि उन्होंने अपना पूरी राजनीतिक धरातल की तलाश उत्तर प्रदेश की भूमि से शुरू की और अपना पूरा जीवन का समय अब वो वहां देती हैं। मुझे लगता है चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना हमारे लिए कम से कम, क्योंकि हमारे लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है, वो और जरूरी है। और हम उस राजनीतिक धरातल की तलाश कर रहे हैं। द वेरी फैक्ट दैट वी आर कंटेस्टिंग ऑल सीट्स इन असेंबली दैट वी हैव नॉट डन फॉर अ फ्यू डेकेड्स shows our resolve to recover lost ground. And I think it's a important step she has taken. Please wait, and we are confident that we'll find that space back. For that space is not founded upon division of caste or religion. It is based on a new kind of politics for Uttar Pradesh centered around development, and that's why it's "मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ" is an important paradigm shift that we have done. Randeep ji, thank you for taking questions which are not of Goa. I will now move to Goa. And आप political space की बारे में बात कर रहे थे. You were talking about the political space. गोवा में तो थी ना. You had it in Goa. How will you now go to a voter? Because in 2017, you failed everyone who voted for you by not being able to form the government. First, let me thank you for the question, but it's being asked of a wrong person. It should be asked of Pramod Sawant and Narendra Modi ji, not of me. Bharatiya Janata Party, today I steal your mic, I steal your position, I steal your chair, I steal your character, and I should be blamed or you should be blamed. The thieves of democracy are sitting in power today. It's a strong statement. It was a broad daylight dacoity on democracy. Yes, I think I was hearing two people who came from BJP and are now in different parties. Congress has given a fresh start. Each one of our candidates is new. They are young, they are dedicated. Some are war heroes, some are doctors, some are lawyers, some are other professionals. They are dedicated to creation of a new, honest, transparent Goa. We are beginning a new brand of politics here. And that's what we have presented to the people. For Congress is the only party that Goa trusts. For Congress is the only party that is connected to the ethos, to the culture, and to the common interests of people of Goa. We are not outsiders who are here for election tourism that many other parties are. We have been here. We were here when Goa was carved out, when Goa was liberated, and we are here today and we'll be here tomorrow. So in Congress, people trust. Randeep ji, you've called it the theft of democracy. Some will say it's the nature of politics, new politics, which the Congress can't wrap its head around. But let's say it was the theft of democracy of what you're saying. Can't it happen again? What if it happens this time again? The reason is twofold. Number one, I don't agree that ये सब चलता है attitude. प्रजातंत्र में एमएलए सेब और केले की तरह बोली लगाकर सबसे ज्यादा पैसे वाला खरीद लेगा. Do Goans want that? No. Do Goans want that their vote should be put up for auction to the highest bidder instead of democratically electing their government? No. I am middle-aged and neither any young person nor people your and my age
nor people elder to us want that to happen. This is called a brutalization of constitution and democracy. And what we are doing now, we have given a new start. We could have taken these guys back. All of them were ready to come back, except for one or two places where we thought that they have made amends. Congress has not taken those defectors back. We said we put a stop to it. We will have younger Goans, we will have middle-aged Goans, we will have dedicated Goans. We will have Goans who believe in our policies, in our ideology, in ensuring that we are able to carve out a new Goa. That's why I said, we are the party with a difference. We are the party who wants to rebuild Goa. And that's why our candidates will not go away. We are confident. You're confident that your candidates will not go away. But Randeep ji, ये ऑफ लेट जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते में देखा है, मतलब इट्स अ लिटिल फनी ऑल्सो अगर आप देख लें कि लॉयल्टी ओथ दी जा रही है, जो भी कैंडिडेट आप चूज कर रहे हो, मंदिर में लेके जाया गया है, भगवान के सामने लॉयल्टी ओथ लेके जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं आप, तो मतलब अब भगवान के ऊपर है, अब भगवान ही डिफेक्टर्स बचाएगा कांग्रेस से। जी नहीं, भगवान तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हाउ कैन आई डिनाई गॉड? आई एम ए बिलीवर। Whether it is Hanuman ji or whether it is Bhagwan Shri Ram, Lord Krishna, Jesus Christ, Guru Gobind Singh, Guru Nanak, they are a reality as far as India is concerned. It runs in our ethos, in our blood. So when I say that we have started a system where people have taken a vow, that's for people of Goa. We have taken a vow to serve. We have taken a vow to stand by our ideology. We have taken a vow to stand by our conviction. And we have promised Goans, come what may, whatever may be the allurement of money and muscle power, ED or CBI of the Bharatiya Janata Party, we will stand firm, we will stand tall, and we will not waver, nor our candidates will waver, and we will give a Congress government to Goa. Your opposition right now in Goa, be it the TMC, be it the Aam Aadmi Party, we'll talk about the offers of alliance later. What they are telling the voters is that every vote for you, which is the Congress, is a vote for the Bharatiya Janata Party. Well, may I say, and I'm not wanting to sound harsh, Aam Aadmi Party's leader is an imposter. Mr. Arvind Kejriwal is an imposter. You take off his white cap, there will be the black RSS cap underneath it. आपने उनको छोटा मोदी भी बुलाया क्यों? क्योंकि वो छोटे मोदी हैं। तरीका, चरित्र, व्यवहार, सब कुछ देखिए। अगर वो छोटे मोदी नहीं हैं, तो मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से इंडिया टुडे आज तक पर पूछता हूं कि योगेंद्र यादव कहां हैं? वो तो सबसे बड़े थे उनकी पार्टी में। प्रशांत भूषण कहां हैं? कुमार विश्वास कहां हैं? और दर्जनों सैकड़ों साथी जो उनके साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम करते थे, वो कहां हैं? दिल्ली का लोकपाल कहां है? मैं तो दिल्ली में रहता हूं। 3 कमरे के फ्लैट का बिल दिल्ली के अंदर 40,000 रुपया आता है, 30 से 40,000 रुपया। यहां गोवा में कहते हैं कि बिजली मुफ्त है। भैया 100 यूनिट के बाद 101वां यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया और आगे 13 रुपया तक बिजली का बिल है। अरविंद केजरीवाल केवल गिमिक्स करते हैं। ऑल दैट ही इंडल्जेस इज इन गिमिक्री। व्हाट इज द प्लान फॉर रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी ऑफ गोवा? What is his plan for the youth of Goa? What is his plan to ensure there is ecological friendly mining for the 300,000 mining dependent people of Goa? What is his plan for Anganwadi workers whom he has been beating up in Delhi? What is his plan for teachers? What is his plan for taxi drivers? The plan is that he has no plan. He has some freebies that he pronounces everywhere, be it Uttarakhand, be it Punjab, be it Goa, and says, now vote for me. So he is actually an imposter who is here to support the BJP as his B team. रणदीप जी, आपने तो इतने सारे सवाल कर दिए केजरीवाल जी से। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। वक्त आने पे और अगर आंकड़े बैठे कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिले अगर आपकी सरकार बने गोवा में, तो क्या आप, जिनको आप छोटा मोदी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से अलायंस करेंगे गोवा में? मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। वी आर गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल ऑफ गोवा with over 2/3 majority. I know that some pollsters will question it, but we are confident of the same. Also, I want to say
from your stage, I want to say today to all political parties, and many will come to your stage. Please introspect. For you, is Goa bigger? Is country bigger? Or your spoiler alert is bigger? By playing a spoiler, you cannot decimate Goa's future for 5 years. If Congress is the only party which is center stage, we are not center stage in UP. I appreciate that, and I said anybody who will form government will be able to do so with our support. I am not a hypocrite. In Goa, we are center stage. To be able to try and displace Congress from that space is doing a huge disservice to Goans, to Goankars, and to people of Goa. And it's doing a huge disservice even to democracy. Randeep ji, chaliye, we'll talk about whether, so many political parties, because you already had the MGP, the Goa Forward Front, now you have the TMC, the Aam Aadmi Party. Have they muddied the political waters? Uske baare mein baat karenge, par I'll come back to the question. You say that you're confident of getting a full majority. What if you don't get? And of late, you're in charge, Mr. Chidambaram of this state, has actually indicated that Congress is open to an alliance with Aam Aadmi Party later on. As I said, and I appealed openly, be it our friends in the Trinamool Congress or other political parties, you named 4 or 5 parties, they have to see what do they stand for, gaining power or taking Goa forward. Congress stands for taking Goa forward. And in doing that, we will do all that is necessary. Well, aapne fir chaliye, all that is necessary, even if it is an alliance with the Aam Aadmi Party, if I can complete that. Well, I will not like that you should put, you are very, very competent journalist, and I am an ordinary farmer. Arey. But what I said is very, very clear. I have appealed to all the political parties other than the BJP that even now it's not too late. Come forward, support the Congress candidates. There will be space for others at a right time, at a right place. Randeep ji, chaliye, let's move on from the Aam Aadmi Party. You had another alliance offer earlier, which was from TMC. Was it ego that made you turn down the alliance, or was it understanding of the ground situation, which right now seems to suggest that the TMC's current standing could be bleak? Which one was it that you turned down that alliance? Well, Mamta ji is a seasoned leader, and she has come from the Congress family. Mrs. Sonia Gandhi, Rahul ji have always shared a special relationship with her. I will not compare her with other political parties because she comes from a pedigree. She has a right to contest separately. There was a honorable consultant who made very intemperate statements in Goa. We never reacted because we believe that in politics, you have to act mature, remain mature, and act in the interest of people. What will happen post-elections? I'm somebody who can't predict it. I wish I could. Maybe one day somebody will be able to predict future, but I can't predict future. I'm very confident that we will not need anybody's support. But yes, every party has space, but they should realize that by attempting to gain power momentarily or attempting to gain some political space which may not even make them a relevant player, they may not be ultimately eclipsing the future of Goa, giving space to dacoits of democracy like the BJP. Randeep ji, do you think the TMC came into Goa 4 months before elections, because that is what the perception was, to primarily displace the Congress? They had come off what happened in Meghalaya, where overnight they turned the principal opposition because a huge number of your men defected to the TMC. They had that as an example. Goa seemed, मतलब उसी के type का के हो जाएगा लगता है जो मेघालय में हुआ गोवा में. Do you think they came to occupy your space here? That's a question that should be asked of them, but I like to quote Mahatma Gandhi, an eye for an eye make both men blind. मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का स्पेस कोई गोवा में ले सकता है, because Congress has a historical, cultural connect with ordinary Goans. 95%, 96% of Goans have a connect with
historical connect with the Congress party. It is their party. Congress in Goa is Goans party, bereft of which religion or caste they come from. For that's a trust that takes 30, 40, 50 years to build. Since Goa was liberated till today, we have had ups and downs, but we are always here. And we have always stood for Goan ethos. I think that's the intrinsic difference between us and TMC. We are not here for electoral tourism. We are here for the long haul. Do you think the TMC and Mamata Banerjee could have paid the price of an expansionist idea of an advisor, Prashant Kishore? Well, now you are asking me to comment upon a former ally with whom दोनों ही थे आपके तो दोनों थे तो मेरा केवल ये कहना है कि उनकी नीति क्या है, सोच क्या है, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं। इसका निर्णय वो स्वयं करेंगे। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस जो है वो गोवा के दिल में है, आत्मा में है। हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखें, ये उनको मुबारक। रणदीप जी, प्रशांत किशोर आपके साथ काम करा हुआ है, उन्होंने यहीं पर थे, मतलब हमारे मंच पर नहीं थे, पर उन्होंने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि देखिए बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ और वो बातचीत बिल्कुल एंड लेवल तक आ गई थी, 5% का था और वो बातचीत टूट गई उनको पार्टी में लेने के लिए। पर वो ये भी कह रहे हैं कि वो अभी भी उनके हिसाब से दरवाजे खुले हैं कि अगर कांग्रेस उनको अपनी पार्टी में लेना चाहे तो कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं या अभी भी प्रशांत किशोर के साथ कुछ हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर कांग्रेस में आना चाहते थे। प्रशांत किशोर ने पहले भी कांग्रेस के साथ काम किया है कंसल्टेंट के तौर पर। अगर वो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर आना चाहते हैं तो कांग्रेस का एक तरीका है। हमारे यहाँ अगर प्रदेश में वो किसी में काम करना चाहें तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहें, वहाँ काम करना चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व है। मुझे लगता है कि अगर उनकी कोई इच्छा है तो वो जाकर सीधी बात कर लें। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे थ्रू या इंडिया टुडे के मंच से ये बात करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई राजनीतिक दल और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने तो कभी किसी के लिए अपने दरवाजे बंद किए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए होगा। हमें ये लगता है कि इस देश में भिन्न भिन्न विचारधाराएं वही इस देश की खूबसूरती हैं। तो इसलिए कौन कहां जाना चाहता है उसके मन की मंशा मुझे नहीं मालूम, पर हमारा एक सिस्टम, तरीका, प्रणाली है। जो भी आना चाहे उसके थ्रू वार्तालाप कर ले। कोई जड़ता नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो दरवाजे खुले नाम रखेंगे। बस लास्ट 2 सवाल करूंगी रणदीप जी आपसे। सबसे बड़ा लेसन 2017 का कांग्रेस के लिए क्या है जो गोवा में हुआ? प्रजातंत्र मजबूत होगा तो देश और प्रदेश चलेगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई पीपल हु इन वर्स्ट ऑफ द टाइम्स will stand by their conviction. Conviction and character, I think these are the 2 words I've understood and the party has understood. Conviction and character are 2 things that you should look for in a man or a woman when you give them leadership roles. Will the Congress do anything to form government and protect it? Like, because you're talking to the voters right now. Will you go all way, Sam, Dam, Dand, Bhed to make your government in Goa? Because कहते थे आप लोग ने मे भी देर कर दी 2017 में, पहले ही आप अनाउंस कर देते तो आपकी सरकार थी। To Goans, I will like to say on this stage of India Today Aaj Tak that we are here to provide you a meaningful change. A change which is not founded upon on the weight of corrupt coins that Bharatiya Janata Party has used, but a change which is founded upon character and conviction and principles that we stand for and the trust we have built with Goans over last 3-4 decades. रणदीप जी, out of 40 आपका नंबर क्या है? देखिए, मैं अगर वो जो ये पोलस्टर होता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे इंडिया टुडे मुझे बहुत सारा पैसा देती एक पोल देने के लिए, पर मुझे लगता है कि हम 2/3 बहुमत से पावर में आएंगे। 2/3? I will not place a number. I can tell you that we will have more than a comfortable majority. लिख के देंगे?
आप कहेंगी तो मैं लिखकर भी दे सकता दे हूँ। दीजिए। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। नहीं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। लिख के दीजिए। मैं आपको बिल्कुल लिख कर दे ये दूंगा। लीजिए, छोटी सी पेंसिल है पर लिख दीजिए। नहीं, पेन मेरे पास पेन है, आप आपके चिंता पास। मत चलिए। कीजिए। श्योर। That Congress जो लिख रहे हैं, I'll just tell our viewers that the Congress is going to come in power in Goa with 2/3 majority. Here you are. इन्होंने साइन भी कर दिया है। थैंक यू रणदीप जी। वेरी फ्यू politicians put their money where their mouth is, but I appreciate it. Thank you for taking all our questions. Thank so you. this is it, and 14th is when the state of Goa will vote, and 10th March, sir, do join me on Thank India you, Today. and thank you to India Today Aaj Tak, and thank you for Goans for believing in us. Sir, thank you. Thank you for coming. It's a pleasure. Thank you, sir. हमने देखा कि अलग अलग पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका रखी है। हमारे अगले गेस्ट भी है। इस बार गोवा की पूरी लड़ाई जो है मल्टी कॉर्नर फाइट उसको कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे दावेदार आ गए हैं। ईस्ट कोस्ट से टीएमसी भी आ गई है, एक गोवा के नेबरिंग राज्य महाराष्ट्र से शिवसेना भी इसमें शामिल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसमें शामिल है और कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति गोवा में रेप्लिकेट हो सकती है क्या। मेरे साथ अब संजय राउत जुड़ने वाले हैं, शिवसेना के सांसद। मैं उनको आमंत्रित करता हूं इंडिया टुडे राउंड टेबल के स्टेज पर। कई सारे सवाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कहकर गए हैं उसके कुछ जवाब भी हम संजय राउत से लेना चाहेंगे कि मुंबई में कहावत है, आपने गाना सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय जी आप माइक उठाइए। उठाया। गोवा में कई लोग पूछते हैं कि गोवा के अंगने में महाराष्ट्र का क्या काम है। गोवा के अंगने में सिर्फ महाराष्ट्र का ही काम हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवा के फाउंडेशन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रोल है। गोवा की जो ओरिजिनल पार्टी है एमजीपी, उसका पूरा नाम क्या है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो बहुत साल से गोवा में राज कर रही थी, आज भी है। तो उसमें ही आपको उत्तर मिल गया ना कि गोवा, महाराष्ट्र में गोवा का क्या काम है। गोवा के लिए महाराष्ट्र से जितने लोग शहीद हुए हैं वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा गोवा और महाराष्ट्र का क्या रिलेशन है। तो चलिए मैं सवाल थोड़ा सा घुमाता हूं। फिर गोवा में शिवसेना का क्या काम है। आपने 2017 से शुरुआत की। 2017 में आपने आरएसएस के जो गोवा के हेड थे उन्होंने गोवा सुरक्षा मंच बनाया था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जिसका आपने जिक्र किया वो भी आपकी सहयोगी थी उसमें, और शिवसेना और वो दोनों ने मिलकर यहां पर एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। शिवसेना का तो डिपॉजिट जब्त हो गया। आप एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि शिवसेना का क्या काम है गोवा में। देखिए, शिवसेना गोवा में आज नहीं काम कर रहे। ठीक है, चुनाव में हमें उतना सक्सेस नहीं मिला, ये सही बात है, लेकिन चुनाव तो हम पहले भी लड़े हैं। बाला साहब ठाकरे साहब भी यहाँ प्रचार को आए थे बहुत बार। एमजीपी के साथ भी हमारा अलायंस हुआ था उस वक्त, लेकिन हमारे खाते में अलायंस में 2 या 3 सीटें आती थी हमेशा, और हमको ऐसी सीटें मिलती थी जहां शिवसेना का कोई वजूद नहीं, काम नहीं। आपने 2017 का जिक्र किया,
गोवा सुरक्षा मंच और एमजीपी के अलायंस में हमें 2 या 3 सीटें मिली। हम जो सीट मांगते थे, मापसा, पेडने, मई, वो हमें नहीं मिली। अलायंस में किसी और जगह पे हमें दे दिया। हमने चुनाव लड़ा जहां हमारा कोई काम नहीं था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम 12 सीट पर हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। उसमें से पणजी की जो सीट है, हमारे कैंडिडेट ने उत्पल पर्रिकर के लिए विड्रॉ किया है। 11 सीट पर हम लड़ेंगे। अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप वोट कहां से लाएंगे? बीजेपी कहती है कि आपका तो सरपंच भी नहीं है। बीजेपी के कहां आप सीधा विधायक बनाने बीजेपी के पास कहां वोट है? आप मुझे बताइए। आपको लगता है बीजेपी के पास वोट है? ये तो सब डकैती, चोरी मारी करके वोट आते हैं उनके पास कहां है लोग? कभी उसको पकड़ो, कभी उसको खरीद लो, कभी उसको खींच कर लेके आओ। खुद के कहां है? किसी के पास है? कांग्रेस अगर छोड़ दे यहां तो किसी के पास वोट नहीं है। किसी के पास वोट नहीं। एक जमाने में एमजीपी के पास वोट थे, आज उनके पास भी वोट नहीं है। आज कांग्रेस के पास वोट है। बाकी चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कौन किसके साथ है, वोटर्स किसके साथ है। यहां एमएलए को जो खरीद सकेगा वो लगता है वोट मेरे पास है। ये नहीं है। हम लोग ये नहीं मानते। आज चाहे यहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना आम आदमी की पार्टी है। अब हमारे कैंडिडेट देखिए, जैसे और पार्टी में माफियाज, ये माफिया, वो माफिया, लैंड माफिया। हमारे यहाँ हमने लोगों से उठाकर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। यही लोग गोवा का चेहरा बदलेंगे राजनीति का। लोग ये कहते हैं कि जिनका कोई नहीं हुआ उनकी शिवसेना हो गई। किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, किसी को बीजेपी से। आप मुझे बताइए ऐसे कौन लोग हमारे पास है? सभी शिवसेना के लोग हैं जो सालों साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास भी लोग आए थे कि मुझे नहीं मिल रहा है टिकट कांग्रेस से, या हमें ले लो। उनका क्या भरोसा? आएंगे और कल चले जाएंगे। जो गोवा की राजनीति का एक चरित्र बन गया है, ये नहीं होगा। अभी हमारे 2 विधायक भी अगर विधानसभा में जाएंगे तो गोवा के विधानसभा और गोवा की राजनीति का पूरा कैरेक्टर बदल देंगे हम लोग। अब देखिए, दो ही काफी है। आपने कोशिश बहुत की कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो जाए। कांग्रेस के पास आपने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हमारी है, महाराष्ट्र में यहां भी हम अलायंस बना लेते हैं। एनसीपी को 1 सीट दे दीजिए, हमें 3 सीट दे दीजिए। कांग्रेस ने आपको साथ नहीं लिया। अभी कांग्रेस के नेता यहां पर कह रहे थे कि ये वोट कटवा है, ये तो वोट काटने के लिए लोग आए हुए हैं। उन्होंने टीएमसी को भी साथ में नहीं लिया। आपने बहुत कोशिश की। आपने कहा कि कांग्रेस अगर साथ में लेकर चलती तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बटता नहीं। आपने कांग्रेस पर दोष डालने की कोशिश। ये विचार कांग्रेस ने करना चाहिए था। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो कभी छुपा नहीं, प्रखर हिंदुत्ववादी है। अगर राहुल गांधी जी से मेरी बात तो हमेशा होती है, तो राहुल जी के पास मैंने जरूर प्रस्ताव रखा था कि शिवसेना को साथ रखिए। एक हिंदुत्ववादी पार्टी आपके साथ रहेगी तो आपको जरूर देश में फायदा होगा। कि आपका जो एक चेहरा बन गया है कि बहुत ही आप ज्यादा सेक्युलर है, मुसलमानों की पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, हमें साथ रखने से आपको मदद होगी। राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि कन्विंस हो गए हैं। लेकिन गोवा में ऐसा हुआ हमारा कि हम थोड़े यहाँ बातचीत थोड़ी सी लेट शुरू हो गई। तब तक कुछ सीटों पर कांग्रेस के यहाँ के लोकल जो उनका यूनिट है, सीटों का बंटवारा हुआ था। हमारे यहाँ बातचीत हो गई उनके नेताओं से, जरूर केंद्रीय नेता भी उसमें थे। और मैं आपको बताता हूँ, हमको 3 सीट देने की निर्णय हो गया था, लेकिन वापस वही हो गया। 2 सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। 2 सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं दे रहे हैं, और किसी और सीट पर हम लड़ेंगे तो वापस वही खेल होगा। 3 सीट पर लड़ेंगे, पार्टी नहीं बढ़ेगी, हम चुन कर नहीं आएंगे। तो बोले ठीक है, यारी दोस्ती रहेगी, फिर मिलेंगे चुनाव के बाद। तो आप यारी दोस्ती पे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी उनका वोट काटने के लिए खड़ी है, उसका फायदा बीजेपी को होगा। आप भी वहां पर खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपको अलायंस करना था, लेकिन आपको ऐसी सीट दे रहे थे कि जहां पर जीतने का कोई चांस नहीं है। देखिए, हर पार्टी की एक मजबूरी होती है। गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। बहुत साल उनके मुख्यमंत्री रहे, 17 एमएलए उनके विधायक उनके चुनकर आए थे। आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है अगर आप
सर्वे कर ले या लोगों से बात करे तो मुझे लगता है आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है। तो अगर उनकी मजबूरी है वो नहीं कर सकते, एक बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है कि हमारे बैक स्टैबिंग तो नहीं है ना, खुलकर बात हो गई है, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बैक स्टैबिंग मतलब? बैक स्टैबिंग तो नहीं है, पीठ में कोई खंजीर तो नहीं खुपस रहा है ना, बात हो गई, ठीक है आप लड़ो हम लड़ेंगे, बाद में देखेंगे। नहीं आप किसके पर कटाक्ष कर रहे हैं? बोल रहे राजनीति में ये होता है, एक बात होती है और बाद में बात लोग पलट जाते हैं। यहाँ ये बात नहीं हुई, ये आमने सामने बात हो गई हमारी। उद्धव जी ने भी हमें अलाउ किया था, पार्टी चीफ ने, क्या बात करिए, अगर कोई अलायंस होता है तो हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो हम दुश्मन तो नहीं, हम महाराष्ट्र में एक साथ काम करते हैं, देश में एक साथ काम करते हैं, चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए आपने मनोहर पर्रिकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2017 में, तो क्या हो गया? अभी आप उन्हीं के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कैंडिडेट वापस लिए गए, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आपको मिलके भी आए, देखिए, और अभी आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने कैसे मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया, ये गलत किया। बीजेपी किसको टिकट दे वो बीजेपी का फैसला है, आप उनमें जो झगड़ा है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपने आप को एक बहुत ही नीतिमान चरित्रवान लोगों की पार्टी मानती है, होनी भी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, हाँ, बड़े बड़े नाम उनके पार्टी के साथ जुड़े हैं, नानाजी देशमुख जैसे लोग उस पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आजम खान, मुख्तार अंसारी और भी नाम लेते कि ऐसे लोग यहाँ नहीं है। लेकिन गोवा में, पणजी में किसको आपने उम्मीदवार बनाया है? वहां एक कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ ढीला कैरेक्टर, वहां कैरेक्टर। गोवा में आपने किसको दिया है? उत्पल पर्रिकर की जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वो लड़ाई है गोवा का पॉलिटिकल कैरेक्टर सुधारने की लड़ाई है, गोवा का राजनीति शुद्ध करने की उनकी लड़ाई है। मनोहर पर्रिकर ने लड़ाई गोवा में शुरू की थी, उनके साथ हमारे जरूर मतभेद थे, लेकिन अगर उनका बेटा गोवा को शुद्ध करने के लिए, राजनीति शुद्ध करने के लिए कुछ कदम उठाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है। बट आपने टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ किसी को, हमने किसी को टिकट देने की कोशिश नहीं की, ये गलत है। हमने इतना ही कहा था अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो हम हमारा उम्मीदवार पीछे लेंगे, यही हमने कहा था और हमने ले लिया। हमने शैलेंद्र वेलिंगकर को वहां उम्मीदवार बनाया था, उसने पर्चा भरा था, लेकिन जब उत्पल पर्रिकर का पर्चा वैध हो गया, क्वालिफाइड हो गया, तब हमने पीछे ले लिया। नहीं, कुल मिलाकर मुझे यह दिख रहा है कि आपकी राजनीति इस बात पर चल रही है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी को चोट पहुंचे, नहीं किसी न किसी तरीके से बीजेपी को चोट पहुंचे, फिर उत्पल पर्रिकर को सपोर्ट करें आप। बीजेपी आप नहीं चाहते कि राजनीति में अच्छे लोग आए? आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर बलात्कार के, माफियागिरी के और भी गंदे गंदे जो आरोप है, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचे? आप भी चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। ये तो लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। जो मोदी जी भी चाहते थे कभी यही कि मैं देश की सूरत बदल दूंगा राजनीति की। तो ये अगर पणजी गोवा जैसे एक छोटे राज्य में एक छोटा लड़का इस लड़ाई में उतरा है, कभी केजरीवाल ये लड़ाई लड़ते थे ना, तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं उनसे, तो हम देखते हैं ये आशा की किरण अगर लेकर उत्पल पर्रिकर पणजी में लड़ता है तो उस किरण की आप मशाल बना देंगे गोवा। लेकिन संजय जी, कल अगर उत्पल पर्रिकर जीत गए, उत्पल पर्रिकर कई बार ये लोगों से ये कह देते हैं कि फाइनली अगर बीजेपी सरकार बनाने आ जाएगी तो उत्पल पर्रिकर बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अगर जीत गए, जो बीजेपी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर थे, देखिए मैं दोनों पर बीजेपी विश्वास रखता हूं। पार्सेकर जी का बयान मैंने सुना है और देखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। उत्पल जी का भी यही बात जब होती है तो यही बात वो करते हैं, पहले जितने दो उनको, बाद में देख लेंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है गोवा में? आप क्या लोगों को क्या कह रहे हैं? पिछली बार की आपकी कैंपेन मुझे याद है, आपने गोवंश हत्याबंदी पर गोवा में नहीं है उसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। गोवा की कोई कल्चर को चोट पहुंच रही है, हिंदू कल्चर को चोट पहुंच रही है, इसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। अब आपका क्या ये रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गोवा के लोगों को कह क्या रहे हैं आखिर? गोवा के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा बीजेपी को वोट मत।
हमने कहा कि शिवसेना को वोट दीजिए। विधानसभा में अगर शिवसेना के 2 भी विधायक हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बार बार पार्टी बदलने की। जैसे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे कहते थे ना, यही हमारी पार्टी है। अगर किसी ने एक पार्टी पर चुनाव लड़ा है और 24 घंटे में पार्टी बदलता है ना, तो हम रास्ते पे उसको पकड़ लेंगे। भाई आपने लोगों से धोखा किया है, ऐसी धोखेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ शिवसेना अब आई है और गोवा की जनता को धोखा देने वाला जो है वो अब यहाँ राजनीति में नहीं रहेगा। क्या आपने कोशिश की थी कि अब देखिए गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बनता जा रहा है, ईस्ट कोस्ट से मतलब पूर्व से तृणमूल कांग्रेस वेस्ट कोस्ट पर आकर चुनाव लड़ रही है। हमने देखा अभी कि गोवा में अगर कैंपेन दिखता है तो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से गोवा में आके अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रही है। कम से कम वो चर्चा में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि शिवसेना को बस इतना करना है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उनका झगड़ा है तो वो गोवा में कंटिन्यू करो, गोवा में उनको चोट पहुंचाओ, यूपी में बीजेपी को चोट पहुंचाओ, बिहार में जाके उनको चोट पहुंचाओ। पूरा आपका जो कंसंट्रेशन है वो बीजेपी को नीचे करने के लिए लगा हुआ है। बहुत गलत है। आप ये जो बोलते हैं कि ईस्ट कोस्ट से एक पार्टी आई गोवा में, दिल्ली से केजरीवाल जी आए हैं, आने दो। चर्चा है कि शिवसेना की चर्चा नहीं है, उनकी भी चर्चा है। उत्पल पर्रिकर के साथ जब आपने हमारा नाम जोड़ा है, चर्चा नहीं होगी। फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? चर्चा है पार्टी की गोवा में, इसलिए तो आपने हमें चर्चा के लिए यहाँ बुलाया है। हमारी भी चर्चा है। आप देखिए, मैं आपको अभी 10 चुनाव क्षेत्र के नाम देता हूँ, आप जाकर देखिए वहाँ क्या काम चल रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से काम चलता है पार्टी का, इसी तरह से आज 11 चुनाव क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। एक और चर्चा बहुत हो रही थी कि चुनाव के बाद क्या होगा, नतीजे आने के बाद क्या होगा। अगर हंग असेंबली आती है और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपके 2 भी जीत कर आएंगे तब भी काफी बदलाव हो जाएगा, तो आपके सपोज अगर 1-2 विधायक यहां पर जीत जाते हैं तो क्या आप क्या करेंगे? आप बीजेपी के साथ नामुमकिन है जाना, कांग्रेस के साथ जाना? हम अपोजिशन में बैठेंगे। हम अपोजिशन में बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्या अपोजिशन में बैठना गुनाह है क्या? राजनीति सरकार बनाने के लिए अगर कल बीजेपी कहे कि भाई महाराष्ट्र में हमारी यहाँ पर हम साथ में आते हैं, हमारी कमिटमेंट है लोगों से। जिस विचारधारा पर हमने चुनाव लड़ा है वो कायम रहेंगे हम। अगर कांग्रेस के साथ या कोई महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होता है यहाँ तो जरूर हम विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ सत्ता में जाना है, सरकार में जाना है, इसलिए लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी से क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पर तो आप अलग, महाराष्ट्र का झगड़ा तो यहाँ पर नहीं है। बात झगड़े की नहीं है। फिर झगड़ा किसी के साथ? राजनीति में देखिए इस प्रकार के झगड़े नहीं चलते। लेकिन महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन है, वही गठबंधन पूरे देश में होगा और उसी गठबंधन की शिवसेना हमेशा हिस्सा रहेगी। आज एक ट्वीट मैंने आपका देखा, आज सुबह सुबह आपका ट्वीट आया था। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और आपने उसमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को टैग किया है। उसमें आपका ट्वीट यह है कि पहले लालच दिया, ऑफर्स दिए, फिर डराया धमकाया गया, तब भी झुका नहीं तो परिवार को धमकाया गया। हमने कहा छोड़ दो, नजरअंदाज करो, इन्हें जाने दो। तो अब सेंट्रल एजेंसी को हमारे पीछे लगा दिया गया है। 2024 तक चलेगा भी, पर हम नहीं झुकेंगे। क्या कहना चाहते हो? और ममता बनर्जी को आपने अटैक किया है, क्योंकि आपने ममता बनर्जी पर अटैक किया था हाल ही में मुंबई में कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश अटैक नहीं किया था। ये हमारी भूमिका है कि कांग्रेस को कमजोर करके इस देश में कोई गठबंधन या कोई फ्रंट नहीं बन सकता, ये हमने कहा। ये अटैक कहाँ है? ममता जी भी यही चाहेगी। अगर हमको 2024 में एक लंबी लड़ाई लड़नी है मजबूती से, तो आप कांग्रेस को कैसे अलग कर सकते हो? नहीं, सभी को साथ लेकर जाना है। और ममता जी एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करती है स्टेट के, और भी राज्यों में उनका फैलाव हो रहा है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस जरूर कुछ राज्यों में कमजोर है, उसका मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। और कांग्रेस को बाजू में रखकर हम कोई फ्रंट नहीं बना सकते, यही हमने कहा। ममता जी को भी यही मान्यता है, ये विचार। नहीं तो ये ट्वीट किसके बारे में था? क्या नहीं, महाराष्ट्र में जो चल रहा है आजकल, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के नेता हो, मंत्री हो, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे,
जो बीजेपी की बात नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगा देते हैं। आपके एक नजदीकी है, उनको नहीं, नजदीक नहीं, हमारे घर तक पहुंच गए ना। मैंने 2 दिन पहले सिर्फ बीजेपी के ऊपर एक कमेंट किया था, बड़े नेताओं के ऊपर। 4 घंटे में हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स के पास ईडी वाले चले गए और जो केस नहीं है उसको निकाल कर खंगालना शुरू करने दो। हम नहीं डरते, जो भी करना है, हमें जेल में डालना है जेल में डाल दो। 2024 तक ये चलेगा, मैं बोलता हूं। 2024 के बाद असली खेल शुरू होगा। किस खेल की बात कर रहे हैं? क्या गोवा से ये खेल शुरू होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश से होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या होता है, चुनाव के नतीजे आने दो, फिर पता चलेगा 2024 में क्या हो रहा है। जब मैं बोलता हूं ना तो हमें भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। डरने वाले से हम नहीं है। आप चाहे हमें गोली मारो, कुछ भी करो, हम नहीं डरेंगे। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो एक्सपेरिमेंट है वो गोवा में रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? जरूर, डेफिनेटली होना भी चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, गोवा एक छोटा राज्य है, जिसको 20 या 22 सीट मिलता है उसका बहुमत बन जाता है। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रहेगी। लोगों ने, सामने वाले के लोगों ने खरीद लिया लोगों को। कांग्रेस की भी थोड़ी गलती रही उसमें, मुझे लगता है बहुत देर कर दी सरकार बनाने में। एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के जो विधायक थे वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, मुझे मालूम है। महाराष्ट्र में आपने गलती नहीं की? हम कभी नहीं गलती करेंगे। हम महाराष्ट्र में कभी गलती करेंगे नहीं और आने वाले देश की राजनीति का हिस्सा बनकर हम रहेंगे और हम कभी गलती नहीं करेंगे निर्णय लेने में। आपने हाल ही में कहा कि अब बीजेपी के साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए, अभी दोबारा वो रिश्ते कभी बन नहीं सकते। जी हाँ। क्या ये हम पकड़ के चले कि अब किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ फिर किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र की अगर खास करके हम बात करें, तो किसी भी तरीके से आपका कोई गठबंधन कभी नहीं होगा? कभी आप उनके साथ नहीं जाएंगे? ये बात तो हमारे पार्टी चीफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी कही है। ये संजय राउत की बात नहीं है ना, पार्टी चीफ ने ये जाहिर किया है। तो यही है, हमारे पार्टी में जो शिवसेना प्रमुख की जो बात आती है वही हम लेकर आगे जाते हैं। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है तो उसमें अब पीछे मुड़ने की या पीछे हटने की बात ही नहीं है। हम लड़ेंगे ना। आपने ममता बनर्जी को क्यों टैग किया था? मेरा एक सवाल, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी सरकार भी यही संकट से गुजर रही है। जब भी ममता जी मुझे मिलती है, जब भी तृणमूल के नेता हमें मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें ये सीबीआई ईडी ने परेशान करके रखा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनसे लड़ेंगे। वो भी कहते हैं कि आपने भी पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपोनेंट, जो आपके अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। किसको किया? अभी नीतीश राणे के साथ जो हुआ, क्या हुआ? उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनको गलत केस में फंसा के तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना। एजेंसी का इस्तेमाल, जिसके हाथ में एजेंसी, वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, न्यायालय तो हमारे हाथ में नहीं है ना, जुडिशरी के तो हम मालिक नहीं है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र के पुलिस की आप बात करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको सरेंडर होना चाहिए। कानून है इस देश में, अंधा कानून नहीं है। चाहे दिल्ली वालों को लगता होगा वो कानून के मालिक है, लेकिन महाराष्ट्र में वो बात नहीं है। महाराष्ट्र में कानून का ही राज है। ठीक है, गोवा पर आते हैं। सूरज ढल रहा है, तो गोवा में किसका सूरज उगेगा, किसका ढलेगा, आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन यही है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन सरकार तो वो बना ही लेते हैं। पिछली बार भी उनको बहुमत नहीं मिला था। देखिए, वो तो अमेरिका में भी सरकार बनाएंगे, वो तो कहां भी सरकार बना सकते हैं। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी उनकी सरकार बनाएंगे। बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे धनिक पार्टी है। 4,000-5,000 करोड़ से भी ज्यादा धन उनके खाते में है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, तो उनको सरकार बनाने दो।
खरीदी और डकैती से सरकार बनती है तो उसे सरकार नहीं कहते, उसे कहते हैं कि एक माफिया की गैंग चलाना, जो अब तक गोवा में चल रहा है। नहीं तो फिर कैसे आप अपना लक्ष्य कैसे पार कर पाओगे? क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार, पिछली बार तो 13 सीट पर उन्होंने सरकार बना ली थी, अपोजिशन पार्टीज कुछ कर ही नहीं पाई। अपोजिशन पार्टीज के पास बहुमत होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाए। गलती से लोग सीख जाते हैं, अब वो गलती नहीं होगी। अगर गलती होती है तो जनता माफ नहीं करेगी आपको कभी। अब नहीं, 2022 में वो गलती नहीं होगी। गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री अब नहीं रहेगा। ये आपका प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए ठीक है। और शिवसेना उस वक्त क्या करेगी वो भी हमें देखना होगा, हालांकि उसके लिए आपके उम्मीदवार जीतने बहुत जरूरी है। 40 सीट वाली गोवा है और इस बार हर पार्टी अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रही है। कम से कम 4 पार्टीज सामने आकर लड़ रही है। शिवसेना एनसीपी के साथ यहां पर लड़ने की कोशिश कर रही है। अभी अभी संजय राउत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, ये बात आपने साफ कह दी है। और गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, यह भी दावा संजय राउत यहां पर कर रहे हैं। संजय जी, आपने आज इंडिया टुडे राउंड टेबल में हमारे साथ आप जुड़े और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोवा राउंड टेबल इसी तरह आगे चलता रहेगा। कुछ और नेता भी जुड़ने वाले, देवेंद्र फडणवीस और एक महाराष्ट्र कनेक्शन थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से भी यहां पर नेता आने वाले और अरविंद केजरीवाल के साथ हम हमारे राउंड टेबल का ये सेशन खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस राउंड टेबल में आए इसके लिए। थैंक यू।
Goa. They'd fought in 2012. They didn't fight in 2017. They're back again in 2022 in Goa. Is the TMC. I have with me MP TMC Sushmita Deb. She's also co-in charge Goa. Thank you. Welcome for coming and joining us this lovely evening. Sushmita was just telling me right before that she's been in Goa for as long, but she hasn't seen the beach. And this is the first time she's actually seeing the beach. So, I'm glad we gave you that opportunity, Sushmita. And thank you for joining us. Thank you so much for inviting me on this show. Sushmita, let's begin with TMC's foray into Goa. You guys, that historic win you scripted in West Bengal. You marched into Goa 4 months before elections. It was also at a time, when Meghalaya was happening, where overnight you guys became the principal opposition. Meghalaya, I'm sure it's, when experience taught you it was different, what Goa. But I'm sure you thought that it is going to be something maybe like Meghalaya, where it's an easier state to deal with. Have you, coming in here, is there a reality check for the TMC? Because if ground reports are to go by, if numbers are to go by, then TMC's lot is not looking as good as it should have been, or at least what was perceived 4 months ago when you guys came in here. You see, when we first decided to come to Goa as a party, the situation to us and as per the ground realities on the basis of our real-time surveys was that there was a massive wave against the BJP. People of Goa were sure that they're not going to go with the BJP. But at the same time, they were very skeptical about who to vote for, given what had happened in 2017, how the en masse exodus from the Indian National Congress. So there was a feeling that they needed an alternative here. And that was really our impetus to come into Goa. The timing has been questioned not once but several times, that why at such a late stage. But to be honest, the Bengal elections finished in the May of 21, and after that victory we repositioned ourselves and we picked Goa because our view was that there was a crisis in Goa, political crisis, where there was no alternative, and that was the mood of the people. And it is a fairly smaller state too, as you know. So we picked Goa and we decided to give it our best. I mean, you are telling me that the numbers are saying something else, but I believe that no one on the ground can deny that we are in the fight. We are part of the narrative. You may love us, you may hate us, but you can't ignore us. And our candidates, I think in 90% of the seats, I wouldn't say 100%, are contending hard, and neither the Congress nor the BJP nor any other party Aam Aadmi Party can ignore the Trinamool Congress candidate and their might on the ground. Well, we definitely cannot ignore the TMC's presence in Goa, because for anyone who's come to Goa in the last 3 months, you only see hoardings of Mamata Banerjee. It's every 10 steps that you go. So that is what is perceived. And I want to ask you that question. Because of, this massive thrust on advertising, this massive thrust on social media, you are perceived to be the outsider which came with money and is trying to sway an election, and maybe that is why possibly getting rejected. You see, all the people contesting elections are all Goans. Nobody has come from Bengal and taken a ticket in Goa to fight. And the reason that you're calling, or that narrative or outsider, it's the BJP's narrative. And the reason they are saying it is because Mamata Banerjee is the Chief Minister of Bengal, and she's decided to come and fight in Goa. That way Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat and then decided to become the Prime Minister. So nobody called him an outsider, because he comes from a party which had a national base. But I don't think any political party, if they decide to go to any state, can be called an outsider. It is unconstitutional to say it. It is absolutely a communal statement, if I may say so, and it's undemocratic. Mamata Banerjee as a leader has made her position very clear. She will go and fight the BJP where she feels there is no alternative, or the alternative is coming across as weak. And we are on record saying we are not in Punjab, we are not in Uttarakhand, we are not in UP. We picked Goa, and the reasons are very clear, because there was no alternative in the minds of the people. 4 months earlier, you said you came to Goa because you thought there was no political alternative. You wanted to present that with the TMC to the people of Goa. But somewhere down the line, 4 months later,
many would suggest that you turned around and you wanted to ally with the same party you wanted to replace, the Congress. You see, when we first came, like I told you, people perceived Congress from a position of weakness because of what happened in the last election. Like, I have seen on social media several press meets on behalf of the Indian National Congress, whether it's Mr. Surjewala, whether it's Mr. Chidambaram, whether it's Girish. But till today, the Congress party has not been able to give the people of Goa a plausible explanation as to why they could not form the government despite having the numbers. They're talking about environment, they're talking about the culture of Goa, they're talking about the corruption of BJP. But the first question that the Congress party is actually facing on the ground is what went wrong. Today, I believe Rahul ji is coming on the 4th. All the candidates are going to take a pledge that we are not going to defect. I mean, you must have seen it on their digital platform. But the question is, you got 17 MLAs who did not defect on day one. What were the people who are at the helm of affairs doing? I think the pledge needs to come from those people that this time they'll not mismanage it. And that's a big question in the minds of Goan people. Sorry. No, complete. See, today, like I said, when we first did our ground survey, the narrative vis-a-vis the Congress was, it's no point giving them the kind of mandate that they got last time because they literally threw it away. And you should have Mr. Valerio come on your show sometime and ask him what actually transpired despite 17 seats and a letter that was signed and ready to form the government. Why did that letter not reach the governor? That's the question Congress needs to answer. And unless they answer that question, there will be a big question mark right till the 14th of February, which Congress will face. There are questions that emerge as well where Mr. Valerio backing out of fighting an election for the TMC is concerned, but we'll come to that later. I'll come back to the question of the Congress. If the Congress is such a weak link in this election, then why publicly want to ally with the Congress? You, the TMC, made it very clear that they wanted an alliance with the Congress. The Congress turned you down. We came fighting with our full might. I mean, 4 months back, I had friends coming to Goa. I myself hadn't joined the team with Mohua. And people saying, my God, Trinamool is the only party on the ground with their Griha Lakshmi, campaign, with their Yuva Shakti campaign. And there was no other party on the ground apart from us. Now you say, why did you approach the Congress for an alliance? As we went closer towards election, there was a view on the ground that the fight against BJP may be stronger if TNC and Congress had some sort of an understanding. And Congress was consistently building up this narrative against us that Trinamool Congress is going to divide the votes and Aam Aadmi is going to divide the votes. I mean, go back, a month and you'll see that was their narrative. So we came clean. We are very clear. Our fight is with the BJP. And if people felt that Congress and TMC having some sort of an understanding which strengthened the opposition, we are not arrogant. So we said, okay, fine, let's talk. But Sushmita, that is still what the Congress says. I had Randeep Singh Surjewala here just about 5 minutes ago, before you. And that's what he said, that what the TMC, or even he said the Aam Aadmi Party, what both these parties have done is, you have muddied the political waters of Goa, where you'll be nothing else but a spoiler. You see, it reeks of arrogance when a party says that another party coming and fighting it out on the ground, doesn't matter which party it is, it's a spoiler. Going by those standards, there are only 2 national parties in the real sense who ever spread across the country. That means no third party can come up. Do we keep waiting for Congress to defeat BJP? No, we have every right to come and fight here. But in the fight, if we feel that we should open the doors to talk about an alliance or any other understanding, it's in the greater interest of Goa to defeat BJP. So for the Congress should have come 4 notches down. I mean, you are yourself saying that, we are dividing the vote. These parties are being spoilers. That means you are accepting the fate. That itself is an admission of the fact that we are a factor. So what is it the Congress wants? That everybody should pack their bags and go? No, they're not open to an alliance. So what the Congress is saying is that your reality check was the Congress in
it was a reality check for the TMC, but also on the strength of the Congress in Goa. And with you coming in right now, you have muddied the waters in terms of splitting the vote as such, because you are presenting an anti-BJP picture. You've been a co-in-charge here. You know how small the margins are on each seat. So you're going to, yes, the margins are small. And in midst of all of this, the BJP will walk away. No, I think it's a very unfair argument on the part of the Congress if they are saying so. See, please understand, I again want to say that with the Trinamool Congress coming on the ground in Goa, it has actually injected dynamism into the opposition politics. Congress was lying dead. Please believe me, Congress was dead. We came and we injected dynamism into the Goan thing. But yes, there was a narrative building up against us by the BJP and to some extent by the Congress saying they're not willing to talk, they're being spoilers. So we said, look, we are willing to talk. That's all we said. Many suggest that your willingness to talk stems from the fact that in 4 months of you coming here, you've seen desertions, you've seen internal dissent, and what you have primarily are second-hand candidates. Mostly 8 of your candidates right now are the ones who were denied a ticket by the Congress. 2 of them themselves joined you because they were denied a ticket from the BJP. What are the 3 things you said? Desertions, internal dissent and... defection. No. Desertion, internal dissent. What would I say? Okay. Candidates, your candidates, second-hand candidates. Let me tell you, these 3 words can be applied to any party in Goa. It can be applied to any party, even the Indian National Congress. Mr. Falerio left the Congress and joined Trinamool Congress. Mr. Lobo left the BJP and went to Indian National Congress. But Mr. Falerio the same Goa Forward Party, which put egg on the face of Indian National Congress, has now gone back to Congress. So I think we are all at par. So let's not do any mudslinging. Each party has been through a similar experience in Goa, and we are all fighting it out with what we think are good candidates. And at least we are not getting our candidates to say, please take a pledge that you're not going to defect. See, let me put it in perspective. What good is a pledge when the Constitution says if 2/3 of your MLAs decide to leave, they'll go? Is the Congress pledge greater than that? And that's exactly what happened to the Congress. So this pledge is not going to work. This pledge is not going to work. But I understand why the Congress is doing it. It comes back to what I said. There's a huge trust deficit where the Congress High Command can hold on to the candidates that will win and come. And the biggest evidence of that is the pledge. Sushmita, the Congress suggests that 8 of the ones that they didn't give a ticket to, are the ones that you've entertained. 2 of them from the BJP. So that's why the second hand. Mr. Lobo and his wife are not getting a ticket from the BJP, so they're in the Congress. Fair enough. You know what I'm saying. So we are all guilty of the same thing, or we all stand vindicated of the same thing. Look at it either way. Sushmita, where does the TMC's alliance with the MGP stand right now? Because the MGP was missing when the manifesto was announced. Because it is said your best bet right now in Goa is your alliance with the MGP. See, MGP was not missing. The working president of the MGP was there. Yes, I understand when you say that alliance cannot only happen on paper. Alliance has to work on the ground. There has to be vote transfer. So MGP has to transfer their vote to us. And we are working on that. We have a complete schedule of where MGP leaders will campaign for our candidates. Just wait till the 5th, and I think that was my second question, because they haven't really come down. But I'll ask you another one. Where does the TMC, keeping in with your alliance with the MGP, where does the TMC stand on ideology? Because when you take on nationally, you have this very anti-Hindutva, anti-right-wing stand. The BJP does this. The MGP has gone a step further in many instances in Goa. So is the ideology different at a national level when you're looking at making national statements? When it comes to alliances, it suits you, so you go with the MGP? What is the TMC ideology? See, if you look at our manifesto, it's very clear. Those are the things we've agreed on in Goa. It's like saying, why is the Congress with Shiv Sena? It's like saying, why is the Congress with Shiv Sena in Maharashtra? Isn't there a clash of ideology? It's very simple. MGP is opposed to the Bharatiya Janata Party. MGP is going to fight Bharatiya Janata Party in their bastions. So we are very clear that MGP is going to defeat the BJP in their strongholds. We're quite sure of that. We've done our homework. So let's wait till the 10th of March. And you think MGP will still stay with you after the 10th of March? Yes, they will.
They definitely will, but I'm not sure whether Goa Forward will stay with the Congress. You see, I'll tell you something. It's a real issue in the minds of the people that what and who they are voting for, what will happen on the day of the thing. That's why Aam Aadmi Party has an affidavit. It's a nice gimmick. Congress has a pledge, but we are very clear. We've had our talks. We've agreed on what kind of politics we want to ensue as alliance partners, and that's our faith. And I'm 100% sure that the MGP will not go with the BJP. Their entire politics is against the BJP. Look at it. Ideology is the same. Ideology may be the same, but the question is, when two parties come together, you have like a common minimum program, which I've seen in the Congress, and that's our manifesto, and that's our agreement. That's our agreement. And I mean, politics is very dynamic. So you are right in saying that ideologically are you on the same footing, but we saw MGP as a force that could fight the BJP in their bastion, and that was the basis of our alliance with them. Sushmita, staying with ideology, why should anyone look at you being different than the Bharatiya Janata Party? Because you've been accused of massively poaching in Goa. You wanted to ally with the Congress. They say one of the main reasons they didn't is because you came and poached all their leaders. And you have always accused the BJP of following the ideology or the politics of defection, of poaching. How does that make you different than the BJP in Goa? I like the fact that you're saying Congress said we came and poached all their leaders. Then it's the Congress with the second-rate candidates left if we've taken away all their leaders. Anyway, be that as it may. See, I'll tell you what. This whole whining about poaching doesn't suit the Indian National Congress, with all due respect to them. They're a very old party, grand old party, like Prashant says. But see, I'll tell you something. You cannot be poaching BJP people in Uttarakhand and posing with them in 12 Tughlaqling and then saying, Trinamool is taking all our leaders. Have they not taken leaders in Karnataka from the BJP and made them join with DK Shivkumar? Have they not given a Nana Patole, made him the chief of Maharashtra? Have you not made Revan Reddy the president of Telangana? So, it's whining. I mean, these are crocodile tears. So it's like if you're living in a glass house, don't throw stones on others. You've taken Lobo from the BJP and Lobo's wife from the BJP. Lobo has given Congress half their candidates. So I think that argument doesn't stand. It's very simple. We came as a party. You promised the new dawn. You said that's what you came in, that the new dawn for Goa. But the politics is the same of defection. See, let me tell you something. Goa is a very small political class. It's a very small state, a bit like the Tripura. So when a new party comes, anybody you take will come from some party. You know what I mean? If you start a new television channel and you decide to get 10 good anchors, they're bound to come from either India Today or NDTV or those channels. So is that poaching? No. You're not forcing anybody to come. We are saying we are a new party. We want a new dawn. Help us. These are our schemes. This is how we plan to do it. And they joined Mamata Banerjee. And let's face it, she's a force to reckon with today in India, whether we like it or not. If you're going to talk about the force to reckon with in Mamata Banerjee, you named Prashant Kishore. Who is running your campaign? Is it IPAC or is it TMC? I don't see IPAC giving any speeches anywhere. I don't see photographs of IPAC being tweeted, but yes, they are consultants. It was a greenfield project. They came in first and gave us a proper, thorough study. The surveys I keep talking about was first done by Prashant Kishore and the IPAC team. We don't deny that. But after that, Derek O'Brien came in, Moha Moitra came in, I came in, others came in, Pavan Verma has come in. So it's not like IPAC is running the show. But when you do a greenfield project, you need to know what the ground realities are, what you keep telling me about. And remember, a consultant brings in an objective view. There are no biases. He speaks truth to power. Did an overzealous consultant sell TMC the dreams of national expansion through Goa? If you don't have fire in your belly, if you don't have dreams, then why are you a consultant? A consultant is in the business of giving you confidence and telling you the truth, the limitations. That's what Prashant does. We knew our odds.
And we are not scared of taking on a new challenge. How else do we expand from Bengal? I mean, no consultant can come and tell you, here is a guarantee and you're going to win. He said, it's a small state. You have a fighting chance. There's a vacuum there. Mamata Banerjee is a brand name. Let's fight it out. So we came. I mean, you can't hold a consultant to any guarantees. You can't do that. Sushmita, with the TMC coming, what indirectly happened was that the Aam Aadmi Party, which was seen as a relatively outsider, newer player in Goa, became the insider, while you appropriated the outsider tag. See, as far as I'm concerned, Aam Aadmi Party has definitely been here longer. And you will see that when the results come, it's going to be no different. No different because to what? our reports say that they haven't gained anything in the last 5 years. No, if you electorally, it's not going to convert into a game that the time they've done in Goa. Just trust me when I say that. That's my view. I may be wrong, but this is our view. Aam Aadmi Party may have come 5 years back, but I don't think they've been consistent. They were here in 2014. You were here in 2012. You didn't fight 2017. So we made a beginning 4 years back, and we are going to be consistent. You have to wait 5 years to see whether we are consistent or not. But you skipped 2017. So tell me something. Suppose we came after the Goa elections, then someone can say, why didn't you come before? If you come 3 months before, why didn't you come 6 months before? You have to start somewhere. And I think it's extremely unfair in such a large democracy to tell a party which is trying to expand that don't go to this state because you'll be cutting this vote and that vote. Of course, we are here. We will eat into someone's vote share. Why not? You're a national party. You're the mighty party. Fight us. Why are you so scared? Why are you crying? You talk about national ambitions. Yesterday, very many, some would suggest foolhardy, some would say it takes a fair amount of stomach to make a claim that, or make a statement that you'd be fighting, which Mamata Banerjee did yesterday in 2024 from Uttar Pradesh. Now, that's very clear. She's made known her national ambitions. Was it, we'll talk about that after, but I want to ask you, was it with an eye on what's happening in Goa right now? See, Mamata Banerjee, after the last assembly election, first met Mrs. Gandhi and like-minded parties in the month of August. I remember it was 20th of August. And opposition unity, that whole discussion was on. She was crystal clear in the meeting. She said, whoever has the strength to fight BJP in wherever must get together. She was a leader who in that meeting told all the other leaders present there, including Mrs. Gandhi, Congress president, that you need to talk to a Jagan Reddy too. You need to talk to TRS too. You need to talk to Nitish Kumar too. So you can't keep saying UPA, UPA. She said it in that meeting that today if you want to beat BJP, you have to say that the NDA alliance partners are not untouchable also. She was the first to say it. So when she talks about opposition unity, she's not just talking about the left and RJD and NCP. She's also talking about a Jagan Reddy in Andhra. So that's her idea. People said, why did she say, oh, UPA is not there? She's right when she says it. UPA was a post-poll understanding to give a governance and to keep BJP out of government. Those same people are today repositioned. How many seats did Congress have then and how much does Congress have now? UPA was a post-poll alliance. So she's saying there has to be a new set of alliance today to defeat the BJP. So this new political order, which she's suggesting, and her claim that she's fighting from UP in 2024, clearly she wants to lead this new political order. She wants to be, the TMC wants to be the primary opposition in 2024. Well, she definitely wants to play a significant role in that fight. And who's going to be Prime Minister, who knows? We've had a Mr. Devegowda as a Prime Minister. We've had Mr. Chandrasekhar as a Prime Minister. I mean, everybody thought Mrs. Gandhi would be Prime Minister, but Dr. Manmohan Singh became. And Mrs. Gandhi has proved she can make any sacrifice in the greater interest of the nation. I mean, she's known for her sacrifice, so you don't know who's going to become the Prime Minister next. Does the TMC want to be the primary opposition in 2024? We want to be one of the strongest forces to fight the BJP on the ground. Half an hour. And if I, sorry to interrupt you, and if I may say so,
that the entire nation and the world, if I may say so, watched the Bengal election. It was one hell of a fight. And anybody who anybody who says that Mamata Banerjee is helping the BJP directly or indirectly, knowingly or unknowingly, quote unquote, what Mr. Surjewala said, it flies in the face of what happened in Bengal. She single-handedly against Central Forces Election Commission of India, Narendra Modi ji, Amit Shah, and so on and so forth, fought that battle and how she had been written off. So she is a woman of conviction, and she plans to give BJP a fight wherever she feels she can, and she believes in opposition unity. Just trust me when I say that. Even in her own election, the speech she gave, I mean, it was an internal meeting, she was crystal clear. She said, I will try my best to bring everybody together, and if I can't, ekla chalo re. That's why we are in Goa. Well, she is all in for opposition unity. The Congress was on this stage 20 minutes ago. They say they are all in where opposition unity is concerned. The Congress also says we are all in for opposition unity as long as each opposition party understands that the Congress is on the center of that opposition unity. Do you accept that? I agree. I want to tell Mr. Surjewala that how can you give me a lesson on opposition unity in Goa? What did you do in Bengal? You tied up with CPM and ISF, whatever that party is, and fought Mamata Banerjee on 294 seats. What were you doing there? You should have shut shop there and let Mamata Banerjee sweep and defeat the BJP in Bengal. Today, why are you in Odisha doing what? What is the Congress's president in Odisha? In Tripura, 1%. Shut shop. If you believe in opposition unity, I wish I was on the stage with Mr. Surjewala. You can't say chit bhi meri or pat bhi meri. Heads is also mine and tails is also mine. You're giving Mamata Banerjee a lesson on opposition unity. Shut shop in Tripura and West Bengal tomorrow. Wrap it up. Ask them to merge with the Congress, with the Trinamool Congress. When it comes on the national stage, will the TMC follow the Congress? Will the Congress say they are going to be the fulcrum of opposition unity? See, we will do everything that's required to do to stop the Bharatiya Janata Party. We will do everything that is required to do. But all I'm saying, let me put it on record. Today, it does not suit the Congress to say, why have you come to Goa? Why are you going there? Why are you going there? What is the logic? That you are trying to cut into the opposition vote. Then I'm repeating, Preeti, they fought into CPM and Congress and went to zero. Let Mrs. Gandhi show her goodwill and her faith in opposition unity by doing a press meet and announcing that they will not give Lok Sabha candidates in Bengal and Tripura, where they are below 1%. Will they do it? I'm just saying, you know what I mean. But what is the mood of the nation? You're a journalist, you're on the ground, you talk to people. The mood of the nation is, there is a huge number of people increasing by the day who want a change in this country, and that has to be everybody's focus. One would think, Sushmita, because of late we've seen Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party is fighting this election here, go all out to praise Mamata Banerjee's leadership. He's called Mamata Banerjee his elder sister. He thinks, in the long run, when we go into 24, she's going to play a significant role. Vice versa. Mamata Banerjee has been very, very kind in terms of verbally praising Mr. Arvind Kejriwal. Would you not reckon, because instead of facing the embarrassment that you did with the Congress by offering an alliance, your natural alliance was the Aam Aadmi Party in Goa. Why didn't you ally with them? See, I'll tell you something. It is not about, there's no embarrassment. We have to stop thinking in those terms. That this is an embarrassment and that is an embarrassment. We approached the Congress because Congress was consistently saying that TMC is not talking to anybody. TMC is the spoiler. So we said, fine. If you think we are a factor and we are also doing surveys. We know what is our vote share in Goa. Let's talk. We never said give us 10 seats, you take 20 or 30 or 10 or whatever. We said, you want to talk, let's talk. But they didn't talk. So there is no embarrassment in that. But if the ultimate aim is what you say is to be anti-BJP, then why not ally with the Aam Aadmi Party? Why not start talks there? Both of you fought together in seats where the margin is so small. You would have consolidated that vote instead of splitting it. See, as far as I know, we did not shut doors on anyone. There were a lot of back channels going on. Some worked, some didn't work.
And that's the way it happened. So everything can't be put on record, but I'm telling you something that this Goa election is a very important phenomenon, a very significant phenomenon. See, all your questions are relating to what happened before the campaign started or before the notification happened. But we will have to also, all these questions will be relevant even after 10th of March. So let's see how it goes. I mean, politics is very dynamic. Let's see. It all depends what you get. It all depends on that. I think I tried to explain to many people who raised the same concerns that you are about Goa. But I think an average Goan citizen needs to understand there's a huge risk in putting all your eggs in one basket called the Indian National Congress. It's a big risk. And that's a foregone conclusion. Because of what happened in the last. And I'm telling you that the Goan citizen is very intelligent. They will look at the candidate. They're very small constituencies. Candidates are a big factor. They will support strong candidates, I feel. They will support a lot of strong candidates in Goa. And there are going to be a lot of surprises, I feel, in the Goa election results. And I believe that there is a narrative out there where people are still thinking that will Congress be able to hold on to everybody, and the pledge they take on the 4th will only reiterate that view. It's going to backfire on them. That's what I think. I wish they had not done it. Sushmita, in politics, it's a cliche, I'll quote it. Timing is everything. Absolutely. Did the TMC come too late into the game where Goa is concerned? You know, you were on a high after West Bengal. You were seen as this juggernaut. You actually held the juggernaut of Narendra Modi and Amit Shah in West Bengal. Should you either have come in earlier or should you have not come in at all? See, Preeti, there's always, you have to start somewhere. You know, you have to start somewhere. What is the right timing? I mean, you can't take out a Mahurat. But so many states were going to election. We picked a state where we felt there was a vacuum. And it's never too late to go out there, fill up a vacuum and fight a communal party like BJP. We don't fear that. I think it took a lot of courage. It took a lot of conviction to get up and say, time is short, yet we are ready for the fight. That's the way you need to look at it. Have you, the TMC, met its comeuppance in Goa? Have you met what? Its comeuppance, have you met? Is it a reality check for you? See, it is not about a reality check for Trinamool Congress. The fact is, in 3 or 4 months, we're part of the narrative. People are talking about us. We have a certain vote share that's going to impact this mandate. That's a lot to achieve in 4 months. I think the reality check is we are even more encouraged that we can do this, and we are going to do it even in other states. That's what we think. We are going to spread our wings in other states. Other states later, I want to ask you about Goa itself. Win or lose? You know, you were here in 2012, you left in 2017, you're back in 22. No matter what you get, let's say, you know, let's not give it a figure, but whatever you get, right? Single digit, double digit, no digit, whatever you might get. Will the TMC stay in Goa right now as a regional force, regional party building from here? Or will you now pack your bags and go back to West Bengal and look at other states? See, when you keep saying pack your bags and go back to Bengal, I repeat what I said at the beginning of this show, that we have not brought people from Bengal to fight here. Na? All the candidates are candidates who are fighting. They are from Goa. Why will they pack their bags and go to Bengal? They are Goans. They are going to stay here. They are going to fight. But Sushmita, Goan political history stands testimony, and you yourself began this discussion with that the candidates never quite stay in the same party. So it all depends. So is the TMC here for good where Goa is concerned? We are here to stay. We are here to stay. And irrespective of what may have happened in the past, I think the Mamata Banerjee who's emerging as a leader now cannot be compared to what she was 10 years back. And I think that writing is on the wall. I'll, ask you one final question. What is the TMC's number? Out of 40 seats in Goa, where does the TMC think it's going to stand? See, if you ask me for a specific number, I'm unable to give it, because after the 5th, we'll be in a better position. We are doing our surveys almost every 4 to 5 days. And I can tell you that where we were a month back, we are growing stronger.
Okay, and if you ask me a number, and if I hope I'm on your show soon again, around the 8th or 9th, I'll be in a better position to give you Why a don't number. you tell me single digit or double digit? Double digit for sure. For sure. For sure. You'll write it down and give it to me. It's like the Congress's affidavit. Will you write it down? And Aam Aadmi Party's affidavit. Will you write it down? If you want me to write it down, I'll write it down. I'll come back on your Okay. show. Double digit. And what I'm saying is that please be sure. Please be sure, and I reiterate myself, we are here to fight the BJP and we'll go to any length. All right. Appreciate you joining us, Sushmita. Thank you so much. I really enjoyed and it. I'm glad we got you to see the beach in all the time that you've been here campaigning. Thank you. To the India Today Goa Roundtable, where the big question to be asked is, who will be Goa's party number one? And the battle for that party number one spot is, as of now at least, according to most political observers, between the ruling Bharatiya Janata Party and the primary opposition, the Congress Party. So we've got both the parties here today. From the Congress Party, Dinesh Gundu Rao, its General Secretary in charge of Goa, from Karnataka, of course, neighboring state, and Mr. Narendra Savaikar, who was till recently the Member of Parliament from South Goa of the Bharatiya Janata Party. Thank you both very much for joining us here. Am I right to say that you are the challenger, Mr. Gundu Rao? They are the party in power. They've been 10 years in power, and you have struggled to displace them. Even last time when you were the party number one in Goa in 2017, at the end of the day, it was the BJP that formed the government. So the impression is
कांग्रेस को बीजेपी को हराना मुश्किल है गोवा में. Do you concede that? As you said, Rajdeep, in the 2017 election, it was the Congress which won that election, and the BJP lost the election. Ultimately, how the governments were formed was a different matter altogether, but we were the number one party. And I would say that this time, despite all those things that have happened, to see that the Congress is weakened, I think we've emerged stronger, and we will see that, yes, we are the challenger to BJP. There's no other challenger to BJP. But I think this time we will get a clear-cut majority, and we will be able to form the government. Mr. Savaikar, do you believe that in 2022 you are facing 10 years of anti-incumbency? Not 5, but 10 years. And your tallest leader, Manohar Bhai Parrikar, is also no longer there. So you are a vulnerable party at the moment. There is a strong undercurrent against the BJP in Goa. I totally disagree, Mr. Rajdeep, for the simple reason, because for last 10 years, BJP has been in the power in the state. And considering our performance from last 10 years as a ruling party, and considering our performance in the various sectors like infrastructure, health, education, and all these sectors, I'm quite sure and confident, as you have said it, that there is an undercurrent, but I totally disagree with you, and I'm quite confident, and Bharatiya Janata Party is all set to form the next government in 2022. You know, you say that you cited sectors. Infrastructure, many will concede the BJP government here has made efforts, particularly with roads. But when I look at health, you mentioned health. You're saying health in a state where Goa suffered oxygen deaths in your main hospital here. And your health minister and chief minister were fighting each other instead of resolving the problems of Goenkas. I think that issue has already been resolved. And it was an unprecedented kind of a thing which entire world has suffered because of the pandemic. And Goa, with whatever the resources that it had at its disposal, we have overcome all the difficulties that we faced that time. I'm quite sure whatever the best kind of health facilities that we have been able to provide to the Goenkars, that we have been providing to the people. Almost 1 in 4 Goenkars are unemployed. Tourism sector collapsed because of the pandemic. Mining sector has not been revived. Are these not issues? You're not worried. You seem to believe that there is no anger, no sense of discontent at the moment. Mr. Rajdeep, as I have said it, because of the pandemic, as you have said it, that there were some difficulties that the tourism sector did suffer in Goa. But so far as the mining is concerned, we have come out with the mining policy. Secondly, we have also established the mining corporation, and in the next few months, definitely it will be in place, and the mining will resume in the state. You know, Dinesh Gundu Rao, the BJP is seemingly confident because they believe Congress is its own worst enemy. You were the single largest last time, as you said earlier, 17 seats, but in the 5 years, 15 of your MLAs left the Congress party, joined various parties. So there's a trust deficit. Number of people fear that vote for the Congress, but what will happen after the election? Where will the congressman go? The very fact that you had to take your MLAs or prospective MLAs to a temple, a church, a dargah and swear that they will not defect, what does that suggest? See, there are two ways of looking at it. First, I'll come to your last point first. It suggests that we have a party in India today which is so unprincipled that it will go to any extent to ensure MLAs defect, parties are split, governments are broken. You know, they will use any institution to see that, you know, they come to power by any means. So it's an unprincipled party that is ruling the country today. Not only Goa, we've seen it in Rajasthan, we've seen it in Karnataka, we've seen it in Madhya Pradesh, in Northeast, in many governments. So this is a party which is just feeding off, using all the. How come your MLAs are so susceptible? You are saying that their party is unprincipled, but it also suggests that your MLAs are very weak. No, what I'm trying to say is the fault is also, I accept, there is a fault on our side, but look at the politics that the BJP is doing. It uses IT, ED, threats, blackmails to ensure that governments fall. That is one thing. Second thing is, the more important point is that today Congress has changed itself. You know, we had to convince the people of Goa that we will not allow this to happen again.
So we said these defectors, many of them wanted to come back to Congress this election. We said there is no chance for you guys. Our doors are shut for you. And even amongst the sitting MLAs, we had one former CM whose sons had joined BJP. We sidelined him long ago, Mr. Ravi Naik. So we started building up another candidate there. So we have 80% of our candidates are new candidates, young people, good people. You know, many of them are activists. Many of them have done work in the in social sector. You know, and we've got Are they electable? See, are they electable? In Goa, you need money power sometimes to win elections, Dinesh Gundu Rao. Today the old Congress is in the BJP. This fight is between the new Congress and the old Congress. All the old Congress is they have in a way our Congress has been cleaned up, and all the elements which are corrupt, which are using, you know, which have got no principles, no ideology, are all with them. And today I don't know what BJP is. Today, you know, within their own BJP, if you speak to their cadre and even speaking to their own RSS cadre also, they are fed up of BJP. They are saying, what is BJP today in Goa? We can't recognize the BJP. So our Congress is a new Congress. We've got great candidates, young candidates, good candidates, and that is what we're going to the people with. Let's clean up Goa. Let's change Goa. Let's bring in a new politics into Goa. I think that is the mandate that we are looking for. You know, interesting, Mr. Savaikar, the new BJP is the old Congress. Number of people are saying this is a new BJP. Only 4 of your 40 candidates are originally BJP people. You have done Sam, Dam, Danda, Bhed politics in Goa for the last 8 years or 10 years to stay in power. And now the chickens have come home to roost. Because in every constituency that I have gone to, there is either a BJP rebel or someone who has switched because they are upset that this is a new BJP that has no time for the old party cadre. You see, in 2012, when we contested the elections, we came out with as a single largest party. You got a majority, We got a majority. So afterwards, in 2017, we again formed the government. Now, there are Congress people who joined the party. Now, as you have said it, those people, they have joined the party because they said because of the development, because of the principles that they believed in. Now, you say that since they have joined BJP, they are unprincipled. For 3 years back, they were all your people. So I think now that BJP has offered them the ticket and they are contesting on the BJP ticket, I'm quite confident that they have understood what the BJP is. The BJP cadre has accepted them and they are with the BJP, and definitely they will win these elections. No, Rajdeep, if they had any principle, those 10 MLAs are still elected on the hand symbol. They didn't quit the Congress. They didn't even resign because people had voted for them because they're as Congress candidates, not as BJP candidates. So if they had any principle, they should have made those 10 MLAs resign, recontest, and then come to power. Here, I mean, look at the way he is talking today. He is not bothered. There's no sense of shame. There's no sense of that, okay, we've done something wrong. Yes, this is part of politics. We will ensure defections. We will form governments anyhow. We know how to do it. So that is what the BJP stands today. They don't have any principles. Forget Goa. Across the country today, all they talk about is Hindutva, Ram, Shri Ram. All that is only for the sake of gathering votes. In practice, they are the most corrupt party, the most unprincipled party, and it's time this party goes. Okay, Mr. Savaikar, the fact is a Babush Montserrat. Your party campaigned against him and called him a rapist and criminal when he was in the Congress. You have other Congress MLAs who you called, one of who you called a Matka King when he was in the Congress. He became a MLA and a minister in your party. So when people are in the Congress, they are criminals. You brought them into the BJP and it almost seems like BJP is a washing machine. You come into the BJP and all your past sins are washed away. That's not a question of washing machine. See, it's basically the charges are there against those people. They are pending in the court. They will face the trial. So all these things will go on. But so far as the party is concerned, so far as their candidature is concerned, they are our candidates and Bharatiya Janata Party is with them. The cadre is with them and they will get elected this time. In Panjim itself, instead of Manohar Parikar's son, you have chosen to back Babush Montserrat. I mean, the message that is going on out is that for BJP, as I said, this election is about winnability. You can be a criminal, you can have a criminal record, you can have serious charges against you, you can be accused by BJP cadres itself of corruption, but as long as you can win an election, sab saath mein aao, this has become a Shivji ki barat, the BJP. The new BJP, anyone is welcome as long as they are electable. नहीं ऐसा है राजदीप, ये शिवजी की बारात नहीं है. ये जो लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका क्या माहौल है, आर द पीपल विद देम, आर दे गोइंग टू इलेक्ट देम, वी हैव डन एवरीथिंग
And of all, include after entire exercise, these people, they have been offered the tickets and definitely they will get elected. You know, while you attack the BJP for welcoming virtually every old congressman into the party, you accepted very happily Michael Lobo. The same Michael Lobo, when he was in the BJP government, you attacked him again, corruption, land grabbing. Today, Michael Lobo has become one of your star faces. So in Goa, nobody doodh se dula hua hai Dinesh Gundu Rao. Today, you in the opposition, you can attack the BJP, but you have also practiced the same kind of defection politics. Rajiv, there's a big difference. These MLAs who defected from Congress to BJP, defected to become ministers to get into power. Today, Mr. Michael Lobo has left the BJP, joined the Congress, and is contesting elections. And he's taking on the might of BJP. Today, we know how vindictive the BJP is. You know how they operate, how they operate from Delhi. So he's taking a risk also. No, he may be taking a risk, but Dinesh Gundu Rao, when he was in the BJP, you all were linking him to land grabbing that was allegedly taking place in Kalangut. Now when he has joined you, you are saying that he's your new hero. I am just saying he's not a hero or a villain. In politics, he has taken a decision, he has joined us. And yes, see, we are not living in a perfect environment. But the Congress has tried to achieve a situation where we clean up the whole politics of Goa. So we've got candidates like Captain Viriato, we've got Elvis Gomez, we've got Olencio, we've got such people also as candidates. So you're saying this is a new Congress? This is a new Congress, and we have shunted and closed the doors. One of our MLAs, Mr. Reginaldo, he wanted to come back. I said, we're not giving you the ticket. The one who defected to the Trinamool Congress, when he wanted to come back, you said no to him. No. So you will not accept defectors? We will not accept defectors even in the future. Tomorrow, even if we have to form a government, we will not take defectors and form a government. We will form a government on our own strength and with the people's mandate. Will you join hands with the Trinamool Congress, MGP, Aam Aadmi Party if you fall short of the magic figure of 21? I am confident of getting a majority. If you don't get? See, in politics, alliances can take place. Coalitions can take place. But that is a situation, when it happens, we will take a decision. Okay. Because we want to keep BJP out. BJP should be kept out of Goa because they have corrupted Goa. And he is talking about giving good administration. His own ministers have accused their own ministers. Mr. Babu has accused another minister of taking money for jobs. It's an 80 crore scam, one minister says, and they've been given tickets. What kind of a government have they run? Mr. Savaikar, I interviewed the governor of Goa, former governor Satyapal Malik. He on his own said there is corruption in everything in Goa and specifically mentioned the Pramod Sawant government. This is also Satyapal Malik appointed by Narendra Modi. So he's not a Congress figure, he's a BJP figure. The fact is, Babush Montserrat has accused your own minister, Mr. Pauskar, of a job scam. These are all your own. Your minister, Milind Naik, accused in a sex scam. You've gone and given him a ticket. You remove him as minister and then give him a ticket. What is the message? The message seems to be that the BJP, as I said, will take anyone who can win an election, no character certificate required. You see, so far as the people who are occupying the constitutional positions are concerned, I think it's bad for, I don't want to comment on those issues. But so far as the tickets which have been offered to, there were, as you said, that there were some accusations against some ministers. That concerned minister, he is not contesting the elections, he is contesting as an independent candidate, one thing. So far as you said that about Milind Naik, he resigned from the cabinet. Later on, he has been discharged by the charges that were against him after the investigation that have been dropped against him. So I think taking into consideration all these factors, the tickets, they have been, their candidature has been taken into consideration. They have been offered the ticket. Okay. In conclusion, I want to ask both of you. You, Mr. Savaikar, first. Are you confident of actually getting a majority in Goa, or are you looking at a post-poll coalition? I'm quite confident that we are forming the government with full majority. Full majority. So more than 20 seats. Dinesh 21 seats. More than 21 seats. More than 21 seats. Dinesh Gundu Rao, are you going to be back in Goa on March 10th, sitting in this same hotel where apparently last time deals were struck between the BJP and the smaller parties and you did not get a chance to form a government? This time, are you also ready, as some are saying, with money bags? See, we are very clear that what happened last time will not be repeated. And I am very confident that we will get a full majority. And the only thing that
BJP is trying to do in this election is, they know that they cannot win on their own strength. They want to see that the votes are split. The anti-vote of BJP should get split. But that may well happen. No, Between Aam Aadmi Party, Trinamool, Congress and the Congress, the anti-BJP vote gets split, BJP wins by default. That's the only strategy. And I am very sure now, looking at the way things are changing on the ground in Goa, the momentum has shifted towards the Congress, and every day we are gaining strength, and we'll get a clear mandate, and we'll form a good government, a stable government, and we'll change the face of Goa in terms of progress and development. We'll leave it there, because clearly in small constituencies of Goa, anything can happen. And you never know which way the election will switch. Many will say the real election begins on March 10th, after the verdict, not so much in the run-up to March 10th. Mr. Savaikar, Mr. Dinesh Gundu Rao, pleasure having both of you joining us on the big face-off. Goa's party number 1. We'll wait and see who wins that battle. Thanks for joining us. You're here on the India Today Roundtable from Panjim.
And welcome again. Joining us now, live at the India Today Goa Roundtable, is the former Chief Minister of Maharashtra who's been sent to lead BJP's campaign in the Goa elections. Devendra Fadnavis ji, welcome. We're in a very beautiful setting in Panjim and it's great to have you with us. बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए. Thank you. फडणवीस जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी है, वहां पे आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं. जब आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को गोवा की पॉलिटिक्स से कंपेयर करते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटीज है? देखिए, अपने देश में इतनी विविधता है कि हर राज्य की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है. अब गोवा का अगर हम विचार करें तो राज्य छोटा है, थोड़ा समृद्ध भी राज्य है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, पॉलिटिकली अवेयर है, तो यहाँ की एक अपनी राजनीति होती है. वैसे अगर गोवा के लोग मुझे माफ़ करें तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो राजनीति में कॉम्पिटिटिवनेस हर जगह है, पर गोवा में कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है और कोई रुकना नहीं चाहता है राजनीति में. तो ये गोवा की एक थोड़ी अलग पहचान मुझे दिखती है. मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जिस टाइम पे आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, आपने कोशिश की कि जिस हद तक हो सके क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देने की, और जो कैंडिडेट टेंटेड थे, आपके मिनिस्टर्स थे, उनके खिलाफ आपने हमेशा कार्रवाई की, पैरवी की. अब जब आप गोवा आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की इतनी लंबी फहरिस्त है कि बोलना शुरू करो तो केस के सेक्शन गिनाते गिनाते 1 मिनट लग जाता है, वो सारे अब आपके उम्मीदवार हैं. अब आपको उनको मैनेज करना है. तो जो फडणवीस की पॉलिटिक्स है, जो आप चाहते हो कि लोग माने कि आपकी पॉलिटिक्स है, वो गोवा की राजनीतिक हकीकत से कैसे मेल खाते? देखिए, मैं कोई गोवा की राजनीति बदलने के लिए तो आया नहीं हूँ और न मेरी उतनी क्षमता है कि मैं 15 दिन में या 1 महीने में आकर गोवा की राजनीति बदल दूँ. मेरा तो काम यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मदद करना, हमारे चीफ मिनिस्टर को मदद करना और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ तक लाना. लेकिन एक बात जरूर है, देखिए, गोवा में कुछ लीगेसी इश्यूज भी बहुत बड़े पैमाने पर है. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस लीगेसी को हमने नए तरीके से तैयार करने की कोशिश नहीं की है और सारी लीगेसी गोवा में बीजेपी एक दिन में बदल दे, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, तो बड़े पैमाने पर सभी पार्टियों में कैंडिडेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है, लेकिन इनमें से कई पॉलिटिकल भी है ना. जैसे आंदोलन हुआ है, पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ है. अब ऐसी चीज़ें राजनीति में कई बार होती है, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से तो हम राजनीतिक भाषा में इसको राजनीतिक जुर्म कहेंगे, लेकिन कानून कोई राजनीतिक जुर्म और गैर राजनीतिक जुर्म इसको अलग नहीं करता ना. नहीं, पर ये पॉलिटिकल क्राइम्स नहीं, ऐसे नहीं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके आपको धारा लग गई. ये तो रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर, क्रिमिनल इंटीम, मतलब ये बड़ी खतरनाक धारा है. ऐसे में वो पढ़ के लगता है कि भाई ये माफियाओं का चुनाव हो रहा है या एमएलओ का चुनाव हो रहा है. देखिए, जैसा मैंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ लीगेसी भी है. अब उनके भी अपने और सारी पार्टियों में जो लोग हैं, उनको जब आप पूछते हो तो वो भी कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर गलत लगाया है, इल्ज़ाम लगाया हुआ है, इसलिए तो हम कन्विक्ट नहीं हुए, इतने सालों से चल रहा है. अब ये सारी चीज़ों का जवाब तो वो लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता. नहीं, पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक दिन में नहीं बदल सकती, पर यही वायदा करके तो 2012 में आपने गोवा की जनता से वोट लिया था. अब 10 साल हो गए. अगर आपने 10 साल में देखा जाए तो पुराना जो कांग्रेस के टाइम पे सिस्टम था वो इंट्रेंच हुआ है, वो जैसा था वैसा ही रहा या उससे बदतर हो गया. ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से गोवा में कोई राम राज्य आ गया. राम राज्य तो नहीं आया, मैं भी नहीं कहता हूँ राम राज्य आया, पर आप जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है. गोवा में बीजेपी ने गोवा की पॉलिटिक्स को बदला है. कैसे? गोवा में 5 साल में 7 मुख्यमंत्री बनते थे. भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर दी है. गोवा में रोज एक नया स्कैम आता था. हमारे 10 सालों की सरकार में आरोप लगाने की कोशिश हुई, लेकिन पहले जब आरोप लगते थे तो उसके साथ प्रूफ भी आते थे, कार्रवाई भी होती थी. 10 सालों में हमारे खिलाफ पॉलिटिकल आरोप तो लगे, पर कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसका कोई प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया. तो बदली हुई राजनीति यही गोवा में हमने की. और सबसे बड़ी बात यह है
गोवा में जिस प्रकार का काम हमारी सरकार में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस प्रकार से गोवा का चेहरा बदला है, देखिए मैं तो ये कहता हूं, आधुनिक गोवा के निर्माता के रूप में मनोहर पर्रिकर जी को देखा जाता है। और भाऊसाहेब बांदोड़कर जी के बाद अगर गोवा के लोग किसी को याद करते तो मनोहर पर्रिकर जी को याद करते। ये गोवा को बीजेपी की देन है। गोवा की पॉलिटिक्स को मनोहर पर्रिकर जी ने और बीजेपी ने बदला है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को बदला है। जैसे मैं एक ना एक्सरसाइज करता हूं जब हम किसी स्टेट में जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे लगातार तो रहते नहीं, तो वहां के लोगों से पूछते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं कि करप्शन का क्या लेवल है। जब मैं महाराष्ट्र में पूछता था तो वो कहते थे कि जो पहले की कांग्रेस एनसीपी की सरकार है उसकी तुलना में वो मानते थे कि करप्शन कम हुआ, एटलीस्ट हाई लेवल करप्शन कम हुआ। यहाँ पे मैं आया, मैंने लोगों से वैसे ही पूछा जैसे कि मैं हर चुनाव में करता हूँ कि क्या है। उन्होंने बोला नहीं यार, करप्शन तो है और बिगड़ गया पर्रिकर जी के रहने के बाद, और वो अभी भी सुधरा नहीं है। तो ये तो हकीकत है, ऐसा नहीं है। आप लोगों से बात करो जो इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो फील करते हैं डेली बेसिस पे करप्शन को। मैं ऐसा मानता हूं कि आप गलत लोगों के पास पहुंच गए। अच्छा, आप सही लोगों के पास पहुंचोगे। वो जो महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि गलत वो कि जो गोवा में सही बोल लोगों के पास, अभी महाराष्ट्र की थोड़ी बात हो रही है, महाराष्ट्र की अलग से चर्चा कर लेंगे ना, उस पर जवाब दे दूंगा। अभी तो गोवा की चर्चा हो रही है। आप सही लोगों के पास पहुंचोगे तो सही जवाब मिलेगा। और गोवा के आदमी को दिल से पूछोगे तो वो ये बोलेगा कि जो कांग्रेस की सरकार गोवा ने देखी उससे कई गुना अच्छी सरकार बीजेपी ने गोवा को दी। आपने मनोहर पर्रिकर जी की बात की। पर्रिकर जी का एक कद था गोवा की पॉलिटिक्स में। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने नेशनल स्टेज पे अपना कद बनाया। कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी कमी को अब तक पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह का उनका आउटरीच था, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, एकदम एक आम आदमी टाइप का उनका अप्रोच था, क्या आप मानते हैं कि वो बहुत बड़ी कमी है जो अभी भी खल रही है गोवा? देखिए, वो कमी तो हमको हमेशा खलेगी। इसका कारण क्या है कि मनोहर पर्रिकर जी जैसा व्यक्ति ये एक आध ही तैयार होता है, मतलब उनके जैसे कोई बहुत व्यक्ति तैयार नहीं हो सकते। पर मैं ऐसा मानता हूं कि धीरे धीरे उस कमी को अलग प्रकार से भरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, अप्रोचेबल है, यंग है, डायनामिक है, हंस के लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, पंचायत तक जाते हैं। तो जो लीगेसी एक हमको पर्रिकर जी ने दी है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन पर्रिकर जी का व्यक्तिमत्व इतना बड़ा था कि उसको एक दिन में कोई नहीं भर सकता। उसके लिए समय लगेगा और धीरे धीरे हमारी वैसी ही लीडरशिप तैयार होगी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम डिपेंडेंट भी हो जाते। इतने सालों से बीजेपी को पर्रिकर जी है, इस प्रकार की एक हमारी मानसिकता थी कि गोवा है तो पर्रिकर जी है। अब अचानक हमारे बीच से निकल गए तो उस वर्ड को तुरंत नहीं भरा जा सकता। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रमोद सावंत काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके कदमों पर ही चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठा कि अगर बीजेपी वाकई में पर्रिकर जी को इतना मानती है तो उनके बेटे जब पंजिम से टिकट मांगते हैं तो बीजेपी एक ऐसे शख्स को टिकट देती है जिसकी बाहुबली, दबंग वहां पे इमेज है, जिसके ऊपर केसेस की लंबी फहरिस्त है, बजाय इसके जो कि उनका बेटा जिसकी एक क्लीन ही इमेज है, उनके ऊपर कोई इस तरह के केस नहीं है। आपने अपने परिवार वाले को टिकट नहीं दी, कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट को परिवार वाले से ऊपर माना। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको किसने लाया? 2017 में उनको डीडीए चेयरमैन बनाया मनोहर पर्रिकर जी ने। उसके बाद जिस समय वो हमारी पार्टी में आए, 3 साल हमने सरकार चलाई उनको साथ में रखकर, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तब ये बात नहीं कही गई। और आज 3 साल बाद जब चुनाव लड़ने की बात आई तो हमने उत्पल पर्रिकर को टिकट नकारा नहीं। हमने उत्पल को इतना ही कहा कि अभी वहां से वो चुनकर आए हैं तो आपको हम दूसरी सीट देते। 2 सीट हमने ऑफर की, जिसमें से 1 सीट ये बीजेपी लगातार जीतती है। और हमने उनको ये कहा आप यहां से जीत कर आइए, हम आज ही आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल बाद आप पंजिम से लड़िए, आपको पंजिम से हम 5 साल बाद सीट देंगे। अब मुझे लगता है कि जब पार्टी इस प्रकार की बात करती है तो उसको मानना चाहिए था। अगर मनोहर भाई होते तो पक्का मानते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने उत्पल को नहीं नकारा,
उत्पल परिकर ने बीजेपी को नकारा, जिसका मुझे दुख है, क्योंकि हमारी श्रद्धा थी मनोहर भाई के ऊपर, आज भी है। उनका परिवार हमको अपना परिवार लगता है। उस परिवार का हमारे से दूर जाना, इसका दुख है। लेकिन पार्टी किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं चलती है। पार्टी ने पूरे तरीके से उत्पल को राजनीति में लाकर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। पर मैं ये कहना चाहता हूं, चंद लोग जो बरगलाते हुए उसको अपनी राह से भटका रहे हैं और उसकी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। आप गोवा किए बॉर्डर से बाहर निकलो तो बीजेपी कहती वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा हमला यह है कि सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट देखो, कितने केस हैं, किसको देता है अखिलेश टिकट, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटैक पे अटैक। और यहां वैसे ही कैंडिडेट्स को आप टिकट देते, तो ये जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है, क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स माइनस गोवा है? बिल्कुल नहीं है। क्या है, आप एक दो लोगों को देख रहे हो जिनके लीगेसी इश्यूज है, और वो भी कब के 10 साल पुराने हैं। एक दो लोगों को देख रहा, 10 साल पुराने हैं। आप तो इस प्रकार की बात कर रहे हो मानो बीजेपी के 40 में से 35 ये इस प्रकार की केसेस वाले हो। नहीं है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्या करते हो, एक चीज को पकड़कर जनरलाइज करते हो। ये जरूर है कि हमने गोवा में अपवाद किया है, हमने हस्बैंड वाइफ को भी टिकट दिया है, लेकिन ये लीगेसी इशू है गोवा में। अगर ऐसा नहीं होता, तो बदलने की बात करते हैं ना मोदी जी की, नया इंडिया बनाएंगे। हाँ, तो लेगेसी इशू का हवाला देके कौन सा नया इंडिया बनाओगे? आप समझ लीजिए, वो चुनकर आए थे, नया नहीं तैयार किया। हमारे श्रीपाद भाऊ नाइक जो हमारे नेता है, मनोहर भाई के बाद बड़े नेता हमारे श्रीपाद भाऊ नाइक है, उनका बेटा ये जिला पंचायत का सदस्य था, चुनकर आ सकता था, उसने टिकट मांगी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी और ये बताया कि हम अब नई लीगेसी तैयार नहीं करेंगे, इस प्रकार से परिवारवाद नहीं चलेगा। उन्होंने भी मान्य किया और वो पार्टी का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी है, ये डिफरेंस है। सर, पर 25% जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो तो आपके कांग्रेस से इंपोर्टेड हैं, तो वो लोग मजाक कर रहे हैं गोवा में कि वोट फॉर बीजेपी फॉर योर ओल्ड कांग्रेस एमएलए। ऐसा है कि हम लोगों को कांग्रेसियों का बीजेपीकरण करना है। ठीक है, कांग्रेस में कोई व्यक्ति था इसलिए बुरा नहीं होता है, उसके विचार बदल रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं होगा भाई साहब, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। 25%, 25 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, पर चलिए आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 25%, तो 25% लोग हमारी 10 तो है ना, वो 25 हो गया। वो उनको थोड़ी दिया है 10 को, जो 10 आए थे उनको थोड़ी दिया है, उनमें से तो 6-7 ही है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो कोई बीजेपी को कांग्रेस नहीं बना सकते। हाँ, ये जरूर है। देखिए, मैं वापस कहना चाहता हूं कि पिछले समय एक गवर्नमेंट स्टेबल करने के लिए जब ये 10 लोगों का ग्रुप आया तो हमने उनको लिया, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अब उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपको लिया, सरकार चले, अब आप चले जाइए। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि उनको ही बीजेपी के नीति नियम सिखाए और उनको भाजपा बनाए हमने। वो जो कांग्रेसियों वाला काम कर रहे हैं बीजेपी में बैठ के, वो नहीं, कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसको वापस भेज देंगे। तो अभी तो भेजा नहीं आपने? नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। ये बात सही नहीं है, आपको भी मालूम? नहीं, आपको भी मालूम है ये सही है। नहीं, आपके पास उदाहरण होता, नहीं तो आपको तो मैं इतने दिनों से जानता हूँ, कोई उदाहरण होता तो आप मेरे मुंह पे फेंक देते, लेकिन आपने नहीं फेंका, इसका मतलब आपको नहीं मालूम है, आप तो गेस वर्क कर रहे हैं। नहीं, मैं गेस वर्क नहीं कर रहा हूँ। उसकी हकीकत यह है कि करप्शन का चार्ज प्रूव होना चाहिए। देखिए, बज से या परसेप्शन से एक इमेज बनती है और कई दफा वो सही भी होती है। पॉलिटिक्स में ऐसे इमेज कभी गलत नहीं बनती है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है इसलिए सिर्फ कह देना वो शोभा भी नहीं देता और वो ठीक भी नहीं होगा। नहीं, वो तो मेरा भी कहना वही है। देखिए, हमारे 10 साल में ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, लेकिन जब हमने आरोप लगाए, या मनोहर भाई, जब समझ लीजिए आखिरी सरकार 2007 से 2012 की, जब मनोहर भाई कांग्रेस के ऊपर रोज आरोप लगाते थे तो उसका एविडेंस देते थे और वो सच निकलता था और रोज कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता था। यहाँ पर तो आरोप लगा देते, कोई एविडेंस देते नहीं, इसलिए वो आरोप टिकते नहीं है, वो लोगों में भी नीचे तक जाते नहीं है। एक और एस्पेक्ट इस इलेक्शन का ये है कि जब पर्रिकर जी थे तो बीजेपी के साथ कैथलिक्स भी जुड़े, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जुड़ी, कैंडिडेट्स भी थे, उन कैंडिडेट्स को क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट पड़ा। अब आप जब बात करते हो लोगों से जो कि कैथलिक कम्युनिटी से आते हैं,
वो कहते हैं कि नहीं, इस दफा हमने मन बना लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। हाँ, वो पर्रिकर जी के टाइम पे था, लेकिन अब नहीं देंगे वोट। तो इससे कितना लॉस होगा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। देखिए, बीजेपी ने 12 कैथलिक उम्मीदवार दिए, 12। ये आज तक के बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर है। और बीजेपी ये बिलीव करती है कि हम गोवा में गोवंश के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। 10 साल की बीजेपी की सरकार में एक भी माइनॉरिटी के ऊपर ऐसा डिसीजन हमने नहीं थोपा कि जिसके कारण माइनॉरिटी को लेफ्ट आउट लगे। कोई भी भेदभाव यहां नहीं हुआ। जितनी योजनाएं बीजेपी की सामाजिक सुरक्षा की चली, हमने सबके लिए योजना तैयार की। महिलाओं की योजना सभी महिलाओं को मिली, सीनियर सिटीजन्स की योजना सभी सीनियर सिटीजन्स को मिली। कोई भेदभाव हमने नहीं किया। देखिए, हमारा सीधा कहना यह है, हम अपीजमेंट नहीं करेंगे, पॉलिसी ऑफ नो अपीजमेंट, बट सबके लिए न्याय है। और 10 साल में बीजेपी ने दिखाया है। इसलिए ये जो सारी पार्टियां, कांग्रेस है, तृणमूल है, आप है, ये कैथलिक्स के वोट या माइनॉरिटी के वोट के शेयर के लिए जो झगड़ा कर रही है, और इनको लगता है कि हम सब मिलकर बीजेपी को कॉर्नर करेंगे और माइनॉरिटी का कोई उनको वोट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, मेजॉरिटी तो वोट करेगी ही करेगी, हिंदू तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी भी बीजेपी को वोट करेगी। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस दफा गोवा के चुनाव में एंटर किए हैं। आपके हिसाब से इन दोनों पार्टियों के प्रवेश से गोवा के, जो कि वैसे ही सीटें छोटी हैं, नंबर ऑफ वोटर्स कम है, मार्जिन बहुत कम रहता है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया आंकलन कर पाना भी कि कौन सी सीट कहां जा रही है। एक ने कहीं यहां छीका, थोड़ा वो वहां चेंज हो गया, थोड़ा यहां पे छीका, थोड़ा यहां चेंज हो गया। आप किसको ज्यादा खतरा मानते हैं, आपको कि टीएमसी को? हम दोनों को खतरा नहीं मानते, क्योंकि इनसे बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, इनसे गोवा को खतरा है। ये गोवा के लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? जिस प्रकार से टीएमसी यहां आई, जिस एग्रेशन के साथ आई, ये गोवा को पसंद नहीं है। गोवा एग्रेसिव स्टेट नहीं है। यहां पर लोग शांति के साथ जीना चाहते हैं, शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये एग्रेशन से उनके आने के बाद वो ऊपर गए और नीचे आए। और यहां पर तो विशेष रूप से बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई और जिस प्रकार से हिंदुओं को वहां टारगेट किया गया और ममता दीदी देखती रही, इसका एक बहुत असर यहां पर है। लोगों को लगता है कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट करते समय हिंदुओं का विरोध करने वाली पार्टी है। और इसीलिए गोवा की अपनी पार्टी एमजी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो एक तुलना में राइट विंग पार्टी मानी जाती है, ये पार्टी जब उनके साथ गई तो इस पार्टी को भी उनके लोगों ने नकारा। और उनके यहां से लोग टूट टूट कर हमारे साथ आए कि एक ऐसी पार्टी के साथ हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है कि जो पार्टी ये अपीजमेंट करती है, हिंदुओं का विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की जहां तक हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ये गोवा को प्रयोग भूमि बनाना चाहती है, लेकिन वो जो नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं, हमारे मनोहर भाई ने बहुत पहले वो स्कीम्स यहाँ पर लागू कर दी है। या महिलाओं को पेंशन मिलता है, या सीनियर सिटीजन्स को पेंशन मिलता है, या विधवाओं को पेंशन मिलता है, या बच्चों को मदद मिलती है, या पढ़ाई के लिए मदद मिलती है। हमारे पानी एक्चुअली एक लिमिट तक यहाँ पर फ्री मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये हेल्थ बेनिफिट 4 लाख तक सबको फ्री मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आम आदमी पार्टी यहाँ कर अनाउंस करती है, गोवा के लोगों को लगता है कि भाई ये तो हमको मिला ही हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लड़ाई किससे मानते हैं? आपके हिसाब से कांग्रेस से ही लड़ाई है, या आपको लगता है कि आप भी फैक्टर बन गया है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि एक सिंगल पोल है बीजेपी। कहीं कांग्रेस से लड़ रहा है, ज्यादा जगह पर कांग्रेस से लड़ रहा है, कुछ जगह पर आप से लड़ रहा है, कुछ जगह तृणमूल से लड़ रहा है, और एक 3-4 सीटों पर एमजी के साथ भी हमारी लड़ाई है। एक सीट में गोवा फॉरवर्ड है। नहीं, तो अब सवाल यह है कि जैसे गोवा फॉरवर्ड है, या फिर आप है, या कांग्रेस है, अगर हंग असेंबली आ गई, फंस गया चुनाव जैसे पिछली बार फंसा था, इस दफा तो ये आ नहीं पाएंगे आपके पास। वैसे कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आना मुश्किल है। नहीं, हमको तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, इस बार लोग कोई हंग असेंबली नहीं रखेंगे, हमको पूरे तरीके से चुनकर देंगे। देखिए, पिछले बार तो हम पॉलिटिकल अर्थमेटिक में हारे, क्योंकि आप पिछले बार के वोट्स देखेंगे
तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली। तो अब हमारे ध्यान में आया है कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक कहां पर गलत होता है, हम उसको ठीक कर चुके हैं। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि भाई जहां पे जो दिखे, उसकी जो सोच हो, जो आइडियोलॉजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेके आ जाओ, बस जीतना है, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। ना ना, आप ही ने बोल दिया 75%, आपने मान्य किया कि 75% हमारे हैं। कैसे? आपने कहा ना 25% बाहर से आए हैं, तो इसका मतलब 25 तो कांग्रेस है। नहीं, और कहां से आने वाले? ठीक है, तो 75% हमारे, ये तो आपने मान्य किया है। और जो 25% आप जिनकी बात कर रहे हो, 25 नहीं है, वो तो 3 साल 4 साल पहले आए हुए। 1-2 लोग ऐसे हैं कि जो चुनाव के मुंह पर हमने लिए हुए। नहीं, और ऐसे भी तो हैं जो आपको छोड़ के चले गए, और जब उनसे पूछा गया, खासतौर से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां में घुटन हो रही थी, हम वहां पे सेफ फील नहीं कर रहे थे। बीजेपी क्रिश्चियंस के लिए सेफ पार्टी नहीं है। देखिए, एक हमारे मंत्री है माइकल लोबो, जो हमारे से टूटकर चले गए, आखिरी दिन तक मिनिस्टर रहे, आखिरी दिन तक। जिस दिन नोटिफिकेशन निकला, उसके दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मंत्री रहते हुए घुटन नहीं हो रही थी, बड़ा मजा आ रहा था मंत्री बनकर। और जैसे ही ध्यान में आया कि एंटी इनकम्बेंसी काफी है और कांग्रेस वहां जीत सकती है, तो तुरंत कांग्रेस में चले गए। और हमसे मांग की थी, मुझे भी दीजिए, मेरी वाइफ को भी दीजिए। हमने कहा हम नई लीगेसी तैयार नहीं कर सकते, दोनों को नहीं दे सकते। कांग्रेस ने कहा दोनों को देंगे, तो चले गए। तो ये जो घुटन वाली बात है ना, ये कोई घुटन उटन नहीं है जी। जब तक सत्ता भोग सकते थे, आखिरी मिनट तक सत्ता भोगी, और फिर ये बड़ी बड़ी बातें घुटन की करते हैं। ये कोई घुटन उटन नहीं है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। आपको मौका लग रहा है थोड़ा सा समुद्र किनारे बीच में, या सिर्फ काम से ही फोकस अभी चल रहा है? अभी तक तो पूरा काम पे ही फोकस है, लेकिन अब हम भी तो मुंबई वाले हैं ना, मतलब वैसे तो महाराष्ट्र वाले हैं, नागपुर का हूँ, लेकिन मुंबई में रहता हूँ। तो समंदर हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन यहाँ का समंदर बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोवा एक बहुत अच्छी जगह है। मतलब समझ लीजिए, आप हॉलीडेइंग भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको एक सुकून है यहाँ पर। अच्छी जगह है, लेकिन पॉलिटिक्स इसकी बहुत खराब है। ऐसी रहेगी या आपकी कोई प्लान है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इसकी पॉलिटिक्स को क्लीन करना? बिल्कुल, ये क्लीन अप होगा, ये सुधरेगा, यहाँ की पॉलिटिक्स बदलेगी और हम बदलेंगे। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। बिग इलेक्शन, बिग चैलेंज फॉर यू आल्सो। या श्योर, बिग चैलेंज। अगर आप जीते तो लोग बोलेंगे कि जिता दिया, फंस गई तो फिर देखिए, यहाँ वहां से लाने पड़ेंगे। ना, हमारा तो सीधा हिसाब है, जीतेंगे तो यहाँ की बीजेपी के कारण, हारेंगे तो हमारी कमियों के कारण। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Hello and welcome to the grand finale of the India Today Goa Roundtable, coming to you from the shores of the Arabian Sea here in the lovely city, the capital city of Goa, Panjim. Now the 2022 elections have one potential X factor, because whether it is Punjab, whether it is Uttarakhand or indeed here in Goa, the Aam Aadmi Party's performance will be closely watched in this election. Where does the Aam Aadmi Party stand in the 2022 elections in Goa and beyond? With me is my colleague Preeti Chaudhary, and we have two of the men of the moment. Amit Palekar is the Chief Ministerial candidate here in Goa of the Aam Aadmi Party, lawyer, activist, and we have the Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party Chief, Arvind Kejriwal, who's for the last few days been here in Goa, which clearly means that the AAP is sensing opportunity here. So let me start, Arvind, by asking you the big question. Would I be right in saying that for the Aam Aadmi Party, you want to be king in Punjab, you want to be a spoiler in Uttarakhand, and you are hoping that in the 40-seat Goa Assembly, you will be the kingmaker? Is that the goal of the Aam Aadmi Party in this 2022 election? राजदीप, चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है. हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि 7 साल दिल्ली में शासन करने के बाद सबसे पहले हमने देश की सबसे ईमानदार सरकार दी है दिल्ली के अंदर. लोगों को लगता नहीं था कि सरकारें भी ईमानदार हो सकती है. हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए. लोगों को लगता नहीं था कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं. हमने सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए. लोगों को लगता नहीं था सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं. हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी, जो कि पहली बार देश के किसी भी हिस्से में हो रहा है. हमने सड़कें ठीक की, पानी देना शुरू किया, बहुत सारे काम किए हैं. पूरे देश को हमने एक उम्मीद दी है कि हो तो सकता है. 70 साल इन लोगों ने हमारे को बर्बाद किया. ये उम्मीद बहुत बड़ी है. ये उम्मीद चारों तरफ जैसे जैसे फैलेगी तो लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो मौजूदा पार्टियां उसको ठीक कर दें और नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी को लोग खुद ब खुद बुलाएंगे. नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था. मैंने कहा कि किंग, क्या आप किंग बनना चाहते हैं पंजाब में, कंटेंडर फॉर पावर, गोवा में किंग मेकर और उत्तराखंड में एक तरह से एक तीसरी शक्ति? हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो चुनाव जीतना चाहते हैं. जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं हम तो चाहेंगे कि जनता हमें पूर्ण बहुमत दे, और पूर्ण बहुमत की अगर हम सरकार बनाएंगे, हम तो हर जगह लोगों को कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ने हमें एक मौका दिया था, उसके बाद 2 चुनाव जीत गए हम लोग, 3 चुनाव जीते दिल्ली में. गोवा के लोग हमें एक मौका दे दें, उसके बाद सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी. उत्तराखंड के लोग हमें एक मौका दे दें, दूसरी पार्टियों को लोग वोट करना बंद कर देंगे. मैं प्रीति विल टेक ओवर इन अ मोमेंट, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यही बात आपने 5 साल पहले गोवा में की थी. यू हैड सेड दिस 5 years ago, गिव अस वन चांस. People of Goa did not give you the chance. In fact, you did not win a single seat. You lost your deposits in Goa. Why this time do you feel that things could be any different? 2017 में जब हम आए थे दिल्ली में, हमें 2 ही साल हुए थे काम करते हुए. आज 7 साल हो गए. 7 साल में लोगों ने जो दिल्ली की गवर्नेंस है वो देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है. आपको यकीन नहीं होगा, गोवा के इंटीरियर्स में भी आप चले जाइए. मैं तो गोवा में इन दिनों में बहुत घूमा हूं. इंटीरियर्स में चले जाइए, किसी से बात कर लीजिए, वो कहेगा सर दिल्ली में आपने स्कूल बड़े, 3 चीजें कहते हैं लोग. दिल्ली में आपने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, गोवा में भी कर देना. दिल्ली में आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, गोवा में भी कर देना. दिल्ली में आपने बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, गोवा में भी कर देना. गांव गांव, शहर शहर, कोने कोने तक ये बात पहुंच चुकी है. दिल्ली के 7 साल की गवर्नेंस की जो दिल्ली का काम है, वो ये हवा आपने दिल्ली में नहीं दी. लुक एट द लवली एयर ऑफ गोवा एंड लुक एट द पोल्यूशन, अरविंद जी, इन दिल्ली. यू नीड टू गिव अस बेटर एयर, क्लीनर एयर. व्हाट अबाउट लुकिंग एट दैट? सब होएगा. शांति रखिए, अभी 7 साल हुए हैं. अरविंद, आप खुद बोला आपने गोवा बहुत घूमा है. यू हैव बीन रिलेंटलेसली कैंपेनिंग इन गोवा. यू हैव बीन रिलेंटलेसली कैंपेनिंग ऑल्सो, वेयर यू हैव सेड, आई विल कोट योर प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday, that every vote for the Congress is a vote for the BJP. I want to ask you a very clear question, Arvind, on that. When Rajdeep talked about you possibly being the kingmaker in Goa, if it comes to that, if it does, if you do not get full majority,
Will you शुभ ally? शुभ 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 बोलिए यार, सर मेरा जर्नलिस्ट का काम है। जनता के ऊपर भरोसा रखिए, चलिए, काश जनता आपको- पूर्ण मेजॉरिटी देगी। चल सर, अगर नहीं आई, अगर आपको एक ऑप्शन हुआ अगर end आ में- गई तो सर आ गई तो जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा है, फिर तब बात करेंगे ना। 11 तारीख को एक इंटरव्यू आपके साथ और करेंगे। अगर नहीं आई तो तभी बताएंगे क्या ऑप्शन है क्या। अच्छा एक चीज बताइए, मैं जानता हूं आप ये पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे क्या। जी, आपको ये कैसे भरोसा है कि कांग्रेस वाले कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे? जब तक मैं और आप चुनाव के नतीजे देख रहे होंगे, वो सारे बीजेपी में जा चुके होंगे तब तक। जैसी गोवा की पॉलिटिक्स है अरविंद जी, हमें कैसे पता कि आपके लोग ना जाएं कांग्रेस में? नहीं जाएंगे, भरोसा रखिए, अभी तक नहीं गए। जब हमारी दिल्ली में पिछली बार सरकार थी, हम पंजाब चुनाव जब वापस हार के गए थे, अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की थी हमारे लोगों को तोड़ने की। चारों तरफ 21 एमएलए तो इनके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बुला बुला के बिठा बिठा के पत्रकारों को, आप ही सब लोगों को वो बता, 21 तो देखो इनके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतने हमारे टच में हैं, इतने हम खरीद लेंगे और सरकार गिर जाएगी। मतलब कई बार तो जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते थे, हमारी 67 सीट थी, उनकी 3 सीट थी, फिर भी कई बार डर रहे यार, पता नहीं ये लोग क्या क्या You be open to an alliance though, if possible? But how are you so sure? How can you guarantee on behalf of Congress that all of them will stay in Congress? No, 1 minute. Yesterday, you got all your candidates to sign on an affidavit saying that they will not defect. The Congress has taken their candidates to a temple, a dargah, and a church to swear on God that they will not change. That means you are also not sure whether your winning candidates will switch sides. They are also not sure whether their candidates will switch sides. हम sure. Goa is not Delhi. This is very different, Mr. Kejriwal. हम तो श्योर हैं। Then why सुनो make तो them sign? सही यार, सुनो Sorry. तो लो। राजदीप आपको सुनने की आदत नहीं है अपने इंटरव्यूज में। बताइए। हम तो श्योर हैं, लेकिन गोवा की पॉलिटिक्स आज तक इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता यही सवाल पूछती है जो आप पूछ रहे हैं। जनता कहती है, आर यू श्योर कि आपके लोग छोड़ के नहीं जाएंगे? आर यू श्योर कि? तो हमने कहा ठीक है, हमने एफिडेविट साइन कराए सबसे और जनता को दे दिए। जनता के घर घर में बांट रहे हैं वो एफिडेविट की कॉपी कि अगर कोई आपका एमएलए छोड़ के जाए तो आप उसको प्रोसिक्यूट कर देना, चीटिंग, फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट ऑन ओथ एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जनता अब उनको सीधा कर देगी। अब जनता को भरोसा है। और जो कांग्रेस वाले मंदिर में लेके गए, मस्जिद में, दरगाह में और चर्च में लेके गए, मुझे पता चला कि वहां जाके सब लोगों ने हाथ जोड़े, आंख बंद कर ली, पता नहीं क्या बोला उन्होंने मन में। किसी को नहीं पता क्या कसम खाई है उन्होंने कि मैं तो पक्का जाऊंगा या जाऊंगा नहीं, क्या कसम खाएगा। अरविंद, आपके साथ अमित बैठे हैं, आपके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं गोवा के लिए। एक चीज बताइए अरविंद, पंजाब में तो आपने जनता से पूछा कि आप बताओ सीएम कैंडिडेट क्या होगा, गोवा की जनता से नहीं पूछा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्ट्रेटजी है। अमित, चलिए मैं फिर ये आपसे ही पूछती हूँ, ये स्ट्रैटेजी है तो आपको किसका रिवॉर्ड मिल रहा है अमित, कि आपने एक एक्टिविस्ट रहे हैं? मैं बताता हूँ हमने इनको क्यों चूज किया। अमित पालेकर पढ़े लिखे आदमी हैं, गोवा के बहुत फेमस एडवोकेट हैं, कट्टर ईमानदार आदमी हैं और गोवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अभी दिसंबर के महीने में ओल्ड गोवा में कोई इशू हुआ था कल्चरल हेरिटेज का, इन्होंने आमरण अनशन किया था, 5 दिन तक भूखे रहे थे। इनकी बेटी से मैंने बात की, इनकी वाइफ से मैंने बात की, दोनों रो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कीटोन लेवल्स बढ़ रहे हैं, इनकी जान जा सकती है। मेरे को ये बताओ, आज गोवा की पॉलिटिक्स में एक आदमी बता दो जो 24 घंटे के लिए फास्ट कर ले अपने लोगों के लिए। नंबर 1, कोरोना के समय में जब जीएमसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आपको याद होगा एक रात ऐसी थी जब ऑक्सीजन खत्म हो गई और कई लोगों की मौत हुई थी। ही इज द मैन हु वेंट टू हाई कोर्ट एंड फाइल्ड अ पीआईएल, और इनकी इंटरफेरेंस की वजह से ही फॉर्म्ड अ सिटीजन्स ग्रुप। अभी मुझे कई पत्रकार बता रहे थे, इन्होंने सिटीजन्स ग्रुप बनाया और इनके पास फोन आते थे लोगों के कि हमें ये नहीं है, ये अपने सारे रिसोर्सेज फोन कर करके, अथॉरिटीज को फोन कर करके लोगों को ऑक्सीजन दिलाते थे। रोटरी के साथ मिलकर इन्होंने 200 बेड्स जीएमसी के अंदर बढ़वाए थे, गोवा मेडिकल कॉलेज। भंडारी समाज के हैं, उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें? बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं बताता हूं। आप तो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते ही नहीं है अरविंद। वो खेलते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, मैं बताता हूं क्यों। भंडारी समाज गोवा के अंदर सबसे बड़ा समाज, मतलब न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा लोग हैं वो, 35% ऑफ गोवा इज भंडारी समाज। पिछले 60 साल में
भंडारी समाज से एक भी सीएम नहीं हुआ. एक सीएम रवि नायक हुए थे ढाई साल के लिए, केवल फुल टर्म भी नहीं किया उन्होंने. इन दोनों पार्टियों का प्राइवेट में इनके साथ बैठ जाओ, इनका कहना है कि भंडारी समाज का आदमी सीएम नहीं बन सकता, सीएम बनने के लायक नहीं है. ये कास्टिज्म है, ये गलत है. भंडारी समाज ने गोवा की तरक्की के लिए हर चीज में कंट्रीब्यूट किया है. उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, पायलट बनते हैं, हर कुछ बनते हैं. सीएम क्यों नहीं बन सकते? अभी बीजेपी में श्रीपद नायक सीएम क्यों नहीं बन सकते? इतने फेमस नेता हैं. उनके बेटे को भी टिकट नहीं दी, उनको भी इंसल्ट किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने. हमने कहा हम इस इनजस्टिस को दूर करेंगे. हमने अमित पालेकर जो कि गोवा का हीरा है, उनको हमने टिकट दिया. ये भंडारी समाज से हैं. भंडारी समाज के अंदर जो गुस्सा है, जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है, उसको दूर करने के लिए. पर एक बार सीएम बनने के बाद ये सबके लिए काम करेंगे. भंडारी समाज के लिए भी काम करेंगे, ओबीसी के लिए भी काम करेंगे, ब्राह्मणों के लिए भी काम करेंगे, दलितों के लिए भी काम करेंगे, एसटी के लिए भी काम करेंगे, कैथोलिक्स के लिए भी काम करेंगे, मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे, सिखों के लिए, सबके लिए काम करेंगे. I want to, since he's praising you so much, Amit, two issues. One headline which has come is that you own a Maserati car, which in Goa has already created a buzz. You know that this Aam Aadmi candidate owns a Maserati, and that has suggested, is Amit Palekar really an Aam Aadmi? See, Aam Aadmi doesn't mean that he should not own swanky cars. By the way, it's sold. You've sold your Maserati. It's just a bit. You waiting sold to it be after transferred. joining the Aam Aadmi much or before? Much before that. But my journey from the time from my government primary school to being the masters in intellectual property rights and constitutional law, it's been an amazing journey. My father was a teacher. My father taught us the principles of being honest. My journey from my first motorcycle, which I bought half with my money and half with father's money, I still remember those days. What's wrong? What's wrong in owning a swanky car? What's wrong that an Aam Aadmi who was riding that bike, Splendor, I still remember. It's still there. It's with me. I don't remember my roots. I mean, I don't forget my roots. I know where my roots belong. I have a connect with my school. I go there often. I check out with the students who can't afford. That's an Aam Aadmi. I don't think it should matter that I drive a Merc. I'm content. I'm happy. I at least won't rob. No, I'm very happy that people... You see the development that happens. I am very happy if Goans own a Maserati based on their hard-earned money. Nothing wrong with Absolutely. that. I have slogged for 22 years. From morning till night, I slog. Even when my daughter was born, I used to spend 2 hours in between so that I could come back to my office. So I don't think anyone should have complained. इन्होंने गोवा को लूट के कार नहीं कमाई. इन्होंने अपनी मेहनत करके खून पसीना बहा के कार कमाई है. The second question is, which has been raised when you became the Aam Aadmi party's face, is that Amit Palekar has appeared for a number of criminals. Those who have been involved in land grab, you've taken up their cases, and that Amit Palekar was very close to the BJP's Pramod Sawant at one time. He has suddenly switched to the AAP. How do you respond? My professional career as a lawyer, I have done my best. I have done the best for all these politicians also. They are in different parties right now. They are in Congress, they are in BJP, they are in Goa Forward, they are in every party. My professional career should not be mixed up with my political journey. I can assure one thing is that I have a willingness, I have a vision for Goa. I know where I have risen from the place where I was to where I am. And I know my roots. So I don't think anybody should have doubts about what I did as a professional. Of course, I've been one of the best criminal lawyers. I take pride in that. Okay. Amit, I'll ask you one more question. You know, there's nothing wrong in being a lawyer because you do your job as the best that you can. But my question is, you talk about your activism days. You talk about how deeply entrenched you were. Very seldom we hear you talk about the political legacy of your mother. You're seen more as an activist, but I haven't heard so much about your mother's political career. My mom has been had been very deeply rooted to the people of Santa Cruz constituency. Even though she had been associated with BJP, she never forgot the fact that she has to work for those people. And that's why she left the party. Because she cannot relate to the party that is BJP today. You see the journey of BJP for last 10 years. What have you seen other than corruption? It angers me as a Goan. You know, I mean, when you look, you look forward to a party which had principles with them, and then you look at the party which gives tickets to scamsters, which indulges in scams. You have a job scam, you have PWD scam, you have infrastructure scam, you have
you know, when people were dying during COVID, I was in GMC. I used to look after the patients, and we had scared. I mean, all of us were scared. And at that point of time, they were indulging in ivermectin scam, ventilator scam, oxygen scam. I mean, what can you look up to that party? Can my mom look up to that party, which was 25 years before the plant that the seed that they sowed, and then the cactus that it has become today? Right. It pokes every Goan. Very interesting that you seem to suggest there's a new BJP which is very different to the old BJP. But Arvind Kejriwal, for Goa, you started at the outset today by saying the Delhi model is what you're taking to these different states. You unveiled a 13-point program for Goa. It includes free power up to 300 units. It includes an unemployment allowance that you promised to those who are unemployed. You promised 1,000 rupees to the women of households. People are asking, all these promises that you're making will cost a fair amount to the exchequer in Goa. This is a state with almost a 20,000 crore debt as we stand today. All these promises, you have even promised that you will restore mining. Mining is at the end of the day in the hands of the Supreme Court to restore. Is Arvind Kejriwal making these promises because you think that promises sell? Or do you actually believe that all of this can be done in a state with a 20,000 crore debt? पहली चीज़ तो हम जो कहते हैं हम करते हैं. दिल्ली में हमने जो कुछ कहा हमने किया. इसीलिए दिल्ली के लोग तीसरी बार हमें थंपिंग मेजॉरिटी से वोट दे रहे हैं कि ये लोग जो कहते हैं करते हैं. एक एक चीज़ कहने के पहले हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं. आपका प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आएगा. 20,000 नहीं, गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का डेट है. मैं आपसे पूछता हूँ ये पैसा कहाँ गया. पिछले 25 साल में मैंने बहुत रिसर्च की है. पिछले कुछ दिनों में पिछले 25 साल में गोवा में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी. ये गोवा का 23,000 करोड़ 24,000 करोड़ का डेट हो कैसे गया. इन्होंने जब काम ही कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ. ये गया इनकी जेब में, इनके स्विस बैंकों में. आज सुबह गोवा का एक बच्चा मिला मुझे, कहता सर एक ही काम कीजिए, ये जो ऊपर के हमारे गोवा के 4-5 नेता हैं ना, इनसे ये पूछ लीजिए कि हर आदमी ये बता दे कि तेरी टोटल संपत्ति कितनी है, ये बता दे कैलकुलेट करके. कहता है इनको ही नहीं पता कि अब इनकी कितनी संपत्ति है, न्यूजीलैंड में कितनी है, स्विट्जरलैंड में कितनी है, स्विस बैंक में कितनी है, यूएसए में. इतना पैसा कमा रखा है इन लोगों ने, इतना पैसा कमा रखा है इन लोगों ने. ये 23,000 24,000 करोड़ इनकी जेब में गया है. जिस दिन ईमानदार सरकार आएगी, ये पैसा स्विस बैंक में जो जा रहा है उसकी दिशा बदलेंगे. ये पैसा जनता की तरफ जाने लगेगा, जनता का पैसा जनता पे खर्च होने लगेगा. महिलाओं को 1,000 रुपए भी मिलेंगे, बिजली भी फ्री होगी, 24 घंटे बिजली भी आएगी, स्कूल भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे. सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है. I know you say that, but even an unemployment allowance? Sure. A 5,000 rupee unemployment allowance? 5,000 rupees for each family of tourism and mining department, and 3,000 rupees unemployment. You will give that from the very first month if you were to come to power in a state like Goa? We will do that. This is not a, you see, because the one charge which has always been made is that Mr. Kejriwal makes these promises. This is populism. It doesn't work on the ground. जैसे कौन सा दिल्ली में हमने कौन सा प्रॉमिस किया जो नहीं किया. So Rajdeep Sardesai makes statements which has no basis. No. ये दूसरा पकड़ा गया हो गया. पहले आपने कहा कि हम बड़ी गाड़ी वालों को चोर कहते थे, वो झूठ बोला आपने. अब आपने कहा कि पीपल से कि केजरीवाल मेक्स प्रोमिसेस which he doesn't deliver. मेरे को एक प्रॉमिस बता दो which I haven't delivered. I have delivered the promises. I just heard from the audience as well, but I was about to ask you. Cleaning of the Yamuna River मैंने साफ-साफ बोला है. 2025 का चुनाव जो अगला चुनाव है उसके पहले अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं, मेरे को वोट मत देना अगली बार. Arvind, the margins in most constituencies in Goa are very slim, very, very thin. You've also said that many a times. Now, that's possibly the reason a party like yours, the Aam Aadmi Party, the TMC, have muddied the waters further because the margins are thin. You've always praised... We are not here to muddy the water, we are to clean the water. चलिए. मड्डी तो इन्होंने पहले से कर रखा था, हम सफाई करने आए हैं झाड़ू लेके. So my question is, Arvind, you've always praised Mamata Banerjee. Mamata Banerjee has always showered praises over you. Should the alliance have not been with the TMC, you both of you coming together, or do you think they
not even a spoiler, they're a non-player. मुझे लगता है उनको वोट नहीं मिलने वाले। देखो, चुनाव के 3 महीने पहले कोई पार्टी आती है और सोचती है अब हम चुनाव लड़ेंगे और सीटें ले जाए, ऐसे होता थोड़ी है। ये तो गोवा के लोगों की एक तरह से इंसल्ट करना है। Non-player. Exactly. No, let me take that further and let's look at the big national picture, because when Preeti asked you the question about, what could happen with a potential post-poll alliance with the Congress, this is a question that is being asked today because in all these 3 states where you are today putting your effort, Uttarakhand, Punjab and in Goa, the Congress was traditionally the main opponent or the main party. And you are accused of being the B team of the BJP. Today, Mr. Randeep Surjewala, Congress spokesperson, held a briefing in Panjim and he said, Mr. Kejriwal, a vote for Mr. Kejriwal is a vote for the BJP. Just as you are today accusing the Congress that their MLAs will switch tomorrow to the BJP. On our stage, he called you Chota Modi. And so I want to understand this. A, who is your enemy number 1? Because in this election, you may have to make a choice finally between the Congress and the BJP. Post-election, hung assembly, who do you go with? And this larger charge, ये जो बड़ा चार्ज है कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं। देखो, इनको कहने दो, ये पता नहीं कब से कह रहे हैं बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है। मैं ये सब इनका नहीं समझता, ये कहते रहे। ये सब मतलब जब कांग्रेस लुट जाती है, पिट जाती है, तो फिर बैठ के रोती है, हाय रे केजरीवाल वोट ले गया रे, हाय रे केजरीवाल वोट ले गया रे। तो उनको रोने दो, उनका काम रोना है। गोवा के लिए ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है। एक तरफ ये सारी पार्टियां हैं जिन्होंने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके नेताओं ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी करप्ट पार्टियां हैं, करप्ट लीडर्स हैं। और दूसरी तरफ एक नई पार्टी आई है विकल्प के रूप में, जो ईमानदार पार्टी है, जिसने दिल्ली में ईमानदार सरकार चलाई 7 साल और जिसने दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो लोग आज आम आदमी पार्टी को एक होप के रूप में, आशा के रूप में देख रहे हैं। ये चुनाव उस आशा का चुनाव है। पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। हु इज योर एनिमी नंबर 1, कांग्रेस या बीजेपी? हमारा एनिमी नंबर 1 इज करप्शन। ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का ये सारे हिस्सा हैं। आपकी नजर में बीजेपी और कांग्रेस अलग हो सकते हैं, गोवा की जनता की नजरों में ये अलग नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, एमजीपी, जीएफपी, फलाना फलाना फलाना, ये सारे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। करप्शन। आज गोवा का, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोगों ने अभी कहा कि आप अरविंद बड़े बड़े प्रोमिसेस कर रहे हैं कि आप बिजली फ्री कर देंगे, आप स्कूल बनवा देंगे, आप हॉस्पिटल। कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया अभी तक गोवा में? बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया? उनके कोई प्रॉमिसेस ही नहीं है, उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी का भी कोई एजेंडा नहीं है गोवा के चुनाव में, कांग्रेस का भी कोई एजेंडा नहीं है गोवा के चुनाव। हमारा एजेंडा तो है, हमने गोवा के बारे में सोचा तो सही। हमने कहा हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे, आपके अस्पताल अच्छे करेंगे, आपको बिजली 24 घंटे देंगे, आपकी सड़कें ठीक करेंगे, आपका पानी ठीक करेंगे। हमने इतना सारा एजेंडा तो दिया। वो तो कह रहे हैं हमें वोट दो, और बीजेपी कह रही है अभी और लूटना बाकी है, कांग्रेस कह रही है इन्होंने लूट लिया, इस बार बारी हमारी है। No, but that is still not an answer. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, कांग्रेस का एजेंडा बता दो क्या है? उन्होंने एक लाइन नहीं बोली अभी तक बीजेपी ने, कांग्रेस ने, दैट व्हाई शुड द पीपल ऑफ गोवा वोट फॉर देम। बीजेपी ने अभी तक एक लाइन नहीं बोली अपने पूरे कैंपेन में, व्हाई शुड द पीपल ऑफ गोवा वोट फॉर बीजेपी। No, I'll tell you, BJP is giving. No, BJP is saying that they are a double engine sarkar, that if you vote for, just a minute, this is the agenda. If you vote for us in Goa, we have we will bring center's resources and build the infrastructure of Goa. The Congress is saying on the other hand that we are the party which has all new faces this time, and therefore we will bring a sense of a newness to Goa. We are also against corruption. कांग्रेस की तो मजबूरी है, सारे पुराने वाले बीजेपी में चले गए तो नए फेस तो लाने ही थे। अब ये नए वाले भी जाएंगे, दे आर रेडी, सारे तैयार बैठे हैं। अरविंद, तो ये एजेंडा है। बीजेपी कांग्रेस कोई कह रही है कि आपकी बिजली ठीक करेंगे, पानी ठीक करेंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, कोई कुछ कह रहा है? और ये जो डबल इंजन सरकार है, एक इंजन उधर जा रहा है, एक इंजन इधर जा रहा है, बीच में गोवा खड़ा है। You still didn't answer while you say your fight is against corruption. Let us assume that there is a hung assembly, as many polls are suggesting, both here. Some are suggesting even in Punjab, but most are suggesting in Goa certainly. You will have to then decide, do you go with the Congress? Is there a possibility Why of what happens? are you assuming that we will not get full majority?
Because Goa has traditionally, in recent times, often given also mixed verdicts. Like in 2017. Delhi also used to traditionally vote only for BJP and Congress, but then Delhi changed its mood. Goa might also change its Arvind, mood. you're running away from this question. Was there an attempt made for a secret understanding with the Congress? आपने अपने मन में एक आंसर सोच लिया कि अरविंद से मुझे ये आंसर निकलवाना है, अरविंद नहीं बोलने वाला. चलिए अरविंद, एनिमीज की बात नहीं करते, दोस्तों की बात करते हैं. ममता आपकी दोस्त रही है. बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. चलिए अरविंद, क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? आप तो अपना डेब्यू 2014 में यूपी में कर चुके हैं, वो कह रही हैं 2024 में वो करेंगी. सही बात, वो कह रही हैं कि 2024 का यूपी से चुनाव लड़ेंगी. बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए. एडवाइस क्या है आपकी? मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा. वो बहुत मेरे से बहुत मैच्योर हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं. मैं उनको क्या एडवाइस, मैं छोटा बच्चा हूँ. पर आप बनारस से लड़े थे 2014 में. कोई बात नहीं, तो अगर मेरे से कुछ पूछेंगी, मेरा एक्सपीरियंस कुछ है, मैं उनको बताऊंगा. No, the thing is somewhere, as I started off, that this 2022 election is also कि कौन बनेगा चैलेंजर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को. कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा चैलेंजर पहले, उसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसमें आप और ममता बनर्जी दोनों कंटेंडर हैं. मैं बाहर हूं, मैं रेस के बाहर हूं. आप रेस के बाहर हैं? मैं रेस में हुई नहीं. अरविंद केजरीवाल, ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल किसी किस्म की, किसी भी प्रधानमंत्री की, किसी भी और किसी रेस में नहीं है. मेरा एक ही मकसद है जिंदगी का, हम देश सुधारना चाहते हैं. हमें पहले लगता था यार कुछ हो नहीं सकता. दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली 24 घंटे हो गई. अब हमें लगता है यार 70 साल इन पॉलिटिशियंस ने बेवकूफ़ बनाया है, ठीक हो तो सकता है. तो या तो ये लोग ठीक कर दें. आज हम गोवा आए हैं, अगर प्रमोद सावंत साहब ने अच्छी सरकार चलाई होती तो मैं गोवा में आके लोगों को बोलता, गोवा के लोग बोलते नहीं जी हम तो खुश हैं प्रमोद सावंत से. आज दिल्ली में कोई पार्टी आ जाए, सारे दिल्ली के लोग कहेंगे नहीं जी केजरीवाल जी से खुश हैं, आप बाहर चलो, बाहर जाओ. गोवा के अंदर अगर हम आते, अगर इन्होंने अच्छी सरकार चलाई तो हमें या तो ये लोग ठीक कर दें, और लोग बुला के नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे. नो बट अरविंद, व्हेन यू कीप सेइंग कि हमने दिल्ली में देखिए क्या किया जो गोवा में नहीं हुआ. एज अमित पालेकर मेंशन्ड 6 months ago during the second wave of COVID, Goa experienced oxygen deaths in the main hospital here. Delhi also experienced it. There were question marks. Why didn't Arvind Kejriwal's government invest more in oxygen plants to ensure that Delhi's oxygen capacity was met? It isn't as if Delhi has been overnight transformed into a सोने की नगरी. आज आपके चैनल के जरिए मैं एक ओपन लोगों को बोल रहा हूं, पंजाब के लोगों को भी, गोवा के लोगों को भी, उत्तराखंड के लोगों को भी. आप लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछ लीजिए क्या वो केजरीवाल सरकार से खुश हैं. अगर वो कहें खुश नहीं है, मेरे को वोट मत देना, और अगर वो कहें खुश हैं तो 10 लोगों के वोट और दिलवा देना. ये मेरे सवाल का आंसर नहीं. ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में भी हुई थी, हमारी बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी. क्राइसिस न्यूयॉर्क में भी हुई थी, वॉशिंगटन में भी हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी, स्विट्जरलैंड में भी हुई थी. ये महामारी थी इतनी बड़ी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी हेल्थ सिस्टम किसी भी शहर का कोरोना जैसी महामारी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता. हमारा भी हेल्थ सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर कि नॉर्मल रूटीन में जब केसेस आते हैं तो उसके लिए डिजाइन किया जाता है. महामारी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको जिस तरह से मैनेज किया दिल्ली ने, उसकी तारीफ सब दिल्ली वाले भी करते हैं और पूरे देश के अंदर उसकी तारीफ हो रही है. अरविंद, आपने पंजाब की बात की. टाइमिंग दे से इन पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग. You announced your chief ministerial face, Bhagwant Mann. In all probability, very soon, we'll have the Congress announce the name, and it seems it's going to be Mr. Channi. Do you think it's something which is going to harm you or work for you in Punjab? नहीं, I don't think. I think अब कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है लोगों का. 5 साल के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने एक के जितने वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए. उन्होंने कहा था हर घर नौकरी देंगे, उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी. उन्होंने कहा था स्मार्टफोन देंगे, उन्होंने स्मार्टफोन नहीं दिए. उन्होंने कहा था कि हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, कृषि लोगों किसानों के लोन माफ़ करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया. फिर उसके बाद चन्नी साहब आए. पहले फिर कांग्रेस ने माना कि 4.5 साल उनका जो सीएम था वो बेकार था, इसीलिए वो चन्नी साहब को ले आए. चन्नी साहब ने जितने फिर ऐलान किए वो सारे ऐलान झूठे निकले. उन्होंने कहा 36,000 नौकरी दे दी,
हमने कहा जी 3 जीरो हटा दो, 36 नौकरी बता दो जो आपने दी। उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं मैंने नौकरी नहीं दी। उन्होंने सारे झूठे। आज पंजाब की जनता कांग्रेस से पूरी तरह से डिसइल्यूजन हो चुकी है, नफरत करती है कांग्रेस को। और जैसा मैंने कहा कि पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए तैयार है। You know, you have a great ability to play down your national ambitions, because you said I am not in this race to become prime minister or a challenger in 2024. Yet the belief is, if you win Punjab, if you become a player in Goa, Uttarakhand, your next target is Gujarat, Himachal Pradesh. Arvind Kejriwal, today you must be honest, in the next 2 years, is the Aam Aadmi Party just happy to be a party of the Delhi model? Or you are looking, you have ambitions, why not be open and say yes? I have the same Arvind Kejriwal who in 2014 could take on Narendra Modi in Varanasi is coming today and saying, I have no national ambitions. राजदीप, मैं यहाँ पे अपना कैरियर बनाने नहीं आया, मैं कैरियर छोड़ के आया हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं था कि पहले एक एमएलए बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, मंत्री बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर प्रधानमंत्री। मेरे जिंदगी में ये, मैंने जैसे कहा कि हम केवल और केवल देश के लिए जीते हैं। आज ये सारी पार्टियों से, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, थोड़ा सा सारी पार्टियों से बोल दो कि वो अच्छा काम करना चालू करें, हम रिटायर हो जाएंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है। सारे अस्पताल ठीक क्यों नहीं करती बीजेपी? मैंने गोवा में आके बोला कि मैं अस्पताल बनाऊंगा आपके लिए, स्कूल बनाऊंगा आपके लिए, सड़क ठीक करूंगा। अमित शाह जी गोवा में आके कहते हैं केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहा है क्योंकि ये तो जीत ही नहीं रहे। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है अस्पताल बनाना, उनके बस की बात नहीं है स्कूल ठीक करना। हम करेंगे ना, हम कह रहे हैं हमने करा है, हम करेंगे, हम देश सुधारेंगे। या तो ये सुधार दे, नहीं तो हम सुधारेंगे। Amit, Arvind has this larger than life, whether he says he's an Aam Aadmi, but the persona that Arvind has is larger than life. For somebody, let's say what Arvind said pehle, कि आपका पूर्ण बहुमत आ रहा है, you're getting full majority and you are the chief minister. How much of an impact will Delhi and an Arvind Kejriwal have on you? There are charges already that it will be remote control from Delhi. एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा पहले जवाब देता हूँ जी। पिछले 3 या 4 महीने में प्रमोद सावंत जी कितनी बार दिल्ली गए? मैंने आज कैलकुलेट किया था, लगभग 25 बार गए। क्यों? कोई भी डिसीजन होता है दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली में डिसीजन होता है। अमित पालेकर पिछले 4 महीने में कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी डिसीजन होता है केजरीवाल यहां आता है। हमारी पार्टी गोवा से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। उनकी दिल्ली वाली पार्टी है, हमारी गोवा वाली पार्टी है। तो आप इनको फुल मैंडेट देंगे? नो इंटरफेरेंस? गोवा के लोग तय करेंगे। अमित पालेकर भी तय नहीं करेगा, केजरीवाल भी तय नहीं करेगा। गोवा के लोग तय करेंगे कि उनके सीएम को क्या काम करना है। Amit? And honestly, it's been for 3 months that I have been with the party. We called all the stakeholders. All the guarantees were given by considering the stakeholders, or our candidates who are contesting, our volunteers, people. Like for every town hall, if you've seen, the people of Goa have been part of it. We have taken up their suggestions, and the guarantees have been given. So, which party has ever considered the leader coming into a state and spending time? We have spent 3 days with each other. We have learnt about so many things that we need to work on. Vision for Goa, for youngsters, for job creation, for simplest thing like getting into the problems of ST community in Goa. Who has talked about it for last 10-15 years? Who has talked about what is the budgetary provision that is there for them and what is the utilization of them that for them? So why are they deprived? So let's connect to the roots. Please understand, the party is such that gives you liberties to think, express your mind, and then think over it, decide together. That's the difference between Aam Aadmi Party and the other parties. That's what I feel. You've spent 3 days. No, you're saying. अभी मुझे पता चला प्रमोद सावंत जी आपके शो में आए थे जी, और उनसे जब पूछा भाई आपने इतने गंदे गंदे कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दिए, तो बोले वो तो अमित शाह और मोदी जी देते हैं। हमारा सीएम कैंडिडेट विल नॉट शर्क ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से कि मैंने दिए हैं ये टिकट। And one more thing, I think before making a slanderous statement that he made on your show, he should have done some study, half-studied chief minister that he is. He made a statement, a very rash statement that I have criminal cases against me, or check his background. He should have read my affidavit. He has also been in Home Minister of State of Goa.
I think this is what he has been doing for during the pandemic also. He had been taking a decision, putting it across to people and then withdrawing it. That's because he doesn't study. He is full of lies. And that's what Goa has seen for last 5 to 10 years with him. With, with the 2.5 or 5, whatever the time that he has spent in Goa as a chief minister. You're saying that you don't have a supremo model, no remote control. Even though the charge against Arvind Kejriwal is that Arvind Kejriwal has converted a volunteer-based force like AAP into a supremo-driven party. This is the new political structure. Arvind Kejriwal decides. There is no place for dissent in the Aam Aadmi Party. Suppose Amit Palekar dissents from a decision that you may want to put. Will you remove him? No, not at all. No question of that. No question of that. It's not a supremo. आप लोग गहरे कुछ भी statements लगाते नहीं ऐरे गहरे नहीं. See, you see, whenever no, but the fact is, Aam Aadmi Party is identified now with your image. He has much more liberty than you have in your organization. Arvind Kejriwal still has the ability to sort of, give as good as he gets. One of the promises, out of the many promises you made in Goa, is an interesting one. If we form a government in Goa, we will arrange free pilgrimage to Ayodhya for Hindus, to Velankani for Christians. For Muslims, we will provide a free trip to Ajmer Sharif and to Shirdi's temple for those who revere Sai Baba. Is Arvind Kejriwal planning that Goans go on this religious darshan? Because one of the criticisms that you had to face also, particularly from the Congress, when they say B team or BJP, कि Arvind Kejriwal wants to practice this politics, they say, of a soft Hindutva. Hindutva light is Arvind Kejriwal. इसमें तो सभी धर्मों का है. बिल्कुल है, मैं मानता हूं, but मैं ये जो कहा जा रहा है कि is this the kind of promise that a politician should make in a secular country to woo the voters कि हम आपको सबको दर्शन देंगे free? दिल्ली में हमने एक इंसान की जितनी बेसिक जरूरतें होती हैं उन सब का ख्याल रखा है. एक आम आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने अच्छी शिक्षा दी, फ्री शिक्षा दी. एक आदमी चाहता है मेरे को अच्छा, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज ठीक हो जाए, हमने उसका इंतजाम किया. एक आम आदमी चाहता है कि मुझे बिजली ठीक मिले, 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी. एक आम आदमी चाहता है कि मुझे पानी ठीक मिले, मेरी सड़कें ठीक हो. एक आम आदमी की आध्यात्म की भी ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है. उस आध्यात्म की ज़रूरत को भी पहली बार कोई सरकार है जो उसके आध्यात्म की ज़रूरत को पूरा कर रही है. दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं. उस योजना के तहत ये सारे भी हैं और 8-7 जगह और हैं, करीब 12 या 13 जगह हैं सभी धर्मों के लिए, जहां पे हम लोगों को ट्रेन से भेजते हैं. एसी ट्रेन से भेजते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, उनका आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री होता है. एक बार अगली बार जब ट्रेन जाए आप उन लोगों से एक बार मिल लेना, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है और जो आशीर्वाद वो लोग देते हैं आप सोच भी नहीं सकते. तो अगर वो किसी को अयोध्या जाके खुशी मिलती है, किसी को वेलंकनी जाके खुशी मिलती है, उनको अगर किसी को अजमेर शरीफ जाके खुशी मिलती है, शिरडी बाबा, द्वारकाधीश, वैष्णो देवी, पुरी, अगर यहाँ जाके खुशी मिलती है तो आपको क्यों तकलीफ है? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है. कांग्रेस पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कांग्रेस वालों को भी सबको अयोध्या जाना चाहिए, अजमेर शरीफ जाना चाहिए. थोड़ा उनके दिल में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी उनके दिल को थोड़ी सी. Arvind, you've mentioned Delhi. Delhi is it's a state city of migrants. It's a metropolitan city. It's very different than the fabric of what Goa comes from. Goa is all embracing to tourists, but it's very wary of outsiders usually. That is what's noticed. Has the TMC made your job a little easier? Have you been accepted because now the TMC is the outsider in this game? TMC हमें क्या वो legitimacy देगी? आपको लगता है कि आपको कम से कम आप इंसाइडर हो गए हैं अभी क्योंकि एक आउटसाइडर पार्टी आ गई है? तो हमेशा पिछले 7 साल से गोवा में काम कर रहे हैं. जब कोरोना हुआ था गोवा, हमने चारों तरफ से डोनेशंस रेज करके गोवा के घर घर में जाके राशन बांटा था. वोट नहीं मांगे थे, राशन बांटा था. ऑक्सीमीटर लेके घर घर गए थे हमारे कार्यकर्ता, इसके बावजूद कि उनको डर था कि उनको कोरोना ना हो जाए. दवाइयाँ लेके घर घर गए थे हमारे कार्यकर्ता. लोग आज भी गोवा के लोग याद करते हैं उसको. उस टाइम बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी की सरकार कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? सब अपने घर में छुप के बैठे हुए थे.
हम गोवा के लोगों के साथ मिलजुल के पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं. So not the outsider anymore. No, and actually I must acknowledge as a Goenkar, because I know that during COVID times, I saw Aam Aadmi Party workers on the ground in Goa. And I think that much as I may criticize some of the changes that have taken place in AAP, I think one has to appreciate when something good is done. But I still want to ask you, Arvind Kejriwal, that one of the things in this Goa election that the BJP is counting on is a division in the opposition vote. While there is a BJP vote and there is an anti-BJP vote which they believe is getting split. If the BJP wins, many believe therefore it will win by default. Have you ever thought of a secret understanding with the Congress? Or is it because you all are fighting in Punjab that you were worried that I cannot have a secret understanding in Goa, Uttarakhand, while there are elections in Punjab where I want to win the election at any cost? इतनी गंदी गंदी बातें क्यों करते हैं? सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद कांग्रेस सोचो, जिंदगी में नहीं सोच सकते यार ये. अरे आपने 2013 में उनके साथ उनका समर्थन लेके सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल जी. हमने समर्थन लिया नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती समर्थन दिया था. उन्होंने चैलेंज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. उन्होंने चैलेंज किया था कि आम आदमी केजरीवाल इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करके गया है, हम उनको बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है अगर वो सरकार बना के करो. फिर मैंने 270 सभाएं करी थी दिल्ली के अंदर. लोगों से पूछा, 270 में से 268 सभाओं में जनता ने कहा समर्थन ले लो और करके दिखाओ. 49 दिन सरकार चली, बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया और बड़े बड़े देश के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था. 2019 में कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी. कोई नहीं थी. But small constituencies. आप इतने बेचैन क्यों हैं हमारी कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग कराने में? नहीं, मैं देख रहा हूं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे. नहीं, मैं कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आते हैं, आप लोग हमें आज तक नहीं बताते हैं. गोवा की जनता जानना चाहती है कि अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में who is your primary opponent, and that is a valid question to ask, whether it is BJP or Congress. It's a valid question today. It will be a valid question on the 10th of March if Goa throws up a hung assembly or Punjab or Uttarakhand. That's all that I'm asking. So what is your question? My question, which you have very cleverly been avoiding, is Arvind Kejriwal open to an understanding with the Congress? If it is not pre-poll, then post-poll. And if it was, did you make an attempt for a pre-poll pact with the Congress? Does Rajdeep Sardesai take a guarantee that none of the Congress MLAs will switch to BJP post-elections? वो बचेंगे क्या उसके बाद? मैं आपसे गारंटी मांग रहा हूं, फिर उसके बाद ही तो जवाब दूंगा. अगर कांग्रेस में कोई बचेगा ही नहीं तो मैं पोस्ट पोल करूंगा किससे? Did you try a pre-poll understanding and they rejected you? No, never. There was no question of that. I'll ask the both of you. Your manifesto, you've made a lot of promises. What is the time delivery on that? Let's say you 5 साल. How quickly will it happen? अलग अलग समय पे अलग अलग होंगे. ऐसे मत कर देना कि 10 को चुनाव और 11 को आके कहीं रोजगार नहीं दिया सबको. जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना. इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए. 5 साल के लिए हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना. हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना. गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है. आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते. मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना. पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था. नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था. चलिए. No, but there are, you see, the thing is that with all politicians, people are skeptical of promises. That's why we are asking these questions. दिल्ली के लोगों को भरोसा हो गया अब कि पहली बार एक पार्टी आई है जो कहती है करती है. Let us ask you in conclusion, and this is to both of you. मेरी भी एक सलाह है आप लोगों को. जी. बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में मत सोचा कीजिए. राजनीति गंदी है. थोड़ा सा जनता के मुद्दों के बारे, जैसे अभी 1 घंटे से इंटरव्यू चल रहा है. जी. आपको ना स्कूलों में इंटरेस्ट है, ना आपको अस्पताल में इंटरेस्ट है, ना देश की समस्याओं में इंटरेस्ट है. आपको इंटरेस्ट है कांग्रेस के साथ करोगे कि नहीं करोगे. अरे नहीं करना यार. अरे जबरदस्ती कर रहे हो आप. You are a very intelligent politician because you are still trying to play the role of an anti-establishment outsider. Because that was your role which gave you a lot of popularity in 2013-14. People believe
अब 9 साल हो गए, अब आप नेता बन गए, अब आप नहीं कह सकते कि मैं केवल करप्शन को फाइट कर रहा हूं. आई लुक फॉरवर्ड टू अ टाइम जिस दिन राजदीप सरदेसाई मेरा इंटरव्यू करेगा और कहेगा कि अरविंद देश के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है. मुझे बहुत खुशी होगी बता के. जिस दिन वो मेरे से पूछेगा कि अरविंद देश के अस्पतालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, मेरे को अब एक्सपीरियंस है अस्पताल ठीक करने का. जिस दिन वो मेरे से पूछेगा कि अरविंद तुम लोगों ने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कैसे कर दी, इट इज़ अ मिरेकल, और फ्री में दे रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होगी बता के. अभी पिछले 1 घंटे से हम बेकार की बातें कर रहे हैं. इससे देश को क्या लेना देना, जनता को कोई लेना देना नहीं है इस इंटरव्यू से. Can I ask you 2 small questions as a result? नहीं, आप ही का इंटरव्यू. In these 9 years, what is the biggest thing therefore that you've learned? Now you are an experienced politician. You will complete a decade. What I have learned is कि 70 साल से इस देश को जानबूझ के गरीब रखा गया है. 70 साल से इस देश को धोखा दिया गया है. स्कूल ठीक हो सकते थे, अस्पताल ठीक हो सकते थे, बिजली 24 घंटे हो सकती थी. हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद कई सारे देश आज़ाद हुए, वो आज डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं. 70 साल के बाद भी आज हम डेवलपिंग कंट्री या गरीब कंट्री हैं. क्यों? हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारी पार्टीज ने हम लोगों को धोखा दिया है. इसे ठीक करना है. उन्होंने करप्शन किया है, स्विस बैंक भरे हैं उन्होंने. ये नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की बात करते हैं कभी कभी. 70 साल से क्या हुआ? 2014 में उनको भारी बहुमत दिया था लोगों ने, आज लोगों को भरोसा नहीं बचा. 2015 में हमें भारी बहुमत दिया था लोगों ने, हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता है. लोगों के ऊपर झूठे केस नहीं किए, ईडी नहीं छोड़ी, इनकम टैक्स नहीं छोड़ा, हमने लोगों को डराया नहीं है, हमने लोगों का दिल जीता है. You know, we are by the banks, we are at the shores of the Arabian Sea. Let's, on a lighter note, end this discussion with 2 small things. What is the best thing that Arvind Kejriwal likes about coming to Goa? The very fact that you are now coming more often than ever before. I am a Goenkar. What is the nicest thing about Goa? The one thing that you feel Delhi should have that Goa has? नहीं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली सबका अपना अपना है. I like the people of Goa. लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत स्वीट हैं, लोग बहुत भोले हैं, लोग बहुत ईमानदार हैं. यहाँ की राजनीति खराब है. Arvind, now that we are ending it, I'll ask you. You've constantly through this thing, you've said that the Aam Aadmi Party is going to get a full majority in Goa. You're very confident of that? We will try our best. गोवा के लोग जो भी आदेश देंगे वो हमारे सर माथे पे. Do you have a number? No, I don't have a number. 2/3 or less? अभी सी वोटर का सर्वे आया था. सी वोटर एक बड़ी एजेंसी मानी जाती है. उनके सर्वे में 29% बीजेपी, 27% आम आदमी पार्टी और 18 या 19% कांग्रेस थी. तो मैं गोवा के लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देने से तो बेकार होगा. हम 2% पीछे हैं बस बीजेपी से. एक जोर का धक्का मार के इसको 35% पहुंचा दो. आप सर्वेस कब से बिलीव करने लग गए? That's why he has become a politician. A clever politician believes the surveys which give him an advantage. उनका सर्वे अच्छा है. I will add to that. I think we have been able to win hearts of Goans. We have reached out to them. We have a chemistry with Goa and Goans. And I think all our candidates, honest that they are, we have been able to touch base with our voters. We know their problems. We have been able to understand that. I think what Goa needs is some development. Nothing else. Goa has people, Goa has resources. It's just that the corrupt system has just put it in shambles. Correct. We need to get that right. We need to clean up Goa. We have a jhadu in our hand. Correct. You have a jhadu in your hand, but you also have something else, and that's why, as I said, we must end on a lighter note. Few people know that Amit is a very good singer. Actually, Goa has music in its blood. ये दिल्ली वालों ने सीखना चाहिए. हम 2 चीजें अच्छा करते हैं अरविंद. हम म्यूजिक बड़ा अच्छा करते हैं and we are good dancers as well. I won't ask you, Arvind. So I'm not asking you to sing or dance. No, एक मिनट. मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गाएंगे और ये नाचेंगे. और आप क्या करेंगे? हम देखेंगे. हम ताली बजाएंगे. नहीं, यही तो दिल्ली वालों की मुसीबत है. बाकियों से काम करवाते हो और खुद मजा देखते हो. नहीं, हम अपलॉड करते हैं, लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं. But Amit, this has been the Goa Roundtable. Why don't you sing a classic Goan song which will fit in with the mood? Because win or lose, music must remain forever. And I know he is a great film buff, so we won't ask him about films today. But you tell us your favorite Goan song. Let's end this roundtable on a nice Goan musical note. Yes, let's do that. I think let's sing the song. Come from Holland, come from Scotland, come from any land.
come from Bombay, come from Bangalore, come from any land. Come on, Arvind, you have to If join you're us. looking out for a pleasant holiday, come to Goa, stay in Goa, Goa, Amchire. Hey, Goa, 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 Amchire. Come on, Delhi Chief Minister, you must also sing. Goa, Amchire. Ladies are nice and gents are full of spice. Come to Goa, stay in Goa, Goa, Amchire. Mogasani. It's finished, but Very nice, very nice. पर अरविंद आपको याद नहीं है कि आपने एक बार ओथ टेकिंग करते हुए गाना गाया था इंसान का इंसान मेरे को वो दो ही आते हैं बस वही गा दीजिए Anyway, there is इन्होंने something काफी that- अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया You know, that is a song of Goa which is welcoming. We welcome people to Goa and we hope that Goa actually sees change on the ground. This state needs new politics, a politics that really represents the aspirations of the wonderful people of Goa. Natural beauty, ugly politics. That must change. The best thing, Preeti, is that India today has brought a round table to Goa. And that in itself, if you bring it to a small state like Goa, it reflects that Goa is a state which will be keenly watched in the 2022 elections, as will the performance of AAP across these 4 states. Arvind Kejriwal, you didn't sing for us, but you gave us plenty of food for thought. Amit Palekar, you sang for us and you hope to become Chief Minister one day. Thank you both very much for joining us. Thank you so much and thank you all. Thank you.